Hello, good morning all. Anyone is there? Or all are logging and then gone on to bed for sleep? Good morning everyone. Okay, all are muted. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Prashant sir. Good morning, ma'am. Good morning. Sir, your voice is not audible. Right now audible? You are not audible, sir. No audible, ma'am. Hello, sir. Now getting the voice, ma'am. I'm audible. Yes, sir. Good Good morning, morning, sir. everyone. Everyone joined. Yeah. And so, good morning, everyone. Getting my voice, students. Your voice is Ayati, breaking. Aditi. Sir, please don't leave. Already we have 100 participants.
गाइस प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास. थोड़ा सा मॉर्निंग में थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ ना आप लोग. यॉन बेड एंड सब. ओ महिमा. गुड. अनुष्का. दीपिका. ओ कितने अच्छे अच्छे फेसेस हैं बट फिर भी सब कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं, राइट? ओके. ओके. और टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, ज्यादा इंटरेक्शन अच्छा होगा हमारा. राइट नाउ प्रॉपर है मैम वॉइस? अभी प्रॉपर है? यस सर, यू आर ऑडिबल नाउ. डिफरेंट डिफरेंट वाईफाई है। देखिए सर, अब अच्छा लग रहा है ना, थोड़े से इंटरेक्शन हो रहा है, फेसेस दिख रहे हैं, मजा आएगा. अनुष्का एंड आयुषी. ओहो. 2-2. Okay, sir. So we have Prashant sir right now. So sir, reasoning part you are covering? नो नो मैथ. Okay, 10 to maths. 11 मैथ्स, देन Okay. 11 to राहुल सर के साथ रीजनिंग होगी. Okay, sure. Okay, sir. So over to you. तो अनुष्का एंड आयुषी टुडे आज भी एक ही साथ एक ही मोबाइल में, राइट? चलिए. सो आप लोग ने बेसिकली मैथ्स का जो पार्ट सबने एटलीस्ट गो थ्रू किया होगा, राइट? समथिंग पार्ट गो थ्रू किया होगा, कुछ कंप्लीटेड कर लिया होगा, रिवीजन भी कर लिया होगा, और कुछ Sir, you are कुछ muted. स्टूडेंट. Sir, your voice is not coming. किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? अनुष्का सर हिलाना, हाँ या ना, वॉइस आ रही है? यस सर. कुछ बच्चों को मैसेज आया, यस सर रिप्लाई आ, वॉइस आ रही है, राइट? मैम इसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, राइट मैम? अभी राइट नाउ Some are outsiders also, sir. ऑल्सो. दूसरे स्टूडेंट का माइक ऑन कर देंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा मैम. Okay, sure, sure. I am allowing two students to unmute, sir. डिसेंट बच्चे. आप लोग माइक ऑन करके बता सकते हैं माय वॉइस इज कमिंग और नॉट? सर ब्रेक हो रही है आपकी बात. यस सर, ब्रेक हो रही है. ब्रेक हो रही है. अभी मैं कैमरा ऑफ कर दिया, अभी प्रॉपर है? So it's lagging. अभी बेटर है थोड़ा? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है जो भी. सो मेजर जो टॉपिक्स हम लोग को रिवाइज करना है फॉर द निफ्ट, जो आप लोग के सबके डाउट्स होते हैं कि मैथ्स में व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, राइट? कौन से टॉपिक्स हैं विच आर द इम्पोर्टेंट वन फॉर द मैथ्स? तो फॉर द मैथ्स द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आर एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम. आप लिख सकते हैं 5 टॉपिक्स: सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस एंड परसेंटेज. दीज आर द फर्स्ट 5 टॉपिक्स, जिसमें से इन विच आउट ऑफ 20 12 to 13 questions in B design always come. In B design 12 to 13 questions or 15 questions, 10 to 15. The ratio of the 5 chapter is 10 to 15 questions out of 20 questions, right? So Next, can you please repeat the topics? simplification means number system simplification. First chapter simplification, second chapter LCM, SCF, third chapter ratio and proportions, then percentage, then average.
right? So these are the topics which are important for the beat in the initial stage. If you don't want to revise the complete maths, then you can go with these 5 topics also. If you are very considered yourself as a very weak or zero in maths, if you are considering yourself as a zero, then you can go through the basic logics of the chapters which we'll go today, right? Basic properties of the chapter, basic logic and basic concepts, right? My voice is audible? Please reply yes, no in between. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Your voice is clear. My voice is okay. So if some student facing the problem with the voice, then please off your camera. So because network issue रहता है, bandwidth में problem होता है, तो आपकी voice proper हो जाएगी. Other students को आ रही है? Other students getting the voice properly? Yes, Okay. sir. Okay. Yes, sir. So starting with the maths, when we start with the maths, तो जो topic मैंने आपको अभी relate किए हैं, 5 topics. So start with the 5 topics. If we get the time, then we go through the other topics also, right? Excuse So me, we sir. start with, yes, ma'am. Sir, can you please tell us about the topics which are important for MDes? MDAS, same topics for the MDAS also, but the point in the MDAS is that the time, speed and distance and SICI, they ask 2-3 extra questions from these topics also. Mixture and allegation, right? Mixture and allegation, SICI, and your time, speed and distance, right? So they ask 2-3 extra questions. But when you analyze the last year paper of M design or B design, then you will get 3 to 4 questions from the simplifications, right? Basic properties, in which you have to solve the roots, you have to equate the equation, right? So it's always fixed that you will get the 2-3 questions from, right? My screen is visible to everyone? Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. So starting with the number system, I will teach in by language, both language I will use, okay? So because some students are comfortable in Hindi and some are with English, so Hindi में भी करेंगे. First question, the first point, that is the factor. Everyone know about the factors, how to find the factors of any number. We have to factorize the number. This is the factorization. Everyone know this, how to factorize, right? Sir, Yes, ma'am. can you please zoom into your screen? It is not like, though it is visible, but it's not very clear. You are using the mobile. Using the mobile, then you, right, ma'am? So आप अपना फोन tilt कर लीजिए, like orientation आप कर लीजिए. Right. Because laptop and mobile में अलग-अलग bandwidth आती है, ma'am. So now it's okay. Yes, sir. Little bit. Yeah, sir, perfectly fine. Okay. It's all fine. Okay. Okay. So first point is the factorization. Everyone know about the factorization, means we have to break the number into the smallest part. And this factorization is used into 3 concepts. First concept is हमें फाइंड करना है कि किसी भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर वी हैव. सेकंड कॉन्सेप्ट एलसीएम एंड थर्ड कॉन्सेप्ट एचसीएफ. फैक्टराइजेशन 3 जगह यूज होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने में, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने में, एलसीएम में एंड एचसीएफ में. तो सब फर्स्ट क्वेश्चन इज we have to find the number of factors, जो MFM में क्वेश्चन आया हुआ था. One time this question came, we have to find the number of factors. Number of factors mean, if I ask which are the factors of 24, which are the factors of 24, means a number which can divide 24. Those are the factors like 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. ये सारे इसके factors हैं. True? Agree? 1 से लेकर जो भी नंबर उसको डिवाइड करेंगे वो उसके फैक्टर्स होंगे. कितने हो गए टोटल फैक्टर्स? 24 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 8 फैक्टर्स. 8 फैक्टर्स है ना. टोटल नंबर्स कितने हैं? 8 नंबर, राइट? सो वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 20 द फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर. तो 24 का फैक्टराइजेशन इज व्हाट? ब्रेक कर दिया 2, 2, 2 एंड 3.
So factorization of 24 becomes Sir, break किया. breaking. Sir, your voice is breaking. Sir, your voice is breaking. सबको वॉइस मेरी ब्रेक कर रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right now, अभी आ रही है? सृष्टि, I am Yes, audible? sir. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. So, when we divide the factorization, when we divide the number into a smallest form, we कितना आया factorization? What the factorization of 24? That is 2 की power 3 into power 1. 2 power 2 3 power 1. अब जब हमें इसका number of factors find करना होता है, then increase the power by 1 multiply. After factorization, Your voice is increase the power 1. Sir, Correct now. Now getting the voice? yes, sir. yes, sir. बहुत अच्छी रीडिंग करनी है, स्लो स्लो, मतलब धीरे पढ़ना है लेकिन आवाज तेज होनी चाहिए. बेटर है ना? मैं स्टार्ट करूं? Should I start? बेटर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. So when we number for the number of factors, हमें क्या करना है? Again, I am repeating, this question is for the masters. Number of factors के लिए हम क्या करेंगे? We will factorize the number. We will factorize the number. After factorization, जो उसका ब्रेक हुआ है, जैसे कि 24 का फैक्टर क्या आया? फैक्टराइजेशन क्या हुआ 24 का? 2 to the power cube into 3 की पावर 1. करेक्ट? 24 का फैक्टराइजेशन किया 3 to the power 1. Now the next point, जो powers we are getting, the power we are getting, we increase the power. हमें बेस से मतलब नहीं है. We are not considering the base. Just we consider the power, only power. हमें किस पे फोकस करना है? Only power पे. We increase the power by 1 and then multiply. We increase the power by 1 and then multiply. So it becomes 3 plus 1 into 1 plus 1. So you'll get number of factors will be 8. How many factors for 24 we have? 8. For 24 we have 8 factors. Right? In the next example is also there. You can see that in coming in the notes. You will get the notes. Okay. Everyone know about the natural number, and this is basic things. This is a basic thing. Natural number, rational number, irrational. Always remember that 1 is not a prime number. 1
1 is not a prime number. Everyone know this? 1 is Yes, not a sir. prime number, right? Always remember this. 1 is not a prime number. 1 is only odd. 1 is odd or not? Yes, sir. Okay. So what is co-prime number? What is what is co-prime number? So those have HTF as one. What is this? For those, SCF has One. 1. Very good. In short, we can say those two numbers in which we didn't get any common value. ऐसे दो numbers जिनके बीच में कोई भी common value नहीं होती है, except 1. उनको हम co-prime कहते हैं. Like 2,5. 2,5 is a co-prime? Yes or no? Yes, sir. 3,8. 3,8 is No, a sir. co-prime? Yes or no? No, Why sir. no? Why? 8 has factors. नो नो, मैंने कहा ना को प्राइम की डेफिनेशन है उन दोनों नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. इन दोनों के बीच में मींस दे आर द प्राइम नंबर फॉर इटसेल्फ. 8 3 के लिए प्राइम नंबर है, 3 8 के लिए प्राइम नंबर. सो 3,8 इज अ को प्राइम और नॉट? Yes, sir. गुड. सो ऑलवेज रिमेंबर प्राइम नंबर होना कंपलसरी नहीं है. को प्राइम के लिए प्राइम नंबर इज नॉट कंपलसरी. क्या कंपलसरी है? देयर शुड बी नो कॉमन वैल्यू. कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होनी चाहिए. सो क्वेश्चन इज which are the co-prime numbers out of these four options? Out of these four options, which are the co-prime? Out of these four options, which are the 3, co-prime numbers? 19. 3,19. Very good. Right. Then everyone know about the squares and square root method. What is a root and square? Right. The basic question, the important question is this. For this question, 2 की power 3 की power 2 minus 2 की power 3 bracket 2. In this, we get answer 0 or something else. Excuse me, sir, Prashant sir. Yes, ma'am. Sir, your voice is echoing, so voice is not clear. Sir, answer will be 8. 2 is the answer will be 2 to the power 3. 2 cube. अभी आ रही मेरी वॉइस? Yes, sir. मैं अपने ऑटोमेटिक म्यूट हो गया था. सो आई वाज सेइंग ऑलवेज रिमेंबर ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई. ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई. Always remember this. Bracket means multiply, and in the first one, this is a power of power. So both are different concept. Both are different concept. Okay. Okay, everyone. Yes, sir. So if I say 32 to the power 3 by 5, 32 to the power 3 by 5. So what is this? It's a power and with root or something else. This is known as a power with root. क्यों?
we can break this. We can break the power. We can write 32 to the power 3 to the power 1 by 5. I can break the power. I can break the power, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I can write this as it is like this also, 32 to the power 1 by 5 and outside power 3. Outside power 3. Agree? Yes, sir. So now first always remember, whenever the power is in fraction, whenever the power is in fraction, then it is a root. Then it is a root. In this question, this is a root of 5 times. It is a root of 5 it is a root of 5 times. So in this we break the 32 into small parts. In this we break the 32 into small part and we solve it. Always whenever the power is in fraction, ये रूल याद रखिए, जब भी पावर फ्रैक्शन में हो तो पहले हम रूट फाइंड करेंगे, देन उसका पावर करेंगे. Agree everyone? So we'll not do this. We will do this one. We will first do the root, then power. Got everyone? Yes. Yes, Yes, sir. तो रूट का क्या करेंगे? So in the NIFT exam, this was the question 0.001 to the power 1 by 3. So two concepts we need to hear. One concept, decimal remove करना आना चाहिए. How to remove the decimal. Second concept, how to find the root. So decimal remove करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे डिनोमिनेटर में? 3. In the denominator we get 3 zeros. Then we factorize the denominator and उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा. Simple? Yes. Simple? Right. So this was the concept. Again, next concept, next question based on this equation. Dividend is equals to a divisor into quotient plus remainder. Basic property. Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Basic property. One question from this property. Next question came on the property of this. When we need to assume 2-digit number, जब भी हमें 2-digit number को assume करना होता है, तो we never assume x y. हम क्या assume करेंगे? 10x plus y. 10x plus y. And on based of this concept, ये question given है. ठीक है? This is the question based on the concept. Okay, from where you can get the property. ये हमने क्लास में किया हुआ है. Got it, everyone? Right. One more concept is there, that is known as the unit digit method. Everyone done this unit digit method? Unit digit. In Yes, unit sir. digit method, the question will be like this. What will be the 3 to the power 146 unit place? What is the unit place of 3 to the power 146? तो इसमें क्या करेंगे? What we do in this 3 to the power 146 and we need to find the unit place. So what we do? First we make the cycle of power 3 to the power. 3 to the power 1 is 3. 3 to the power 2 is 9. 9. 3 to the power 3 is 27. so 7. Why I write only 7? Because I am focusing on unit place. 3 to the 4. 3 to the 4 is 81. So 81. 1. 3 to the 5 यानी कि 3 to the power 4 multiply with 3. 3 to the power 4 को 3 से multiply करो तो आंसर आ जाएगा 3. So number is repeating or not? Unit digit is repeating? Yes, sir. So after how many intervals the unit digit repeat? After how many intervals unit digit got repeat? 4. After 4 intervals. So we divide the power with, we divide the power into 4 intervals, 4 intervals. So we divide the power with 4 and the remainder will in the power. The remainder which you get, that remainder will put in the power. जो remainder आपका आएगा 146 को 4 से divide करने पे जो remainder आएगा वो 3 की power में put कर देंगे and we get the answer. Okay everyone? Just basic property. Right. Now the next chapter, that is the LCM SCF. LCM SCF. In LCM SCF, three important things for the bachelor and master both. Yes, ma'am. Excuse me, sir. Sir, Yes, ma'am. divide की power. Sir, वो हमने divide किया by 4 से. हाँ. Sir, तो उसमें 2 remainder आ रहा है. हाँ.
4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? वी आर गेटिंग 2 2 एज अ रिमाइंडर. So we put now 3 as a instead of 146 we put 3 as a 3 power 2. So what is 3 power 2? 3 power 2 is So 9. 9. So answer is 9. Unit place is 9. Okay, sir. Okay. So now the next concept, LCM SCF. In LCM SCF, 3 points are important for bachelor and master both. First 3 points are that we need to find the LCM and SCF of any number in a sentence form. ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं what is LCM? What is LCM? So definition of the LCM is least number, smallest number which is divisible by all the given numbers. सबसे छोटा नंबर जो सारे गिवन नंबर से डिवाइड डिवाइड होगा. मतलब मुझे ये फाइंड करना है कि 20 एंड 25 किसको किसको डिवाइड कर सकते हैं. 20 एंड 25 कैन डिवाइड विच नंबर्स. तो मैं एलसीएम निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? आई विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 और 25 और नॉट. एग्री? तो हमेशा याद रखिए LCM is the least number. This is the definition, and the question also asked in this form. This is the definition, and the question is also in this form. The sentence is like this: find the least number which is divisible by 15 and 8. सबसे छोटा नंबर जो 15 and 8 से डिवाइड हो, जो 15 and 8 डिवाइड से हो जाए. एक नंबर जो दोनों से डिवाइड हो. तो हम दोनों का क्या निकालेंगे? 15 and 8 का we will find LCM. Okay. So what is the sentence in SCF? SCF में sentence क्या होता है? A number which can divide. A number which can divide 15 and 9. ऐसा नंबर जो 15 and 9 को डिवाइड करे. एक नंबर जो 15 and 9 को डिवाइड करे. So हम in short the story is LCM डिवाइड होता है. LCM डिवाइड होता है. एंड SCF डिवाइड करता है. SCF डिवाइड करता है. करेक्ट? राइट? जिसके घर में रिंगटोन बज रही है प्लीज म्यूट कर लो, अदरवाइज मैं सबको म्यूट कर दूंगा तो प्लीज अच्छा ही लगेगा. राइट? सो SCF डिवाइड करता है एंड LCM डिवाइड होता है. राइट एवरीवन? एवरीवन दिस पॉइंट? राइट? So first question in bachelor, they ask the question in this form. Find the number which can divide, or they ask find the number which will divide. Both are different things. Find the number which can divide and find a number which can be divided, which can divided by. So both are different things. Now second point, always remember this formula. Product of two numbers is equal to the product of LCM and HCF. दो नंबर का प्रोडक्ट, उन दो नंबर्स के LCM और HCF का प्रोडक्ट दोनों क्या होते हैं? बोथ आर इक्वल. डायरेक्ट क्वेश्चन will come from this. क्लियर? जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. A into B is equals to the LCM into HCF of that number. सिर्फ दो का फॉर्मूला ये, 3 नंबर्स का फॉर्मूला नहीं है. Only for two numbers. Second point. Now third question is framed on the basis of fraction. Third question किस पे आता है? On the basis of fraction. Find the LCM of fractions or find the SCF of fractions. तो फॉर्मूला सबने याद किया हुआ है. The LCM of fraction is, LCM क्या होता है फ्रैक्शन में? न्यूमरेटर वैल्यूज का LCM निकालेंगे एंड डिनोमिनेटर का SCF निकालेंगे. राइट? SCF में क्या होगा? न्यूमरेटर का SCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर का LCM. जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो न्यूमरेटर का. The thing which we need to find out that will be in numerator. अगर LCM निकालना है तो LCM न्यूमरेटर में आएगा. अगर SCF निकालना है आएगा. Right? On the basis of this property, example is given. Right?
Now for the masters, again, one question is more important. Fourth type question. This is the fourth type question. This is the fourth type. And this is more important for masters and BF Tech. Fourth type question. That is use of LCM and SCF. What is the point? Use of LCM and SCF. The question in which we need to find the repetition or cyclicity. In that question we will use the LCM. ऐसे क्वेश्चंस जहां पे रिपीटिशन और साइक्लिसिटी फाइंड आउट करना हो तो हम एलसीएम निकालेंगे. एग्जांपल देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन इज 2 classes of time 40 minute and 30 minute have lecture. Both class start at 8 am. दोनों क्लास 8 am पे स्टार्ट हुई. आफ्टर हाउ मच टाइम दे बोथ रिंग साइमल्टेनियसली. क्या हर बेल उनकी एक साथ बजेगी? दोनों क्लासेस की बेल एक साथ बजेगी हमेशा? नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्लास के लेक्चर 40 मिनट का है, सेकंड क्लास लेक्चर है वो 30 मिनट. दोनों हमेशा एक साथ नहीं बजेंगे, बट कभी ना कभी तो रिपीट होंगे ना एक साथ, कभी ना कभी तो एक साथ रिंग करेंगे. एग्री? एग्री? So we need to find out after how much time they will ring simultaneously. हमें क्या फाइंड करना है कि कितने देर के बाद रिपीटिशन होगा, दोनों बेल का एक साथ साइकिल रिपीट होगा. तो हम क्या निकालेंगे? 30 and 40 का हम क्या निकाल देंगे? LCM. This will be the answer. Clear everyone? Clear? Yes, Based on property. अगर हमें पूछा जाए where we use SCF का हम अपनी लाइफ में कहाँ यूज करेंगे और अपने करियर में कहाँ यूज करेंगे? इफ यू आर अ डिजाइनर इन अ केमिकल कंपनी और यू आर डिजाइनर इन अ प्रोडक्ट कंपनी, कोई भी कंपनी में आप डिजाइनर हो, तो जैसे पेंसिल मैन्युफैक्चर हो रही है, एग्जांपल पेंसिल मैन्युफैक्चर हो रही है, तो क्या पेंसिल का जो साइज आप यूज करते हो, HB पेंसिल और 2H जो हम पेंसिल साइज यूज करते हैं, तो मशीन भी उतनी ही पेंसिल का साइज प्रोड्यूस करती है कि एक लेंथ में प्रोड्यूस करती है? कंटिन्यूअस प्रोड्यूस होता रहता है लेंथ. So continuous. कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, दैट मींस डिफरेंट मशीन्स की डिफरेंट कैपेसिटी होगी लेंथ प्रोड्यूस करने की. वन कैन मशीन प्रोड्यूस 350 मीटर, कोई 210 मीटर, सबकी अपनी अपनी साइज होगी प्रोडक्शन करने की मशीन की कैपेसिटी. नाउ एज अ डिजाइनर यू हैव टू कट द पेंसिल्स इनटू इक्वल साइज. देखो तीनों मशीन की पेंसिल्स, तीनों मशीन में पेंसिल अलग अलग साइज की हैं. एक मशीन में we get 350 meter, in second machine we get 210 meter, in the third we are getting 560 meter. Now we need to transport it. हमें इसको ट्रांसपोर्ट में भेजना है, तो हम इसको स्मॉल पीसेस में कट करेंगे. एग्री? ट्रांसपोर्ट के लिए स्मॉल पीसेस में कट करेंगे. नाउ एज अ डिजाइनर you have to cut these 3 pieces into equal size. इन 3 pieces को equal size में डिवाइड कट करना है आपको with no loss. इन तीनों पीसेस को इक्वल साइज में कट करो विद नो लॉस. 350, 210 एंड 560 को कट करना है इक्वल साइज में विद नो लॉस. सो हम क्या निकालेंगे विद नो लॉस? हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम क्या निकाल देंगे? वी विल फाइंड द SCF. हम लोग क्या फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड द SCF, क्योंकि हमने डिवाइड करने जा रहे हैं. कंपनी आपको तो नहीं बताएगी ना कि SCF निकालो इन तीनों का, वो आपको डिसाइड करना है इन कंपनी और इनको. सो दिस इज द यूज ऑफ SCF. हम डिजाइनिंग में यूज करते हैं, प्रोडक्शन में कहीं पर इसको यूज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. गॉट इट एवरीवन? यूज? Yes, sir. राइट. वन मोर क्वेश्चन. यस मैम. जो हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वो LCM वाला, एक बार प्लीज जी. उस पे वापस जाएंगे आप? हाँ गए. इसमें ना जब हमने LCM निकाला 120, तो हम आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो बस उसका आंसर ये हो जाएगा कि इट विल मतलब आफ्टर 2 hours विल रिंग टुगेदर. तो फर्स्ट लेक्चर हम स्कूल कितने बजे स्टार्ट हुआ, कोचिंग कितने बजे स्टार्ट हुई? 8 AM पे. तो नेक्स्ट बेल कितने बजे रिंग होगी एक साथ? नेक्स्ट बेल कब रिंग होगी एक साथ? आफ्टर 2 hours मींस 10 AM सॉरी 10 AM पे. राइट. So if they are asking after how much interval they are repeating, the answer is 2 hours. After how much interval? 2 hours. If they ask at what time they will repeat, at what time, तो टाइम कितना होगा? 10 AM. टाइम कितना होगा? 10 AM. ठीक है मैम? Got it?
So one more question came in the bachelor. This is the important one for the bachelor also. Find the largest three digit number divisible by 15 and 8. Find the largest 3 digit number, सबसे बड़ा 3 digit number जो 15 and 8 दोनों से डिविजिबल हो. तो पहले हम 15 and 8 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे. तो 15 and 8 का कॉमन वैल्यू, कॉमन नंबर कौन सा होगा जो 15 and 8 को डिवाइड करे, 15 and 8 को डिवाइड करे, दैट इज द एलसीएम. हम 15 and 8 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, राइट? दैट इज 120. और स्कूल में आपने किया है, हम एज्यूम कर लेंगे बिगेस्ट 3 digit नंबर. वी विल एज्यूम द बिगेस्ट 3 digit नंबर दैट इज 999 एंड 999 डिवाइडेड बाय 120. और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम हटा देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दैट विल बी 960 इज द आंसर. बस उसी को एक्सप्लेन किया गया है, डिफरेंट फॉर्म से एक्सप्लेन किया गया है. सो दिस इज द नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस. ओके, डिफरेंट केसेस में लिखे हुए हैं, यू कैन गो थ्रू द नोट्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, बट मैंने आपको बेसिक रिवाइज कराया, जस्ट अभी बेसिक्स. डिफरेंट केसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू कैन गो टू द नोट्स. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन गो different cases, but basic property you should know this much. So my target is to revise the basic property first. Okay, now the next chapter. Clear हो गया basics of the LCM HCF. Basics, how many type of questions are there and which are the important points, right? LCM HCF clear, everyone getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, please reply करिए because I thought कि voice proper नहीं आ रही है. So now next chapter is the average. Next chapter is average. So what is average? Always remember in average chapter, what if average is given, then always convert average into sum. This is the 2 point. Always convert average into sum. हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फॉर्मूले में. एवरेज को किस में कन्वर्ट करेंगे? सम में. तो सम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एवरेज को हम जैसी नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? सम ऑफ ऑल टर्म्स. क्या बन जाएगा? सम ऑफ ऑल टर्म्स. तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन एवरेज में गिवन होता है तो उसको हम सम में कन्वर्ट करेंगे, एंड सम में जैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि उस ग्रुप का जो सम ग्रुप का सम आया है उस ग्रुप को हम प्लस करना है अदर ग्रुप के साथ, कि उस ग्रुप को अदर ग्रुप के साथ माइनस करना है. एवरेज को एवरेज के साथ प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं. वी कैन नेवर ऐड और सब्ट्रैक्ट एवरेज विद एवरेज. ओके, हम वी ऑलवेज कन्वर्ट एवरेज इनटू सम. किसमें कन्वर्ट करेंगे एवरेज को? हमेशा सम में. सो ऑन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, these are basic questions, right? These are the basic question based on this property. प्रॉपर्टी हमारी आती है इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द एवरेज स्पीड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर दिस चैप्टर. Average speed. The condition for the average speed is the distance should be same. Distance क्या होना चाहिए? Same. The distance should be same. Example, अगर मैंने बोला मैं होम टू स्कूल गया, मैं घर से स्कूल गया 40 की स्पीड में, मैं घर से स्कूल गया 40 की स्पीड में एंड वापस घर आया 60 की स्पीड में, और घर वापस आया यानी कि गया 40 की स्पीड में एंड आई रिटर्न बैक विद द स्पीड ऑफ 60. सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कंप्लीट जर्नी? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कंप्लीट जर्नी? सो एवरेज स्पीड ऑफ कंप्लीट जर्नी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 डिवाइडेड बाय 2. हम ये नहीं कर सकते. वी कैन डू दिस बिकॉज स्पीड इटसेल्फ इज अ एवरेज. स्पीड खुद एक एवरेज होती है. कभी भी गाड़ी 40 की स्पीड में नहीं चल सकती है कंटिन्यूअस फॉर अ जर्नी, कभी स्लो या फास्ट होती रहती है. सो स्पीड इज इटसेल्फ इज अ एवरेज एंड वी कैन नेवर ऐड टू एवरेजेस. तो क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर? द फॉर्मूला विल दिस वन, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 into speed 1 into speed 2 plus speed 1 plus speed 2. What is the average speed? 2 into s1 into s2 upon s1 plus s2. ये प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. कंडीशन क्या है? द डिस्टेंस शुड बी इक्वल. d1 equals to d2. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 into s1 into s2 upon s1 plus s2. Getting everyone my voice? Hello, getting my voice?
Yes, sir. Mascot Your is voice is audible. responding. Yes, sir. Okay. Okay. At least sister तुम्हें response कर देना बीच में yes no ठीक है. So this is the second concept. Third concept of the third concept is AP series based on the AP series. Average or mean, average or you can say mean. Mean is and average both are the same terms. Mean का मतलब भी average होता है. Average or mean of the AP series is always value. हमेशा क्या होता है average or mean of the AP series? Always it is the center value. हमेशा याद रखिए AP series का एवरेज और मीन सेंटर वैल्यू होता है बस. दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. सो 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एवरेज चैप्टर में. बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एवरेज कि उसको सम में कन्वर्ट करेंगे. देन सेकंड प्रॉपर्टी एवरेज स्पीड. थर्ड प्रॉपर्टी एपी सीरीज. ओके, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एवरेज चैप्टर. नाउ नेक्स्ट चैप्टर केम दैट इज द रेशियो एंड प्रोपोर्शंस. रेशियो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है. इन द रेशियो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस 4 पॉइंट. ऑलवेज रिमेंबर कि रेशियो की डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो? रेशियो की डेफिनेशन क्या है? इट इज द मिनिमम फैक्टराइज्ड फॉर्म. द डेफिनेशन ऑफ द रेशियो इज इट्स अ Sir, you are muted. yes ma'am, automatic. So yeah, yes ma'am, everyone. So in ratio is a minimum factor. My voice आ रही है? आकांक्षा मैम? Sir, yes, sir. Yes, sir. So ratio is a minimum factorized form, or this is the formula. Sorry, this is the definition. Second point, in ratio we always compare the similar units. Lakhs को lakhs से compare करेंगे, coin को coin से compare करेंगे, hen को hen से compare करेंगे, glasses को glass. जो भी unit होगी left hand side, same unit will be on the right hand side. Third point, ratio is a comparison between two or more values. रेशियो में हम दो से या दो से ज्यादा लोगों को कंपेयर करने वाले हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशियो कैन नेवर बी इन डेसिमल और फ्रैक्शन. रेशियो कैन नेवर बी इन डेसिमल और फ्रैक्शन. वन एग्जांपल, अगर आपसे क्वेश्चन बोलूं 15/20 रेशियो 5/4 रेशियो 7/3, सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर रेशियो. क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में गिवन है, इंडिविजुअल टर्म फ्रैक्शन में है. तो हम फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे. तो फ्रैक्शन को रिमूव एलसीएम के मेथड से करेंगे और एलसीएम लेने के बाद कैंसिल कर देंगे. जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी द प्रॉपर रेशियो. दिस विल बी द प्रॉपर रेशियो. गॉट इट एवरीवन? दिस विल बी द प्रॉपर रेशियो. सो रेशियो कैन नेवर बी इन डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म. दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, रेशियो चैप्टर में, इन द रेशियो चैप्टर ऑलवेज वी नीड पुट द एक्स. रेशियो में हमेशा क्या पुट करेंगे? हम रेशियो में हमेशा क्या पुट करेंगे? वी ऑलवेज पुट द वेरिएबल. वी ऑलवेज पुट द वेरिएबल इन रेशियो एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल. हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और किसी भी क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब एनी वन एक्चुअल वैल्यू विल बी गिवन. जब कोई एक एक्चुअल वैल्यू गिवन होगी तभी तो अदर एक्चुअल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. एग्री और नॉट? एग्री, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर, रेशियो में कोई ना कोई एक्चुअल वैल्यू गिवन होगी. जस्ट एक्स पुट करके उसको इक्वेट करना है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एंड एक्स इज नेवर आंसर. हमेशा याद रखिए, एक्स हमारा आंसर नहीं है. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. सो इन दिस क्वेश्चन स्मॉलेस्ट नंबर इज ए. स्मॉलेस्ट नंबर इज ए. तो x हम कहां पुट कर देंगे? x हम a की जगह पुट करेंगे. सो a is 2x. 2x means 40. तो आंसर विल बी 40. आंसर इज 40. दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन द रेशियो चैप्टर, दैट इज द कंबाइंड रेशियो. हाउ टू फाइंड द कंबाइंड रेशियो सबने पढ़ा है. एवरीवन डन दिस? Yes, sir. We have two properties. We have two methods to find the combined ratio. Directly we can find directly also, or we can find by using the
cross this method, starting with the first column, then shifting to the second column, and complete shift to the second column. This is the value 5 into 2, right? 3 into 5 and 3 into 7. So that is 21 in this way. So in 3 by 3, in the same way, first column, then shifting to the second column, then more shifting, then complete. तो ये हमने ऑलरेडी क्लास में कर रखा है, आप लोगों ने कर रखा होगा different ways. Second, this property. Now in proportion, we definition of the proportion is if two ratios is equal to the other two ratio, then those four number are in proportions. अगर दो रेशियो किसी दो अदर रेशियो के इक्वल होते हैं तो उनको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, राइट? एंड इन दिस टू टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. अगर मैंने बोला 55, 15 एंड 20 प्रोपोर्शन है और थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है. थर्ड प्रोपोर्शनल मींस 5 फर्स्ट होगा, 15 सेकंड होगा, थर्ड बीच में x आ जाएगा एंड 20 विल बी द फोर्थ. तो 20 विल बी द फोर्थ और हम सॉल्व कर लेंगे. मीन केस में क्या होता है, व्हाट हैपन इन द मीन प्रोपोर्शनल, कि बी एंड सी जो सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल है बोथ आर इक्वल. सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल हो जाते हैं. तो हाउ मेनी वैल्यूज वी गेट नाउ? वी हैव 3 वैल्यूज. So in this, which one is the mean? A, B and D. Which one is the mean? B is the mean. So B is known as a mean proportional. B is known as a mean proportional. But when B and C are equal, okay? Duplicate and triplicate. Prashant, sir, your voice is not coming. So Sir, your voice is breaking too much. Prashant, sir, your voice is too breaking. सबको ब्रेक हो रही है, सबको भी ब्रेक हो रही है प्रॉपर. Yes, sir. वाईफाई प्रॉपर नहीं चल रहा है. We better है मैम right now? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Right. So duplicate is a square, duplicate is a cube. Sir, still is your voice is Sorry? breaking. Sir, your voice is breaking. Still my voice is breaking. अभी ब्रेक हो रही है प्रॉपर? No, it's स्टिल okay. प्रॉपर ब्रेक हो रहा है? Right. So sub duplicate is the square root and sub duplicate is the cube root. This much clear everyone? तो ये terms याद रखिएगा in this chapter. Then रेशियो में different chapters आ जाते हैं. एजेस, जिसके प्रॉपर्टीज आपने ऑलरेडी क्लास में करी होंगी. Different questions. These are different questions in the ages. In this we divide in the form of, you can solve the age in the form of equation or in the form of table. In the form of table, it's up to you. Milk and water case. Next, coming to the percentage. Now, last topic for today. Last topic is a percentage. In the percentage, always remember that percentage can never exist alone. Percentage can never exist alone. Why? If I say I have a 10% currency, I have a 10%. So how much rupees I have? This is the incomplete data. How much rupees I have? This is the incomplete. 10% of whom? 10% of whom? So always remember, percentage is always with respect to initial value. Percentage is always with respect to, this is the universal rule. Always maximum time, 99% time with respect to
initial value. With respect to initial value. Correct everyone? This is the universal rule. Percentage हमेशा initial value के respect में होता है. ठीक है? Getting my voice? Students? Yes, sir. Anyone? Please repeat. Right. So अगर मैंने आपसे बोला कि I am getting a profit of 10%, तो जो मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है, I am getting a profit of 10% with respect to whom? 10% with respect to इनिशियल वैल्यू. कौन होता है प्रॉफिट में इनिशियल वैल्यू? जब हम कुछ सामान खरीदते हैं, सेल करते हैं, तो विच वन इज द इनिशियल वैल्यू? सीपी. सीपी विल बी द इनिशियल वैल्यू. सो प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में होगा? द प्रॉफिट और लॉस किसके रेस्पेक्ट में होगा? विद रेस्पेक्ट टू सीपी. राइट. सो इन परसेंटेज इज सिमिलर टू द रेशियो. रेशियो में हम दो से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं, बट इन परसेंटेज वी कैन कंपेयर ओनली 2 वैल्यूज. परसेंटेज में हम सिर्फ 2 वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं. राइट. ओनली 2 वैल्यूज. अब जब हम 2 वैल्यू कंपेयर करते हैं तो दे आर 4 फॉर्मूलाज. फर्स्ट, वी कैन फाइंड परसेंटेज ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड. राइट एवरीवन? सेकेंड थिंग हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? परसेंटेज ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट. थर्ड चीज हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि कितना छोटा है परसेंटेज में या कितना बड़ा है परसेंटेज में. हाउ मच इट इज लेस इन परसेंटेज और हाउ मच मोर इट इज इन परसेंटेज. और हमेशा याद रखिए, परसेंटेज चैप्टर जैसा है ऐसा होता नहीं है. परसेंटेज चैप्टर में अगर कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो वी ऑलवेज एज्यूम. और कितना एज्यूम करेंगे परसेंटेज चैप्टर में? अगर कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है परसेंटेज चैप्टर में, सो वी ऑलवेज एज्यूम 100. कितना एज्यूम करेंगे? वी ऑलवेज एज्यूम 100 एंड वी ऑलवेज एज्यूम द सेकंड पर्सन. और किसको एज्यूम करेंगे? हमेशा सेकंड पर्सन को और लास्ट पर्सन को. एग्जांपल, ये क्वेश्चन देखिए. इन दिस क्वेश्चन जो मैंने लिखा है यहाँ पर, A is 20% of B, B is 50% of C, C is 150% of D. समझ में क्वेश्चन? सबको क्लियर है? अब इन दिस क्वेश्चन क्या मुझे किसी की एक्चुअल वैल्यू गिवन है? किसी की एक्चुअल वैल्यू गिवन है? A B C D. किसी की एक्चुअल वैल्यू गिवन है? नो, नहीं गिवन है. सो वी नीड टू एज्यूम. सो हम सबसे फर्स्ट वैल्यू किसकी एज्यूम करेंगे? A की और D की. वी एज्यूम whom? लास्ट पर्सन. वी ऑलवेज एज्यूम द सेकेंड वन और लास्ट वन. तो किसको एज्यूम करेंगे इन दिस क्वेश्चन? इन दिस क्वेश्चन वी विल एज्यूम डी. डी को हमने कितना एज्यूम किया? हाउ मच? 100. इफ डी इज 100 देन हाउ मच सी? रिवर्स में सॉल्व करेंगे. देन रिवर्स में सॉल्व करेंगे. इफ डी इज 100 देन सी विल बी 150. सी विल बी 150. इफ सी इज 150 then B will be the 50%, then B will be the 75. अब B 75 है तो A कितना हो जाएगा? 20%. 20% of 75 is 15. So we got all the values. This is the assumed value. उसके बाद जो हमें सॉल्व करना है वो फाइंड आउट कर लेंगे. So always remember in percentage chapter we assume. और किसको assume करेंगे? Always we assume the last person. Clear everyone? Always assume the लास्ट पर्सन. रेड पॉइंट से लिखा हुआ है. रेड पॉइंट से ये लिखा हुआ है, पॉइंट हाईलाइट किया है. एग्री एवरीवन? राइट. लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज इफ वी नीड टू ऐड 2%, ऑलवेज रिमेंबर वी कैन नेवर ऐड 2% डायरेक्टली. अगर मैंने आपसे बोला कि मेरी सैलरी में पहले 10% का इंक्रीमेंट हुआ, देन 10% का डिक्रीमेंट हुआ. प्रशांत की सैलरी में पहले 10% का इंक्रीमेंट हुआ, देन 10% का डिक्रीमेंट हुआ. राइट. सो कितना चेंज हुआ सैलरी में? प्रशांत की सैलरी में कितना चेंज हुआ? 10% इंक्रीज, देन 10% डिक्रीज. तो कितना चेंज हुआ? हमें देखने में लग रहा है कि नो चेंज, क्योंकि 10% इंक्रीज देन 10% डिक्रीज. देखने में लग रहा है नो चेंज, बट एक्चुअल में चेंज हुआ है. सो परसेंटेज हमेशा याद रखिए, परसेंटेज जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है. परसेंटेज, ओके, परसेंटेज जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है.
ओके। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, कभी भी 2% को जोड़ना है, इफेक्ट देखना है कि 2% का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है। एवरीवन गेटिंग माय वॉइस? कभी भी हमें चेक करना है कि व्हाट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2%, राइट। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। द फॉर्मूला विल बी प्लस माइनस P1 प्लस माइनस P2 प्लस माइनस P1 इंटू P2 अपॉन 100। P1 क्या है? परसेंटेज 1 और प्लस माइनस का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। परसेंटेज और प्लस माइनस का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जैसे कि मेरी सैलरी पहले 10% बढ़ी तो मीन्स +10, देन डिक्रीज हुई है -10, देन +10 इंटू -10, प्लस इंटू माइनस हाउ मच? माइनस। सो 10 इंटू 10 कैंसिल, आंसर कितना आया? -10 -1%। सो ओवरऑल मेरी सैलरी डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई? मेरी सैलरी ओवरऑल डिक्रीज और इंक्रीज? इट इज डिक्रीज बाय 1%। इट गॉट डिक्रीज बाय 1%। ओके। बात कर रहा हूँ। हेलो, right Yes, sir. everyone? Good. So this was the basic property and concepts of the percentage, average and LCM, SCF and simplification. Other chapters भी notes हैं इस form में, you can go through time, speed and distance, उसमें क्या क्या important points हैं with the question and the solution, train case, then we have a board case, then we have a time and work, right? So these are the important chapters, but बेसिक चैप्टर्स का मैंने आपको रिवीजन कराया है। तो पर्पस ऑफ द क्लास इज द टू रिवाइज द बेसिक चैप्टर, बिकॉज वी कांट रिवाइज द कंप्लीट मैथ इन अ सिंगल गो, right? So basic chapters I revised for you all, and the other chapters you can go through, and doubts you can ask directly. Okay. Okay, right. And the Pahel students, the students who are from the Pahel, you will all get the these notes from your central coordinator representatives. After the marathon class, you will get these notes after your marathon class. Okay, all the Pahel students. And Okay. outsiders, the students who are from the outside, they can connect with the Pahel from any branch, and according to that, you will get the help. Okay, all the non-Pahel students. Okay, so you will get the note. Okay, sir. Yeah. Okay, Experienced, you will get the note after the method class. Okay? Sir, some students have doubts, तो हम questions ले लेंगे। Yes, sir, yes. Important topic for the MFM. Yes, sir. Ma'am, I already told that these are the basic topics. These are the important topics, bachelor's also and master's also, right? MFM. But in MFM, math में only 10 questions comes. In math, only 10 questions are there. In those 10 questions, one question from each chapter will be there. 2-3 questions from simplification, that is fixed. In MFM also, out of 10, 3 questions are from simplification chapter, and rest average, one question from average, one question from percentage, one question from ratio, one question from time, speed and distance, like each and every chapter they touch. Okay, but simplification chapter, 2 to 3 questions always there. Okay, in MFM. Yes, ma'am. Next question, ma'am. Any other question? Akansha, ma'am, any other Okay, question? students, you have any questions? No, ma'am. No, ma'am. All clear? सर Yes. सर अभी जो आपने पेज जो समझाया वो आप भेजोगे ना PDF उसका? हाँ, निकालना for the Pahel students, कोई भी branch के आप हो, whether from any Pahel branch, you will get these notes after the marathon class. Okay, आप marathon class कर लीजिए. After marathon class, you will get these notes. Okay. And for the outside non-Pahel students, they can connect with the any branch of Pahel. Then you will get the help outside Pahel. Okay. 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 So. Okay, so students Ma'am. have no questions. Thank you, Prashant sir, for your valuable time. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Rahul sir joined, ma'am. Rahul sir joined, student.
No, sir. We have already 100 participants. So if you first you left, then I'm able to enter. Okay. Thank you so much. Bye bye everyone and all the best for the exam. Thank you so much everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Any point, any math problem, doubt, you can connect any doubt you have, whether you are from Pahel or you are from non-Pahel, you can connect with anyone. Okay, you will get the help. Okay, and all the So students, just wait a minute. Rahul sir joining us, right? Yeah. Good morning, Rahul sir. Good morning, ma'am. ठीक है. So students, now Rahul sir with us for reasoning part, right? Okay, ma'am. Okay. Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good So, morning, how is the sir. preparation? क्यों भाई? कैसे जा रही प्रिपरेशन? किसी की भी अच्छी नहीं चल रही है क्या, या सबकी अच्छी चल रही है? बताने की जरूरत भी नहीं है. अरे कोई तो जवाब दो यार. Sir, average. एवरेज चल रही है. क्यों, ज्यादा पढ़ लिया एवरेज? No, sir. तो okay, chalo. Let's start. Okay, we have very less time, so without wasting our time, I'm going to start our topics. So first is the first topic. The topic I will talk you about is coding and decoding. Okay, coding and decoding. So how this chapter will help you in the examination. So there is some basics. Okay, some basics of coding and decoding also used in analogy. Okay, classification, and series. Okay, so concepts of, and also in coding and decoding. So some concept of coding and decoding will help you in analogy, classification, and series. So in which part? So whenever they put you a question based on alphabet, whenever they give you a question based on alphabets, you can use, you are able to use questions by using coding and decoding. Okay. So which are the most, what are the most important concepts in this coding and decoding? Okay, the main thing is you have to remember the place value of all the alphabets. So what is the place value of all the alphabets? It's easy for you, like A is 1, okay, B is 2, C is 3, D is 4, E is 5, F is 7, so and so on. You can write for all the alphabets. So you have only 26 alphabets, so you have to write up to Z, like 26 Y. Okay, so you can write from A to Z, 1 to 26. So how you can remember these alphabets? So I can help you to remember some alphabets. I have a word, Ijoti, by which you are able to recall the place value of any alphabet. Okay, how you can remember this first? E is 5, J is 10, O is 15, T is 20, Y is 25. Okay, so every letter is given on the
difference of 5. So let's suppose you want to find out the place value of m. Okay, so m, you know this, that if you count for m, it will come after j. The j is 10, so j you can read in mind, k, l, m will be 13. Okay, and somewhere m looks like a 3. Okay, m looks like a 3, so it is 13. W also looks like a 3, it is 23. Okay, clear? T20, one type of cricket format. Okay, you can also remember by this G's. So whenever you make G, the last part is 7. Okay, if you focus on this part, this is 7, so G is 7. Okay, so by using this, you can remember most of the alphabets. Okay, like P, somewhere, if I look at P, somewhere it remind me 6. Okay, and one straight line and this knob, so it remind me of 16. So P is 16. So in this way, you can make your own ways to remember these alphabets. Okay, so first write down all the alphabets, then remember their place values, and then it's easy for you to use these techniques in coding and decoding. Okay, so how we can use, what type of questions they will ask you. Okay, so first we have to discuss 3 techniques. Okay, 3 important techniques of coding and decoding. Okay, it doesn't mean cannot be determined, it means coding and decoding. Okay, so first technique is front coding. So what we do in front coding, let's suppose I have I will take any name like Ankit. Okay, so I have taken one name, Ankit. Okay, and I want to code this word into another word. So what I will do, let's the place value of A is 1, N is 14, K is 11, I is 9, and T is 20. So if I want to code Ankit in such a way, if I write the code for A in front of A. So let's suppose I have written B. So what I have done, I have moved 1 place forward. Secondly, I moved 2 place forward. So 16 means T. Then plus 3, 11 plus 3, 14 is N. 4, it will be 13 means M, and next is 5. So 5 means 25 is Y. So what I have done, I have coded Ankit into B, P, N, M, Y. Okay, so this is the coding technique, which what I have done, I have replaced every letter by the letter which I have placed in front of that letter. So I have placed the replacement of A just in front of A. So that's why I named this front coding. Okay, and what I have done with the repetition, like first I have added 1, then 2, then 3, then 4, then 5. So these 2 things, like what replacement, which place you are replacing. Okay, it doesn't mandatory that replacement of A will be replaced by the letter which will be placed at the in front of that letter. It is not mandatory. Okay, there are other places also. So I will discuss about those technique later. Okay, so you have to worry about 2 things. One is where you are placing the replacement, and you are going forward or backward. Okay, so I have taken one example. Okay, now I will use this example again.
Second is reverse coding. Okay, I need more space, so I'm going to erase this. Second is Ankit. Ankit, I will use Ankit again. Second is reverse coding. Reverse coding. Okay, reverse coding. So by reverse, you can understand that I have to write the code of A just opposite of A, just opposite side of A. So opposite side of A is this. So I will write the code of A here. Okay, so this time I am not adding in. Maybe I am going. I'm moving backward. Okay, so what letter comes before A? Can somebody tell me? Z. Yes. So -1. So it doesn't mandatory that I will every time I will increase the value or decrease the value. Maybe I will every time I am subtracting 1. Okay. So M, J, H, S. So what I have done every time? I have subtracted 1. Every time I have subtracted 1. Okay, T is 20, S is 90, H is 8, 9, 11, 10, 13, 14, 1, 26. You can see, you can observe the difference of 1 with every letter, but the replacement is written on the just opposite corner. So that's why this coding is known as reverse coding, and because of this cross connection, you can also call as cross coding. Okay. Clear? Third, I will take group coding. Group coding. Group coding. Okay. Group coding. So what we do in group coding? So in group coding, I will take 2 examples. One example for even number of letters, and one is for odd number of letters. So in Ankit, we have odd number of letters. Okay, so in mostly when we apply group coding, what we do, we take the middle letter and use front coding, and at the left side and the right side we will use group coding, sorry, reverse coding. Okay, so it's their choice. It's the choice of the person who is encoding this question. He can use similar numbers or different numbers. Okay, so you can understand that by just checking the question. Okay, I will take different letters. Okay, +2, -2, -2. Okay, so K is 11. I will take M here. -2 will give you L here and Y. Okay, R, G. Okay, so by using this, Ankit is coded as L, Y, M, R, G. Okay, one more example I will take. So the next example I will take is in which the number of letters are even. Okay, so dancer. Dancer. So here you have you have 6 letters. So it's the choice of the coder who is coding this letter. He can make group of 2 letters, or he can make a group of 3 letters. Let's suppose I am making a group of 3 letters. So in this way, I can make a group again. Okay. So apply anything like +1 here, -1 here. Okay. So O, B, E, Q, D, B. Okay. So this is the code. So these are the most important coding techniques of coding and decoding. Okay. How you will solve a question? Just take the code and the main word and code, place the values, use place values, and try to find out the logic. So these will help you to solve questions from
coding and decoding. Next thing I will talk to you about is order and ranking. Order and ranking. So it is one of the most easy type of question. Order and ranking. Order and ranking. So in order and ranking, question is mainly based on total number of people to find in a row or in a merit list. Okay, so first I will take questions from order. Order means setting. Okay, setting. Okay, so few people are sitting in a row. Okay, few people are sitting in a row. Okay, few people are sitting in a row. So this is your left hand. This is your left hand, and this is your right hand. So what they will do, they will provide you information of one person. Let's suppose this is one person whose position is given from left hand and whose position is given from right hand. Position of this person is given from both hands, one from left hand, one from the right hand. Okay, one from left hand and one from right, one from right. So position of one person is given from both hands. Okay, so total number of people in the row, total number of people in the row is position of this person is from left, position of this person from right, -1. So we subtracted -1 because when I'm taking his position from left, I included him. When I'm taking his position from right, still I included him. So I have included two persons at the same time. Clear? So one person cannot be included two times. You have to include only him or only that person one time. That's why I have subtracted 1. Is it clear? Tell me this is clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And what about ranking? So ranking is a similar concept. Okay. Ranking is a similar concept. So it is based on merit list. Okay. So there is a class in which the few students have appeared for a test. So based on their performance, you will make a merit list. So the student who topped the exam will acquire the first place, then second, third, fourth, and so on. Okay. So we will make a merit list. Okay. So someone is at the top, someone is at the bottom, and all other are between them. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. Okay. Let's suppose last -1. Okay. So somewhere a particular student's name is given. Okay. So position of the student is T from top and B from bottom. So again, you have to find out how many students are in the class. Okay, how many students are in the class? So again, you can find out this by using top plus bottom -1. So concept is same. Okay, concept is same. So that's why topic's name is order and ranking. Okay, because we are applying the same concept, but it looks different. Okay, one is horizontal phenomena and one is vertical phenomena. So you have to use same concept. Okay, and main thing is this. Okay, why we are using this formula? Because this is the minimum required information. Whatever we use, whatever the information is given, you have to understand that this is the minimum required information. Okay, so if you don't know, one person's position from both ends, you are not able to find out total number of people in the row.
Okay, if someone here have solved the question, he can say, sir, I have done some question in which I don't need this. Yes, maybe you don't need this, but the more information is given to you. The question for which you are talking, in that question, more information is given from, okay, apart from this minimum information. Then you are able to find out this. Okay, so what I said, that this is the minimum information, then you can tell that how many people are in the row or how many students are in the class. Okay, is this thing clear? अरे बोलो भाई. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you can use this in order and ranking. One more concept I want to discuss in order and ranking. In few condition, you need to find out number of person sitting between number of person between two people. Okay, two people. So let's suppose this is a row. Okay, this is a person A, this is a person B. Okay, this is a person A and this is person B. So position of person A from left hand is L1, LA. I will write LA, so it will have easy to understand. Then position of person B is given from left hand also, that is LB. Okay, so number of persons sitting between. So number of person sitting between. How you can find out? LB minus LA minus 1. LB minus LA minus 1. Clear? Or if we take the same example, if we have two positions. So position of B is given from right hand. Position of A is given from right hand. Okay. And again, you need to find out total number of people sitting between A and B. You will apply this RA minus RB minus 1. So it's clear. But tell me, this is clear to understand or not? Sir, actually all are muted. Okay. ठीक है मैं तो जुल्म कर रहा हूँ तुम लोगों पे, म्यूट हो और पूछ रहा हूँ कि बोलो. ठीक है, चलो. So I think these concepts are enough to help you to solve the questions. Okay. Yes. So it will give you a basic idea about the topic. Yes. Okay. So the next topic. क्या कर रहे हैं? निफ्ट का मैराथन चल रहा है 8 घंटे का, वही कर. Okay. So we have taken the example of coding and decoding and order and ranking. Now we will try to understand the basic concept of blood relation. So basically, in blood relation, you need to make a family tree diagram. Okay, family tree diagram. This is the most important concept, which make us able to solve questions from blood relation. So how we can make family tree diagram? Okay, so we first actually family tree diagram is a flow chart. Okay,
and where in this flow chart you are placing the members according to their relation. So that's why I'm calling it a family tree diagram. Okay, so basically it is a flow chart. So in flow chart, what you do at upper part, you will place someone who start this family. Okay, means your grandparents. You will place your grandparents here. Okay, then your father, uncle, aunt, you will place them here. Okay, then according to their number of children, you will place them here at the lower level. So as the generation number of generation increase, you will place them in downward branches. Okay, so in this way we will make a family tree diagram. So in most of the question we have 3 generations: grandparents, parents, and grandchilds. Yeah. So I will represent you some important relations, that how you can show them. Okay. So one thing I need you make clear first. For male, to show that a particular person is a male, I use plus sign. It's your choice. If you want to use something else, okay, you can do that. But I use plus. Okay, and no one is checking you that you had plus marks for male, so you are correct. And if someone is using plus for female and he is correct or she is correct, no one is checking you. There is no universal method. Okay, no one said that plus means male or minus means female. It is just a representation, and we are just using it to make a family diagram which can we understand only. Okay, it is not a universal diagram, so anybody can understand. So I use plus as male, minus for female. Okay, so let's suppose I need to show a couple. Couple means husband and wife. Okay, couple means husband and wife. So whenever we have a couple, I will represent them like this: A dash B. Okay, so A dash B means A and B are husband and wife. So how you can understand that who is husband and who is wife? Okay, you need more information, and if you know this and how you will show it, so you need more symbols. So that's why you have to use plus. So A is husband and B is wife. Okay, if I say D is son of B, if I say D is son of B, so it means D is son of A and B. Okay, so what I will do, I will make a downward branches. Okay, why I'm making 2 downward? Maybe according to the information I have, I know this, that they have 1 son. Maybe they have more children, so that's why I have created 2 branches. Okay, if there is no other son they have, I will left that branch without any alphabet. Okay, so D is their son. I will place D here, and D is the son. I will place a plus sign. If you are not aware that what is the gender of that person, please don't place any symbol. Okay, don't place any symbol if you are not aware that what is the gender of that person. Okay, only when you know that he is male or female. Okay, like, so what we have understand two relations. One is couple, how to show that 2 persons are couple. Okay, second is how to show parents and children. Parents and children. So how you will show parents and children means you will make these type of branches. At upper part you will place parents, and lower part you will place their children. Okay,
By using this, we can show relation between siblings also. Okay. So sibling means someone who is at the same level in the flow chart. Okay. So this is the flow chart. Okay. And someone is your sibling means he is at the same level. Okay. Let's suppose E and F are siblings. So you will place them like this, E and F. Okay. And we are not aware that who is male, who is female. If both are male, both are female, and who's their parents. So whenever as we get the information, we will place the people according to that information. Okay. One more information is placement of grandparents, and grandchild. So this is D. Let's suppose they have given the information that G is grandmother of D. Okay, so I am talking in this diagram. G is grandmother of D. So if G is grandmother of D, it means G is mother of A. Okay, G is mother of A. So G and A are mother and his son. Okay, so if G is mother of A, I will place G at this place and I will connect G and A. So now it's clear that G is grandmother of D. So grandmother and grandchild cannot be directly connected. Okay, there is someone, you have to place someone between them. Okay, what if we have no such information? Like our question is directly starting from this point that X is grandfather of Y. Okay, X is grandfather of Y. So X is grandfather of Y. So means X is father of someone whose children is whose child is Y. So I have created this vacancy here. So whenever I get the information, okay, whenever I get the information, I will place that person here. Clear? So these are the most common relations which we need to implement in family tree diagram or in a flowchart diagram. So this is clear or not? Tell me this is clear. Okay, ठीक है, कोई बात नहीं. The next topic we are taking is direction and distance. Okay, direction and distance. Direction and distance. Direction and distance. Okay, so here we have to discuss two concepts. One is about direction and one is about distance. So first I will talk you about distance. Okay, so distance. Wait a minute. Okay, distance. So there will be three cases for distance. One is you need to find out distance in such a way. This is like we have these 2 points. So you need to find out distance between point A and B. So this is a horizontal case, this is a vertical case, or this is a slanted distance. Okay. So in horizontal or in vertical, you will find out distance simply by addition
by addition or subtraction. Okay, you are able to find out distance by using simple addition or subtraction. Okay, why I'm saying addition or subtraction? So that is based on the condition. I will give you example also. Okay, someone is roaming around like this. Okay, and you need to find out this distance AB. This distance is 15. This distance is 15. This whole distance is 50. And this given distance is 20. So find out distance between A and B. So how you will find out this AB? So what you will do, you know this whole distance is 50, and the smaller part is 20. So 50 minus 20 is 30. So what you have done here? You have done subtraction. Okay. Okay, and addition also. Okay, in some other example, maybe you need addition. I will take one example. Five, 10, 5, 5, 10, 10, okay, and 10. So find out distance between these 2 points. Okay, so this dotted line represents the distance between point A and B. Okay, so okay, whenever something is missing, try to make the parallelogram, not parallelogram, rectangle. Okay, rectangle. So rectangle means this line must be equal to this 5. Okay, so if this 5 is equals to this will be 5. So this 10, from A to this point, this line will be equals to 10. From this, the point B is equals to 10. So you need to find out A to B, 10 plus 10, B. A to B, the distance is 20. Okay, so distance from A to B is 20. So these are the cases where you are when you have to find out distance between 2 points. Either distances are horizontal or vertical. Okay, but what if the distance is given on an angle? Okay, so whenever our distance is given on any angle, okay, means it is not straight, we will use what we will use Pythagoras theorem. Okay, so what we will do, we will extend the ends of this distance. We will extend the ends. So I have extended this end, then I have extended this end. Okay, so they both ends meet at one point, and let this point as O. Let the point as O. Okay, let this point as O. So by making OA and OB, you are able to find out AB. Okay, so if you know Pythagoras theorem, you know this, that AB square is equal to OA square, OB square. Okay, so when you need to find out AB, you need to use this under root OA square, OB square. Okay, I will take one example that how you can use if something is given like this. Okay. And this whole distance is 33. This distance is 12, and this is 20. Okay. And you need to find out distance between these 2 points. This point is A and this point is B. Okay. You need to find out distance between A and B. Whenever you need to find out distance between 2 points, means you need to find out the minimum distance between them. Okay, don't say 12 plus 20 plus 30. It will wrong answer. Whenever they ask you for a distance, it means you need to find out minimum distance. So this is the minimum distance. This is the minimum distance.
So now you can understand that this is a distance at a particular angle. Okay, so you cannot use addition or subtraction here. Okay, what you have to do, you just have to apply the Pythagoras theorem. So how you will able to apply Pythagoras theorem here? So what I told you, just to extend the ends. Okay, and already one line is given here, so somewhere both the extended ends will meet somewhere here. Okay, so you can see that we have created a rectangle. So in rectangle, opposite sides are same. So this is 12. So this is also 12. This is 20. This is also 20. Okay. So for this right angle, perpendicular is 20. You need to find out this base. So this whole distance is 33, and this smaller part is, okay, this smaller part is 12. So 33 minus 12 will give you 21. 21. Okay. So now you can find out AB. Okay. So AB, how you can find out AB? By taking square of 21, by taking square 20, and add them and take square root of them. So 21 is 441, 20 square is 400. So under root 841 will give you 29. So distance between point A and B is 29. Okay. So by this you can use Pythagoras theorem. Next is we need to understand about the direction. We will talk about direction. Okay. So whenever we talk about direction, this comes in our mind that north will be in upward direction, south will be in downward direction. Okay. This will be east and this will be west. So whenever we solve questions from direction distance, we will use this as a compass. Okay, means if I tell you that you have to go in north direction, so it means this is your point where you are starting walking, and you need to go towards north. So you will walk by using this, means north in an upward direction. So you will move in this direction. If I tell you to move in west direction, means to moving in this direction, you have to move in this direction. So you will rotate and move in west direction. Okay, so you will use this. That's why we have to learn this, in which direction is north, in which direction is east. Okay, so by this we are able to understand then which direction we are moving. Okay, so if I make a random diagram, by comparing this, you are able to understand that we are going in the east direction. Is this clear? Okay, next is next. So when we make a particular diagram and when we use all the instruction and make a diagram, let's suppose one person is moving in such a way. Okay, this person is moving in this way. He started from here. He started from A, and he is still moving in towards B. So what type of question they can give you based on the direction? First question is, in which direction he is moving. So in which direction he is moving? He is still moving. So you can compare with this compass. Okay, so this is east direction, so your answer will be east. So answer will be east. Second is, he is in which direction? In which direction? He is in which direction? He is in which direction from the starting point?
from the starting point. From the starting point. So he is in which direction with respect to starting point? So what it means? Place a compass here. Okay, place a compass here. This is east, this is south, west, and north. So you need to find out point direction of this point in respect of your starting point. So what you will do? You will look at this point from here. So in which direction you are in which direction you are seeing in between east or and south? So you will say southeast. So this point B is in southeast of A. Okay. They can give you opposite question of this. Means point A is in which direction with respect to B. I can also ask you this. So now this time place the compass here. Place compass here. Okay. So this is north, this is west. So A is in the northwest direction of B. Okay. So every time in a same for same points, for two same points, we have seen that they could ask you 3 questions. Okay. So whenever you are reading the last line, be careful. Okay. Be careful that which direction you have to answer. And in respect of A, you have to check B is in which direction, or we need to see that in which direction he is moving. Okay. So be careful with the direction. In here, most of the students make mistakes. Okay. So this is okay. Now I will tell you next concept in this direction and distance. So next is shadow concept. Okay. Shadow concept. So we all know in the morning, sun rises in the east. So tell me, it will change one day or not? It will remain same. It will remain same, sir. Yes, it will never change. Okay, so can I say that every morning, your shadow will be formed in west. Okay. Yes. So every morning shadow will be formed in west direction. Okay, your shadow will be formed in west direction. Okay. If I talk you about afternoon, if I make some minor changes and I said that the question is given on the basis of afternoon or evening. Okay. So in afternoon or evening, sun is also moving. So sun will reach somewhere here, from here to here. Okay. So sun is somewhere here. So your shadow will be formed in east direction. Shadow will be formed in east direction. This is very simple to understand. The shadow will be formed in the opposite direction of sun. Okay. So shadow, just remember this, the shadow will be found in the opposite direction of sun. So sun is in east, shadow will be found in west. If sun is in west, shadow will be found in east. Okay. Shadow will be formed in east. Okay. So I will take you one more thing in this part. Okay. In particular cases, okay, I will take one question. In my mind, so I will give you one question. In one morning,
in one morning, Amit is facing a pole. Amit is facing a pole, and shadow of pole is fall exactly to the right of Amit, in which direction Amit is facing. Okay, so in one morning, Amit is facing a pole, and shadow of pole is fall. Shadow of pole fall exactly to the right of Amit. Okay, so which direction Amit is facing? Okay. Is it not? Not. I don't know the correct exam. I need to Yes, solve this. Not. I have taken this question randomly, so I don't know what is the answer. I need to solve this. Okay. East. Okay. So in one morning, so most of the students have one problem, that's from which direction I need to start. You start from any of the direction. Okay, you need to take Amit and pole in any of the direction. Let's suppose I will take then Amit. Let's suppose this is Amit. Okay, this arrow is representing Amit. Okay, and the lower arrow is representing pole. This is Amit and this is pole. Okay, Amit and pole, they are facing each other. Okay, pole. Okay, and shadow of the pole fall exactly to the right of Amit. So if this is the facing of Amit, so this will be right of Amit. This is right of Amit. This is right side of Amit, and this is left side of Amit. Left of Amit. Okay. So in this direction, shadow is formed. So shadow is formed in this direction. So means this is morning. So in morning, shadow is formed in which direction? West. So it means this is west. This is west, and west of so opposite of west is East. East. So this will be east. Okay. And if I take the help of this compass, I can say that at the right side of east there is south. Okay, south is at the right side of east. Okay, so if this is east, so this is right side, so this will be south, and this will be opposite of south is north. So which direction Amit is facing? So what, tell me, which direction Amit is facing? South. Amit is facing south. Okay. Amit is facing south. So this is clear or not? Yes, sir. Okay. So by using this, you are able to solve questions. फिर से बोलिए एक बार. I understood till this thing. कि वो I mean, the shadow is on the right, so it's in the morning and it's facing west. But आपने जो south the last वाला बताया वो बता दो. Sylvie. So opposite of west is always east. East, yeah. So if west is here, east will be in the opposite of west. Okay. If I take the reference from here, to the right of east we have south. South, yeah. So if this is east, this is right of east. So I will write south here, and opposite of south is north. And Amit is looking towards south. Okay. Got it. Got it, sir. Okay. Next is the next we will take is Venn diagram. Venn diagram. Venn diagram. Me, Rahul sir. Yes, ma'am. So this is the last topic you are taking.
मैम जब तक आप बोलो मैं तो लेता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लास्ट हो रही है तो फिर मेरे पास टाइम है तो मैं तो लेता रहूंगा. It's okay, he can continue. थोड़ी देर 15 मिनट he can continue. Okay. And then I will take over. ठीक है? Okay, Kansha. okay. Yeah, okay, ma'am, sure. Okay, so Venn diagram means we have to show relation between some particular things by using closed circles, closed diagrams. Okay, we have to show relations by using closed figures. So one of the most used closed figure is circle. Okay, so when you see questions based on Venn diagram, use circle mostly. Okay, but you can use other examples, other closed figure also, like triangles or squares. Okay, quadrilaterals, hexagon, pentagon, heptagon. Okay, so but mostly we use circles. Okay, so you have to show relation between them by using closed circles, closed diagrams. Okay, so I will show you some examples. Okay, so I have 3 words: table, chair, and furniture. Okay, I need to represent them by using closed figures. So I will use circle definitely more. If you see all the examples, you will find they are using circles in such type of question. Okay, so furniture. So table and chair both are furniture. Okay, table and chair both are furniture, and table are table, chair are chair. No table is chair, no chair is table. Okay, so this is the diagram, and no need to write any initial. Okay, so anyone can easily understand that the bigger circle is for furniture, any one of them is table, and the other one is chair. Clear? Tell me, this is clear or not? Yes, sir. Okay, next example. Family, husband, and brother. So husband and brother both are part of a family. Okay, husband and brother both are part of a family. Yes, sir. And some husband are brother also. मतलब जिसके husband है उसके brother तो नहीं हो सकते, but किसी और के तो हो गए. Okay, and some brother are husband also, but all the husband are not necessarily brother of someone. Okay, and all the brothers are not necessarily husband of someone. Okay, so that's why we have connected them partially. Yes, sir. Please एक बार और बता दीजिए. अरे ठीक है. Yes, sir. So family. Okay, we will take it again. Husband and brother, they are part of family. Okay, so this bigger circle is used for family. Okay, husband and brother both are in the part of a family, and all the male who are husband is not necessary they are they are definitely brother of someone. Okay, and similar with the brother, all the brother are not necessarily someone's husband, so we will partially connect them. अरे आप खुद को ले लो. Take yourself as an example. You are single, so you are someone's sister but not someone's wife. Okay, Yes, sir. but if you take example of your mother, she is a wife, she is mother in the same time, maybe she is sister also.
Okay. Yes. That is not true for you. Okay. So that's why we are not using this for all. Okay. All the husband are not brother. Okay. Few more examples we will take to understand. Pen. So what is the relation between these three? स्वॉर्ड और स्पून आयरन से बना हुआ है? अरे बाप रे, आयरन कहीं दिया हुआ है? नहीं नहीं, आयरन से तो फिर पेन को भी बना सकते हैं. So don't use any particular name or category which is not given. Like iron is not given. Plastic is, you can make them from plastic also. You can make them by using wood also. Okay, but these are things are not given. So we just have to make a relation between pen. So I think nothing is common. Yes, so nothing is common. So if nothing is common, all separate. So you will make 3 separate circles. Okay. So this will show that pan, sword, and spoon are not connected. They have nothing. Okay, they have nothing common. Sir? Yes. Yes. I wanted to ask a question. Yes, please. There was this question Venn diagram pari ki there was students, cricket players, and table tennis fans. Student, cricket players, cricket players, and table tennis fans. Table tennis fan, है ना? हाँ. TT fans. हाँ. And इसका answer was तीनों circles interlinked थे. Yes. तो ये कैसे हुआ? क्यों नहीं हो सकता? You know, Sachin is a fan of golf. सचिन तेंदुलकर गोल्फ का मतलब सचिन तेंदुलकर गोल्फ को बहुत ज्यादा एडमायर करता है, इवन टेनिस को बहुत ज्यादा एडमायर करता है, जबकि वो तो एक लेजेंड है क्रिकेट के लिए. तो वो कोई अदर रोल नहीं हो सकते क्या उसके? बट सर स्टूडेंट के अंदर नहीं आने चाहिए ये दो. नहीं, जरूरी नहीं है. जैसे आप स्टूडेंट हो सकता है आप कोई गेम नहीं खेलते हो, आप हो सकता है कुछ और खेलते हो, जरूरी नहीं है ना कि आप क्रिकेट ही खेलते हो या टीटी खेलते हो सकता है आप बैडमिंटन खेलते हो, ना आप क्रिकेट खेलते हो ना टीटी खेलते हो. So what would be the relation between politicians, poets and women? एक मिनट पहले एक को हम डिस्कस कर लेते हैं. So student cricket player and TT fan. Okay. Okay. So student, so all these students are not cricket player. Only few of the students are cricket player, and those and also some of them are TT fans. Okay, let's take this example. So these are this shaded part. Let's suppose this part is showing students. So these are the students. They are not interested in cricket nor in table tennis. Okay. Now take this part. So this is cricket. So but these students are playing cricket, and this is TT. So out of all the other students, these particular students are also playing cricket and they like table tennis. Both. Okay. So and there is a type of students. 3 type of student is given here. The student not interested in cricket, nor in TT. Students who like to play cricket but not interested in table tennis. Students who play cricket along with they like to watch TT. Clear? And sir, what about the area between cricket and make them randomly, make diagram randomly.
Okay, you don't need to make them by using their scale. How could you No, know sir, how many? मतलब What do you think? How many in total number of students? How many of the students like to play cricket? Do you have any such data given? no, sir. What I'm asking is, That's why you need to make them randomly. सर जैसे आपने एरिया शेड करा है नो कि ये हाँ। स्टूडेंट्स एंड क्रिकेट दोनों, तो मैं पूछ रही हूँ जो एरिया टेबल टेनिस और क्रिकेट के बीच में, वो स्टूडेंट्स ही नहीं है, वहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है कहाँ पे? यहाँ पे? इसके साइड में, यहाँ पे? अदर साइड, राइट साइड। यहाँ पे? हाँ, तो कुछ हाँ। लोग ऐसे होंगे, अब जैसे मेरे को पसंद है क्रिकेट खेलना है, टेबल का, तो मैं थोड़ी ना स्टूडेंट। ओके। तो दुनिया में ऐसे लोग भी तो एग्जिस्ट करते हैं जिनको क्रिकेट भी पसंद है, टेबल टेनिस भी पसंद है, पर वो किसी स्कूल में पढ़ते नहीं है या किसी कॉलेज में नहीं पढ़ते। लाइक आपके फादर, आपका भाई, मतलब जो कॉलेज पास आउट हो चुके हैं, तो वो अब स्टूडेंट्स में तो नहीं आते, बट उनको भी कोई गेम तो पसंद होगा ना, वो कुछ तो देखते होंगे, तो वो जरूरी तो नहीं है कि वो भी स्टूडेंट है। अरे ना समझ बात, स्टूडेंट तो एक पर्टिकुलर हमारी एज का वो हो गया, जैसे हम टीनेजर बोलते हैं वैसे भी हम एक एज तक ही तो स्टूडेंट रहते हैं। कितना पढ़ोगे भाई? 20 तक पढ़ लोगे, 25 तक पढ़ लोगे, 30 तक पढ़ लोगे, 35 तक पढ़ लोगे, कहाँ तक पढ़ोगे? है ना, तो सारे लोग तो स्टूडेंट नहीं हो सकते। ठीक है? May I ask you a question? Okay. Yes, please. From the same topic. Sir, will you be doing calendar questions today? Calendar questions today? I don't think I have enough time for calendar. So I think you have few minutes. So without wasting time, if you need to ask something, you please. तो बस एक कैलेंडर का बता सकते हैं क्वेश्चन, if I tell you the question. जल्दी बोलो। Yes, sir. On what dates of June 2005? 2005, हाँ। 2005 June did Monday fall? Monday fall. Options भी बताओ। क्वेश्चन आपका ये है कि जून 2005 में किस दिन मंडे पड़ेगा? हाँ, किन किन दिन मंडे पड़ा था? तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इसके बारे में? और भी कोई इन्फॉर्मेशन है? So options है? Okay, नहीं, ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। Do The one whole thing. question says on what days of June. I will tell you the way to how to solve question. Okay. 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 Find out 1 June 2005. Okay. Find out 1 June 2005. Okay. Let's suppose this is Tuesday. Okay. This is Tuesday. Okay. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 जून में 30 दिन होते हैं, 30। तो देख लो इस हिसाब से कितने आंसर आ जाएगा। So but first June Tuesday मंडे कैसे लेगा? 1, 2, 3, 4। अरे मैंने एग्जांपल लेके बताया, मान लो आप सॉल्व करोगे कुछ तो आएगा। सर यही पूछना है कि फर्स्ट जून का कैसे निकालेंगे, ट्यूसडे? नहीं भाई, उसके लिए तो मुझे पूरी क्लास लेनी पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू। मुझे लगा आपको ये समझ नहीं आया कि मंडे कैसे निकालना है। Only I can tell you is this: you have to learn this and you have to take whole class. ठीक है? Thank you, sir. Okay. Okay, so as we are talking about the Venn diagram, okay. So Akansha ma'am, should I continue or Ashmit ma'am is joining? सर मैं लेती हूँ। Okay. मैं बंद कर दूं? पूछ लो, डाउट होगा किसी को तो एक बार पूछ लेंगे लास्ट बार आपसे। Does anybody have any question?
मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए? No, ma'am. No, ma'am. Astha again wants to ask something. Astha, go ahead. आस्था मखीजा कुछ बोलो बोलो जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है। आस्था अच्छा सिलोगिज्म का कुछ कैसे जल्दी सॉल्व करना है वो बता सकते हैं? यार सॉरी उसके लिए पूरा चैप्टर यार, मतलब जल्दी से यार बड़ा मुश्किल है। ओके सर। सिलॉग्स जो टॉपिक है यार, ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है एक्चुअली। इसमें सर्टेन रूल्स हैं जो हमें डिस्कस करने पड़ते हैं, देन यू आर एबल टू understand that what the diagram is, what is the meaning of that diagram. You have to translate it, that diagram. So you have to understand all the conditions. Okay sir. हाँ आज चलो, मेरे को नहीं लगता आज तक को पूछ। चलिए मैम आप कंटिन्यू कर लीजिए। Hello, sir. I think Astha has questions. Astha, you have question? हाँ बोलो आस्था बोलो। तो वो ना अनम्यूट करने के लिए अलाउंस नहीं था। हाँ, सर दिस क्वेश्चन a is equal to 26, sun is equal to 27, then what is cat? क्या बोला तुमने? a is equal to 26, हाँ sun sun is equal to 27, 27 cat निकालना है, then what is? कुछ और भी दिया हुआ है? सर ऑप्शंस गिवन है। हाँ क्या दिन गिवन है? 29, 27, 57, हाँ 58। 58। तो ये आपने कैट वाले ग्रुप में भेज देते, वहीं सॉल्व कर देते ना। ओके सर मैं दे दूंगी। ठीक है, देखो मेरे को लगता है ये उल्टा, जैसे ए इन्होंने 26 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पीछे से काउंट कर रहे हैं, है ना? तो अगर पीछे से काउंट करोगे तो एस कौन सा हो जाएगा? 26 माइनस करके देख लो 19, तो ये हो जाएगा 7, एस हो गया 7। 26 माइनस 21 करके देख लो, यू होता है 21 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5, एन कितना होता है 14, तो 26 माइनस 14 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसको देखो जरा यहाँ से, ठीक है कितना हो रहा है? सर 27। नहीं पीछे से काउंट कर रहे हैं ना, 27 से करेंगे, एक मिनट और 27 से करेंगे, 27 27 एंड 27, तो इसमें कितना आ जाएगा 8 और 6 और 13। अब देखो 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है आस्था? सर आपने 19, 21 और 14 कैसे लिया? 19 कहाँ? अच्छा ये हाँ जब मैंने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करा था तो मैंने यही सब बताया था। सर ये कोड्स है ना नंबर्स के? हाँ तो ये कोडिंग डिकोडिंग जब मैं शुरू में बता रहा था देखा था तुमने? हाँ हाँ तो यही सब तो बता रहा था मैं। ठीक है, रिवर्स में ले लिए हैं, ठीक है, मतलब अदर एंड से उसकी पोजीशंस ले। ठीक है चलो, इनफ फॉर टुडे, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट गाइस। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय। ओके तो मैं लीव कर दूं आकांक्षा मैम? अटक गई आकांक्षा मैम। सर अभी लीव मत करना, आप होस्ट बन गए हैं। जी जी
सर हाँ जी। सर मेरे को ये पूछना था, जब हमको ये क्वेश्चन आता है ना कि जैसे अगर 2001 1 जनवरी को मंडे है तो नेक्स्ट 2002 जनवरी 1 को क्या होगा, तो इसमें जो हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, तो वो प्रीवियस जो बेस ईयर दिया हुआ है उसको देखते हैं या जो नेक्स्ट आने वाला है। जैसे तुमने कहा कि 1 जनवरी 2004 को मान लो मंडे है, तुमने ये कहा है ना, हाँ और जी। तुम्हारा क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2005 को क्या होगा, हाँ जी। है ना। तो इसको देखो कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। और लीप ईयर कभी भी हमें एक ईयर देख के पता नहीं चलता, एक पीरियड देख के पता चलता है। तो ये 2004 से 2005 का जो टाइम पीरियड है, इसको देखो ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो जब भी लीप ईयर कोई होगा तो वो तब पता चलेगा जब उसमें 29 फेब आ रही है। तो क्या देखो इस ड्यूरेशन में 29 फेब आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये 4 लीप ईयर है। तो ये लीप ईयर है, इट मींस आप एक दिन आगे चलोगे। तो वैसे तो कोई भी ऑर्डिनरी ईयर अगर मंडे से शुरू हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर को ट्यूसडे से शुरू होना चाहिए, बट ये लीप ईयर है तो ये वेडनेसडे से शुरू होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और कुछ? आई थिंक अश्विन में आप कंटिन्यू कर लो मेरे ख्याल से, डिले भी हो रहा है फिर। All right, just a second, guys. Yeah, thank you so much, Rahul sir. Okay, thank you, ma'am. Yeah. Okay, so students have already cleared doubts, right, with reasoning part? Okay, so ठीक है, Ashwin ma'am, please go ahead. Okay, so I'm leaving it. Yeah, thank you so much, sir. Okay, ma'am. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, Bye-bye, sir. ma'am. Thank you, sir. Okay, bye bye. Thank you, sir. All right. Hi, everybody. Hello, ma'am. Hi, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Good afternoon. Okay. So today एक चीज करते हैं and उसके बाद we'll open it up to questions. So traditional Indian clothing लिखा है, ये clothing items है. Since you all belong to different parts of India, do you want to share which traditional items of clothing have you seen in your particular state or region? You can write it in the chat box. Open it up to everybody and write it in the chat box, the different pieces of clothing, traditional pieces of clothing that you have in your particular region that you belong to. Even if it is Delhi, Delhi mein, what kind of clothing is worn often? I can't see any response. So okay, Agya is saying chikankari, very nice. Banarsi silk, great. Prakriti is saying dhoti kurta in Bihar. Great. Maharashtra में पैठानी sarees, very good. Rangwali Pichorda in Kumaon, Uttarakhand. Kanchipuram. Kanchipuram, yes. West Bengal में red border and white sarees, very good. Casual wear in Delhi, there is a name for that. Chikankari in UP, women sarees पहनती, traditionally sarees हैं. And even if like Indian में we have for women traditionally sarees and salwar kameez, but usko or break down kare to when we go to region wise, they have different sarees ke names as well. Dhoti and lungi in UP, very good. Punjabi suit, great. Patiala suit, for example. All right. ठीक है. इसी
करके राजस्थान में घाघरा, ओढ़नी, धोती, अंगरखा, साड़ी एंड कुर्ता, ग्रेट, ठीक है। सो यही करके मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल एंसेम्बल। सो उसमें जो जो चीजें आती हैं फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, चाहे वो एक पगड़ी ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई एक्सेसरी क्यों ना हो, वो चीजें कुछ चीजें मैंने इस पीपीटी में कवर करने की कोशिश करी है। ऑफ कोर्स सिंस वी हैव अ वेरी डाइवर्स nation, we could not cover the entirety of it, but I've tried to cover a lot of it. We have discussed a lot of garments, traditional garments in the GI tag section as well. But here we are going to begin with something called abaya. Does anybody know what abaya means? Yes, niqab. What is, yeah, so abaya is जो इन्होंने black color का garment नीचे पहना हुआ है. It's like a cloak like garment, loose garment होता है, उसके नीचे usually pants पहनी जाती हैं. And different Islamic countries में ये ज्यादा popular है, but India में भी people from the Muslim religion wear this particular garment. Then we have something called, just a second. Yeah, then we have abo. Abo is basically जो ये आप देख रहे हैं ना, इमेज देख रहे हैं, ये बहुत ट्यूनिक होती है, ट्यूनिक और गाउन you can call it, जो खुला थोड़ा गाउन होता है. Women of Gujarat and Rajasthan usually wear it. Kutch region में ये popular है as a wedding garment. इस पे यूजुअली एम्ब्रॉयडरी हुआ करती है, कच्ची एम्ब्रॉयडरी होती है, या तो फिर नेटिव टू राजस्थान एंड गुजरात जो एम्ब्रॉयडरीज होती है वो होती है, मिरर वर्क होता है. तो जब हमने मैप में पॉइंट आउट किया था कि कहाँ पर किस तरीके की एम्ब्रॉयडरी होती है, वी हैव कवर्ड, वी डिड कवर बोथ. मिरर वर्क भी हमने किया था, कच्ची एम्ब्रॉयडरी भी किया था. डू यू गाइस रिमेंबर इट? ओके. देन वी हैव अचकन. अचकन इज बेसिकली जो आप कोड देख पा रहे हैं इधर, मैं भी चैट बंद कर रही हूँ तो अभी चैट पर रिस्पॉन्स मत करना. बट अचकन जो द कोड दैट यू कैन सी, इट इज मेड अप ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल एंड straight collar neck hota hai, and then you have a band like neck collar with the achkan. Ma'am, is it like sherwani? Yeah, sherwani is in whole ensemble. जो ये achkan है ना, ये कोट ही होता है, ऊपर वाला जो होता है ना. So sherwani के ऊपर कुर्ता भी हो सकता है. Yeah. So this is particular जो आप देख रहे हैं, ये buttoned up होता है, usually लंबा होता है. कुछ छोटे achkan भी आते हैं till your waist के below जरा से उतने achkan भी आते हैं. Traditionally for men, but now it has been, over the time it has been introduced for women as well. Usually festivities के time पे ये पहने जाते हैं. Then you have angarkha. This particular piece of clothing is famous in the Gujarat and Rajasthan region. The particular the kurti style, short kurti style that you can see, वो usually एक side से बांधते हैं. If you can look at the picture, इधर से बांधते हैं, and then the other garment comes on top of it, वो tie करते हैं with the strings. So long sleeves होती है, open front होता है and flared रहता है, A line रहता है usually अंगरखा. Anarkali. Why is it not working? Yeah, so anarkali, named after anarkali, it is a particular kind of suit. सलवार सूट होता है जिसमें नीचे चूड़ीदार होती है, या आज के टाइम पे दे डोंट इवन वेयर सम पजामीज और समथिंग लाइक दैट. बट अनारकली सूट में आप जो ये कलियां देख रहे हैं, दैट यू कैन सी द प्लीट्स, दोस प्लीट्स आर डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अनारकली एंड यूजुअली ए लाइन होता है ये. दिस is another form of clothing that is popular in the UP region and the Delhi and the northern region. अंगवस्त्रम और थुंडू. सो ये अंगवस्त्रम और थुंडू बेसिकली क्या होता है, कि जो आपने धोती और थुंडू के कॉम्बिनेशंस आते हैं, जो धोती उन्होंने नीचे पहनी हुई है, थुंडू ऊपर एक व्हाइट कलर का पीस ऑफ क्लॉथ होता है, दैट इज कॉल्ड थुंडू. डाउन इन साउथ इंडिया में पहना जाता है.
बादला, ये आप यू कैन सी द सिल्वर थ्रेड और सिल्वर वायर जिससे एम्ब्रॉयडरी हुई है, दैट सिल्वर वायर इज नोन एज बादला। इसी के नाम की एक बादला एम्ब्रॉयडरी भी होती है जो फ्लैट सिल्वर कलर्ड वायर से की जाती है जरदोजी के काम से, बादला। और देयर आर मेनी अदर नेम्स फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। देन वी हैव बगलबंदी, अगेन वेरी सिमिलर टू अंगरखा, very similar to that. Design wise you have this bagalbandi, tunic like garment है, usually men पहनते हैं। again वापस waistcoat जैसे है, waist length तक होगा and ऊपर से tie करके एक साइड से बांधेंगे, फिर दूसरी साइड से ओवरलैप करते हुए गारमेंट आएगा एंड टाई होगा साइड में। Then we have band gala. Band gala is a style of collar, और इसके बंद गला के कोट्स आते हैं, usually coats and jackets. It is usually worn during the wedding by the groom and by the groom or the groom's family, and this comes in the whole jacket and pant ka combination. So this particular image that you are seeing, the kind of collar that they have, this is particularly called band gala. ये आपके लंबे लेंथ में भी आते हैं, छोटे लेंथ में भी आते हैं। चौगोशिया, सो चौगोशिया एक बहुत पुरानी ड्रेस का स्टाइल है जिसमें यूजुअली इसको पैंट साड़ी भी कहते हैं। एक नीचे ट्राउजर्स या पैंट या पजामी करके कुछ होगा फॉर द लेग्स, एंड देन यू हैव साड़ी ऑन टॉप ऑफ इट, देन यू हैव अ ब्लाउज एज वेल, जिसको जैसे इनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अ टाइट ब्लाउज कॉल्ड द चोली, लूज ट्यूनिक कॉल्ड द कुर्ती, और it is also a sari, tight pajamas and 5 meter dupatta. Then we have choli. Choli is basically a blouse, popular and essential part of clothing by Indian women. Traditionally choli across India, जहाँ पर घाघरा या चनिया और स्कर्ट्स, लॉन्ग स्कर्ट्स पहने जाते हैं, उसके साथ एक जो ब्लाउज पहन जाता है उसको चोली कहा जाता है। डिफरेंट रीजन्स में इसके डिफरेंट नाम होते हैं। Over time we have had different styles also evolving of choli, जिसमें किसी न किसी तरीके से वो बांधी जा रही है या यूज की जा रही है। Then we have चूड़ीदार. चूड़ीदार is very similar to leggings. नीचे you see the wrinkles, जो wrinkle gather हो रहे हैं वो usually कॉटन की बनती है, उसको चूड़ीदार कहते हैं, worn with a kurti. Dhoru is basically a blanket. Traditionally, it was supposed to be a blanket worn over the body by people of Himachal Pradesh, but now similar fabric ke they're also, it is basically a textile. So similar fabric ke they're also coming up with the jackets and coats for people of Himachal Pradesh. So Dhoru is a very traditional clothing item of Himachal Pradesh. Dupatta, you guys must already know about it, but दुपट्टा का जो हिस्ट्री ट्रेस बैक किया जा सकता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से चलता आ रहा है। मोडेस्टी के लिए पहना जाता है, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट, कुर्ता जो आप पहनते हैं, या यू वेयर अ सलवार कमीज सूट, और समटाइम्स इवन गर्ल्स ऑफ इंडिया इवन वेयर इट विद योर जीन्स एंड टॉप, स्टोल का नाम दे दिया जाता है, उसको दुपट्टा कहा जाता है। ये जो आप पिक्चर में दुपट्टा देख रहे हो बांधनी दुपट्टा है, टाई एंड डाई प्रिंट है ये। देन यू हैव घाघरा. Now घाघरा is a long embroidered pleated skirt secured at the waist. It is usually worn with the choli that we discussed above and sometimes with the kurta. कलीदार जो आप घाघरा देखते हैं वो उसमें कलियां होती हैं, अगेन very similar to the कनारकली that we did. तो वैसे कलियां होती हैं and it has triangle shaped panels to make it very free flowing. कमरबंद एक वेस्ट एक्सेसरी है जो it's popularly worn by women with the sari. So it's worn on the belly to
mean over the sari as a form of accessory. Usually gold या सिल्वर की कमरबंद होते हैं. नीचे साउथ में ये वेडिंग्स पे often spot किया जाता है by the bride, on the bride. Then we have pagdi. Pagdi has different names throughout India. You have feta, जो आप image में देख रहे हैं वो feta है. Feta अपने महाराष्ट्र में है, and सरपेज जो आप कभी शादी में जो पग पहनी जाती है by Hindu men, उसके ऊपर जो लगाया जाता है उसको सरपेज कहा जाता है to make it look more festive. It can be of different forms, it can be of different shapes, and pagdi or the turban that we have in India has a long history in India itself. Different religions में पहनी जाती है and different तरीके से उसको बांधा जाता है, उसके हिसाब से उसका नाम बदलता है. Then we have Fehran. Fehran is a traditional outfit for both male and female in Kashmir Valley. It's like एक गाउन या ट्यूनिक की तरह होता है जो बहुत लूज होता है, उसके ऊपर दो गाउन पहने जाते हैं. एंड अगर इफ यू विजिटिंग कश्मीर, सो जब पिक्चर्स खिंचवाते हैं लोग ट्रेडिशनल आउटफिट्स में, देन यू यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर वेयरिंग द आउटफिट कॉल्ड फेरान. मीजो पोंशे हमने किया था, बट मैंने ये इंक्लूड किया है इसमें. ये कलरफुल शॉल है स्टेट ऑफ मिजोरम से, जो यूजुअली टॉर्सो पे और नीचे उसको रैप किया जाता है बॉडी के अराउंड. जो फर्स्ट वाली इमेज देख रहे हैं वो पोंशे की है, एंड थर्ड वाली पॉन्डम में हमने करी थी. और ये और भी तरीकों के फैब्रिक हैं जो रैप किए जाते हैं बॉडी के अराउंड. दिस पर्टिकुलर वन, मीजो पोंशे एंड पॉन्डम, हैव द GI tag as well. Then we have salwar kameez, a very popular piece of clothing that is worn by the women of India. Salwar kameez and sari, though these are both popular ones. Sari मैंने include नहीं करी because almost everybody knows about the sarees. And वो region wise we have to see कि कौन कौन सी साड़ी कहाँ कहाँ पहनी जाती है. Salwar kameez is basically a pair of light loose pleated trousers that you can see in the bottom of the image. And उसके ऊपर एक कुर्ता होता है, जो कुर्ता जिसको अगर हम जीन्स के साथ पहने और लॉन्ग हो तो वो कुर्ता कहलाता है, शॉर्ट हो तो कुर्ती कहलाती है, और अगर सलवार के साथ पहने जाए तो उसको कमीज कहते हैं. साउथ ईस्ट एशिया में दिस इज अ पॉपुलर पीस ऑफ क्लोथिंग. इट इज ऑल्सो worn in your Pakistan, Sri Lanka, as well as Bangladesh and Nepal. So it's not just limited to India. Then we have tehmat. Tehmat basically एक लुंगी या कुर्ता होते हैं जो ट्रेडिशनली पंजाब में पहने जाते हैं by the men of पंजाब. गिद्दा या भांगड़े की जो ड्रेस होती है वो उसको tehmat कहते हैं. That's it. Doubts? If you want yourself to be unmuted, you'll have to raise your hand and the host will unmute you. Okay, I am the host. Why can't I see the participants? The last one is called tehmat. It's a traditional dress of Punjab, worn by men. Ma'am. Yes, Deepika. What is the fourth name for meso ponche? One is pondam. One is twal ho. Just a second, I'm sharing. Hold on. Here. You can take a screenshot of it or a picture of it.
All right, Anjali wants to. Hanji, Anjali. Yes, Anjali. Ma'am, what is Dhoru? DHORU. Just a second. Dhoru na basically beta, it's also a region in Rajasthan. Just a second, I'll show you what Dhoru is. It's like a shawl. ये देखिए, ये इन्होंने पहना है ऊपर. The last image that you can see here, the shawl that they're wearing. Yes, Saroj. मैम क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसमें, मतलब कैसे पूछेंगे? नाम पूछेंगे, रीजन पूछेंगे. लाइक ट्रेडिशनली? हाँ. Mentioning the name, either they'll mention the say for example which of the following pieces of clothing is from Himachal Pradesh, options given, or which state does Dhoru belong to, things like that. ठीक है? Manya. Ma'am, is there any PDF uploaded in the drive related to the prints of different states like Bandhani print, Rajasthani print, etc.? There is. It is not a PDF, it is an image. Okay. Kamarband. Suvedya, it's called Kamarband. Here, Kamarband. Yes, Manya. Please switch off your mics if you're not asking questions. Alankruta, you have a question? No, ma'am. Ma'am, now we just have like a day left, तो हमें किन topics पे ज़्यादा focus करें? मैंने बहुत बार discuss किया है ये चीज. A lot of times. Right now, it is not the day before exam, 2 days before exam. It is not the time to take up new topics, revise whatever there is. You think अगर आपको लगता है कि आप किसी एक particular topic में confident है, उसी को revise करो. That's it. ठीक है? Okay, ma'am. Yeah. History go through कर लो एक बारी. And current affairs. Do we have any more questions? Akanksha ma'am? Yes, ma'am. मैम क्या करना है? क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. तब आता है बच्चों को. I think so, ma'am. Ankita, ma'am, we have questions on Zoom. What are you saying? Ma'am, we have a questions on YouTube. Sorry. हाँ जी मैम पूछिए. Okay, so one is Fragger Oak. Okay, long blanket dress warm in HP Dhoru. Yeah. It's only this man. इसमें क्वेश्चन. सो बेसिकली जो धोरू है वो एक टाइप का टेक्सटाइल है, वो एक टाइप का निट जिससे शॉल और ब्लैंकेट बनती है. वो ब्लैंकेट के ही कपड़े से आजकल जैकेट्स भी बन रही है उसी टाइप ऑफ ब्लैंकेट से.
but it is usually worn to keep oneself warm. गर्म रखने के लिए पहना जाता है, ब्लैंकेट इसलिए है वो. No more questions? ठीक है मैम, then we'll move to the next person, the next faculty. Ma'am, so we have a break right now. ठीक है. All 1 right. to 1:30. All right, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay. So students, we will have break right now. We will connect again at 1:30 p.m. Okay. एकदम गजब लग रही है. किससे बतिया रही हैं आप? हाँ. वो तो आ ही रहे. %20 ऑफ ढूंढ लिए हैं. 22% ऑफ ढूंढ लिए हैं. आपको मुझको सभी लोग बतियाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, हमको तो पता नहीं.
Hello. Hello, ma'am. Hello. Hello, everyone. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Yeah. So, how's your preparation going? Everyone? Ma'am, it's nice only. Okay. Okay, fine. So, अभी हम स्टार्ट करेंगे. आपको एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, ओके, उस बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट अगर आपका लिया जाए तो फर्स्ट आपको सीनिक क्वेश्चन आएगा या फिर आपको फिगर ड्राइंग आ सकता है. ओके, तो फिगर ड्राइंग क्वेश्चन में आपको कोई सीन दिया जाएगा, फिगरेटिव वर्क मतलब जैसे बलून सेलर या फिर कोई स्ट्रीट, कोई सिचुएशन दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको फिगर ड्रॉ करना है. या फिर ऐसा बताया जाएगा कि आप विंडो से देख रहे हो बाहर तो आपको क्या दिख रहा है, ऐसा सिचुएशन दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना रहेगा. ये आ सकता है. या फिर नेक्स्ट थिंग कि आपको एक सीनिक ड्रॉइंग दिया जाएगा कि आपको ये एंगल में आप बैठे हो तो आपको पर्सपेक्टिव में कैसे दिखेगा. जैसे सेम आप अभी विंडो में बैठे हो तो विंडो से आपको बाहर कैसे दिखेगा, ये आपको पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करना होता है. ओके, तो फिर आपको यहाँ पे पर्सपेक्टिव में और फिगर ड्राइंग में यूजुअली सिर्फ आउटलाइन करना आता है. ओके, आपको ड्राइंग, आपको कलरिंग वर्क नहीं आता है. कलरिंग नहीं करना है, इवन पेंसिल शेडिंग आपको नहीं करना है. ड्राइंग पार्ट में आपका लाइन वर्क पे ध्यान देना है ज्यादा, क्योंकि ये सिर्फ आउटलाइन ड्राइंग होगा. ओके, तो आपका लाइन वर्क्स में ध्यान दो जब भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो. Yeah, can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay. तो जब भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, या तो आपका लाइन स्ट्रेट होना चाहिए. ये अवॉइड करो, इसमें मार्क्स आपका इसका मार्क्स कट हो सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको कोई विंडो ड्रॉ करना है, कोई चेयर ड्रॉ करना है पर्सपेक्टिव में. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव लिया. ओके, सो अभी आप डिटेलिंग करोगे तो इस पे ध्यान देना ज्यादातर. ये आपका थिकनेस है. ओके, तो थिकनेस पोर्शन दिखना चाहिए. अगर आप टीवी ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप विंडो ड्रॉ कर रहे हो, वहां का थिकनेस दिखना चाहिए आपका. ओके, यूजुअली स्टूडेंट्स का ये मिस्टेक होता है कि आप ये सब नहीं दिखाते हो डिटेलिंग पार्ट. अगर इसके अंदर आपको और डिटेलिंग दिखाना है, अब ये देखो, अभी ये मैंने इधर का अंदर पोर्शन हॉलो रहेगा, राइट, तो इसके भी अंदर का साइड दिखेगा. सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये चीज सब दिखना चाहिए. ओके, Yes, ma'am. दिस वे. सो पर्सपेक्टिव केस में किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को कुछ डाउट है कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने में, आपको मेन इतना ध्यान रखना है जितना ज्यादा हो सके आपको डिटेलिंग ऐड करना, क्योंकि ये कंप्लीट उसमें ही रहेगा आपका. यस Ma'am, can you do one question? I am a bit confused in that. Okay, which There's one? this question that you are a rat and in college canteen you have to depict what you see. Okay. So one thing, आपको बोला है रैट कहाँ पे है वो क्वेश्चन में? Yeah. No, ma'am, I don't think so. This question is from mock test. For mock test. Okay, तो दो हो सकता है. एक आपको ऐसा बोला जाएगा कि रैट फ्लो में है. ओके, तो फिर आपको 3 पॉइंट से निकालना पड़ेगा. ओके, क्योंकि रैट का हाइट बहुत छोटा रहेगा. ओके, या फिर अगर आप 2 पॉइंट से कर रहे हो तो आपका वैनिशिंग पॉइंट बहुत नीचे आएगा. ओके, एंड अगर आपने टेबल के ऊपर कुछ दिखाया तो आप नॉर्मल दिखा सकते हो. I'll try and show. Yeah. 2 point and 3 point perspective में क्या? 2 point and 3 perspective में डिफरेंस क्या होता है? ओके, देखो 1 मैं तीनों भी बताती हूँ.
1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा शीट है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमेशा आपको फ्रंट वॉल दिखेगा, ये आपका आई लेवल लाइन रहेगा, आपको ये वैनिशिंग पॉइंट रहेगा, ये आपका फ्रंट वॉल रहेगा। ओके, ये आपका 1 पॉइंट में आएगा, हमेशा फ्रंट वॉल दिखेगा। 2 पॉइंट में क्या होगा, अगेन दिस इज योर पेज, आपका 2 वैनिशिंग पॉइंट रहेगा। वैनिशिंग पॉइंट कभी भी ले रहे हो इतना छोटा मत लेना, पेपर के हैंड में लेना। ओके, क्योंकि वैनिशिंग पार्ट से आपका बाहर कोई ऑब्जेक्ट गया तो आपको ड्रॉ करने नहीं होगा। ओके, एंड ये आपका रहेगा कॉर्नर लाइन, रूम का हाइट या फिर कोई भी रूम का हाइट दिया है, बिल्डिंग का हाइट देना है आपको, तो ये जो कॉर्नर लाइन है इसका हाइट मेजर करो, देन ये यहाँ से जाएगा, दिस विल गो फ्रॉम हियर, सिमिलरली दिस विल गेट एक्सटेंडेड हियर। तो ये जब कॉर्नर लाइन दिखता है ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में होता है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक तो 2 पॉइंट से रहता है एंड बाकी सब स्ट्रेट लाइन से रहता है। ओके, नाउ इन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव डिफरेंस क्या होता है, दिस इज योर 2 वैनिशिंग पॉइंट्स। ओके, तीसरा वैनिशिंग पॉइंट एक तो ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा। ओके, अगर आपका या दिस वे, ओके, अगर आपको बर्ड व्यू करना है, बर्ड ऊपर से देख रहा है तो आपका वैनिशिंग पॉइंट नीचे आएगा। अगर आपको एंट व्यू करना है तो एंट नीचे से दिख रहा है, आपको वैनिशिंग पॉइंट ऊपर देना पड़ेगा, ऑपोजिट से यहाँ पे ये। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी यहाँ पे मैंने ये जो रूम का कॉर्नर लाइन ड्रॉ किया, मैंने स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसे लाइंस नहीं ड्रॉ कर पाओगे, ये आपका जो भी है ये पॉइंट से ही जाएगा। सो अगर मेरा ये पॉइंट हो गया, देन दिस विल गो here, दिस विल गो here, ये यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे टीवी यूनिट दिखाना है तो अगेन मैं स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकती या फिर इसको पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ कर सकती, दिस विल गो फ्रॉम कम फ्रॉम दिस लाइन। अंडरस्टूड? Excuse me, ma'am. In exam, Yeah. Yes. In exam, ma'am, generally 1 point and 2 point perspective comes, right? Yeah, Is 1 it point and need 2 to point practice perspective. third point also? No, 3 point Okay, it's ma'am. very less. Mostly 1 point and 2 point perspective. Okay, ma'am. Okay. Okay. Can rat Yeah. can rat be made from 2 point or 1 point except Can you repeat? we make a rat view composition other than 3 point, like 1 point and 2 point? Is that possible? Rat view. Yeah, you can make. Usually you have to use 2 point perspective, you have to use 3 point perspective. This is not given in your question, it's totally on you which point you want to use. Okay, they just ask you the scene. For example, if you're sitting in a train, you can draw that in 1 point perspective also, but you can draw in 2 point perspective also, which will give more effect. Okay, this will be the difference. Now look, for example, you want to draw the train window or the bus or normal window. Okay, in 1 point perspective, this will be the view. Okay, and in 2 point perspective, your view will be this way. Okay, you'll be drawing. Okay, so which one is more effective? Which one is looking more realistic? This one? 2 point. Okay, so usually mostly go with 2 point perspective if it's not given. Okay. Okay, ma'am. Yeah. In figure drawing, most of students, you have problem in drawing figures, right? We have to practice standing figure, walking figure, front standing, side standing, front walking, side walking, and sitting, front sitting and side sitting. Okay, practice the six figure properly and you can change the costume on that then. Okay, I'll be showing 1 sec. Can you please make that rat perspective drawing? Yeah. Okay. Step by step. You want to draw living room or canteen, right? Canteen. Acha, canteen. Okay, and rat view, right? So my eye level line would be here. The vanishing point will be here. Okay.
Okay, so this will be my room. Okay, this will be my ceiling portion. I'll slightly take it up so I will get some space in for flooring. I'll take it here. Okay. Yeah. Now here I want to show tables. Show. This will be my front first leg. This will be my second leg. And third leg. Okay, these are just the markings. Now this point will go here. This point will go here. Now you can add the detailing portion. Okay, this way. Okay, this way you need to add the detail. Okay. This will go here. This point will here. Okay. Now here, if you want to show the window, canting window. Okay, I'm drawing these two lines. Now this will go here. This way. Here. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, table ki height should be more than like eye level because it's a rat, no? Yeah. Yes, ma'am. Yeah, right. My eye level is here. Correct. Okay. So the rat is standing above. Yeah, you can show it in chair or you can show it in some table or some shelf. Okay, you can make some point here. 1 minute, I'll show that. Okay. Yeah. You can show some table here and here, you're right. Okay, you can show some plate here, this way. Okay. Yes, ma'am. Yeah, so you can do the detailing part. Here you can show light. Here you can show some food. Again, your chair. Understood? Yes, ma'am. Yeah. Anything else in perspective? Ma'am, what about camera view or bird view in 3-point perspective? Look, camera view, bird view, this will be here, all your vanishing point will be down. Okay, ma'am. Ant view, insect view, rat view, your vanishing point will be up. Okay. Ma'am, can you give, can you show the in 2-point perspective, ma'am? Camera view or bird Yes, view? ma'am. Using a vertical. 3-point perspective camera view. Look, camera view will be good in a 3-point perspective only because ये एक angle से आता है, right? So use 3-point perspective for that. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, in a 2-point perspective, using vertical, we will draw no, ma'am, for 2-point. I didn't get you. In 2-point perspective? In 2-point perspective, bird view or camera view, using vertical, we will draw no, ma'am, like dividing in vertical. Yeah, you can draw, but जो clear scene आएगा, that will come under 3-point perspective because it's a camera view, right?
Yes, you know, ma'am, For that's, example, if I'm you want to asking draw that a, example. for example, look, you No, have ma'am, to I draw want to know a that parking model. area. I want to know that model, like using vertical division place parts. Okay, but look what happens, your camera view, right? It's showing downwards, right? कैमरा आपका straight point नहीं रहेगा, तो उसमें view clear कैसे आएगा? Ma'am, please draw a bird perspective drawing. Which one? Which drawing? Ma'am, just for an example, like where to start and where to take the vanishing point and all. Can you repeat which part you're saying? Ma'am, I'm talking about bird's perspective drawing. Bird's perspective drawing. Okay, so this was rat, right? Yes, ma'am. Okay, so I'll be showing you what you want to see. Any scene can you suggest? Ma'am, like there are buildings and a road or something. Just for an example. Okay, fine. Yes. Okay, my vanishing point will be here. Okay, I'm drawing one building here, which is above eye line. Okay, again, one I'll be drawing it here, below eye level. Okay, you can show the drawing part here. If you don't want to show, then again, you can take this. This will go here. This portion will here. Okay, you have to show the terrace detailing part. You have to draw the double line here. This wall. Okay, this way. Again, if you want to show trees here, okay. Okay, first I've drawn the stem part this way. Okay, this way. If you want to show street pole, street light, I'm drawing the pole here. Okay, now this point, from this point, it will come this side. Again, this side, this way. Okay, here you can show the footpath part this way. Okay, and this will be the road part. Now, if you want to show the building detailing parts, okay, this way. Okay, you can add on buildings here. You can add it here. You can add it here. Okay, don't make it completely all the buildings below eye level. Just bring one or two building above eye level, so it will be composed. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, Yeah. please share this in a group. Okay, I'll share. Okay. Anyone facing a problem in figures? Front Ma'am, figure? me. Yeah. Ma'am, sometimes I get confused, like how 3-year-old children, how 3-year-old guy, the kid would watch a kitchen or would watch a drawing room, and Okay, how look. teenager watch. Look, basically what you want to do, you have to learn the scaling part.
Okay. Now, what's the difference? I'll show you the complete drawing part only. Okay. Okay, now you have to learn straight front facing figure, side facing figure. Okay, back facing, it's easy. It's similar to front facing. You don't have to draw any expressions. Okay, next figure will be a walking figure, front walking and side walking figure you have to done. And sitting, dog and cat. Okay, I'll show that. Okay, sitting, front sitting and side sitting figure. You have to No, draw ma'am, this. I'm asking what a perspective drawing. Perspective drawing. Acha. Like how a 3-year-old kid, like eye level, like Okay, how that we type of watch question. the room. Okay, look, if this is your paper size, right? Okay, sometimes your wall size, room size will be given like 10 by 10 centimeter, 10 by 10 feet room, or 10 by 20 feet room. Okay, if it's 10 by 10 feet room, okay, this is my 10 feet height approx. Okay, so same height I'll be taking, at same length I'll be taking it here. Okay, if you want 20, it will go double. If you want 15, it will come till here. Okay, now I'll be taking 15 by 10. Okay, so this is my 15 by 10. Now, a 3-year-old kid is watching, right? What will be the 3-year kid's height? Approx? 2.5 or 3 feet. Yeah? 2.5 or 3 feet. Yeah, 2.5 or 3 feet height. Okay, for example, now this is 10 feet height. Clear? So 5 feet height will be here and 2.5 will be here, 3 feet height will be here. So your vanishing point will be here in your 1 point perspective. Similarly, in 2 point perspective, if this is your corner, okay, if this is 10 feet height, okay, this is your 10 feet height, the half will be 5 feet, again half will be 3 feet, and this will be your vanishing points. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay, fine. Okay, so the figure drawing is clear with you all, right? Just the animals you want to learn. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Mom, can you please draw one also? What one? front face of a human figure or composition part? Front face, only the face part. Ma'am, No, one whole side body. sitting figure, please. Ma'am, please 2 figures also. 1 minute, 1 minute. One by one. Ma'am, In one one side sitting figure. side sitting figure. Okay. Okay. Now in standing Ma'am, I figure, we request have. you to do all the figures. Yes, Okay, ma'am. fine. So you also draw with this. Go step by step. You have to draw 8 scales. Usually the figure will be in 7.5 or 8 feet, 8 scales. Okay. So even you all draw with this. Okay. The first portion will be the head part. You have to draw the oval. Okay. Then this will be the neck portion. Now you have to take this distance and your shoulder will be double this. Okay. This will be your shoulder part. Here. This will be your stomach. Here, this is your hips. From here, your thighs part will get started. Knee, ankle, and foot. This will be your normal skeleton. Okay, for arms, this will be your elbow. This will be your wrist and palm. Okay, now while adding the detailing, this will be your neck portion, shoulder, the chest part,
Okay, the arms. Okay. Here will be a stomach. Oops. Your wrist. Okay. Now from here, the thighs will start. This way. Ankle. And this will be your foot. Okay, now if you want to do the face detailing, okay, face will be divided this way. If this is your circle portion, okay, this circle portion I'm talking. Okay, so now you have to take this distance and go it here. So this will be a hollow portion, oval. Okay, this part will be a nose. This part will be a mouth. Okay, you have to draw one more line below this. Okay, this will be your eyes. Okay, here you can add your hairs here, and here it will be from eyebrow to nose part. Understood? This will be your front facing. Yeah. Now, is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, here I can show the walking part also. Okay, if this figure is walking, this will go slightly backward this way. Okay, this it's walking backward. Okay, this way legs will be okay. This I'm showing the walking. Ma'am, your voice is breaking. Ma'am, your voice is breaking. Now it's clear. No, ma'am. Video is also not clear. Ma'am is paused. Now is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yeah. So now this I'm showing your walking figure. Okay. Here what will happen? The one leg will be front, so this will look longer. Okay. Second leg will be back. This way. Okay. Now similarly, side facing figure. Okay, you have to draw D. This way. Okay, this will be your neck portion. First, I'll draw the skeleton. Okay, from here, this will be the chest portion, shoulder, elbow, wrist, palm.
stomach, okay, from your thigh and ankle. Okay, now while drawing this, okay, stomach part, legs. Okay, now if you want to show this figure walking, this will be the second leg, this will come here, and the knee portion, this way. Okay, you can draw your hand slightly here, and second hand here. Okay, now inside part, the face detailing, this portion. If you want to show a kid that time, this will be quite curvy. Okay, this way. Okay, this way. And sorry. Okay, so the difference, this will be quite cut. Okay. Yes, ma'am. Yeah. So now for sitting, this are clear, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now for sitting figure. Again, for sitting figure, you have to draw scale. Okay. Again, it will be same, this part. Okay. This will be the neck portion. Yeah. Chest, stomach, shoulder. Okay, here we'll take slightly back. This way we'll take, and wrist. Okay, now here, this will be the sitting figure. So this will be slightly sloping down. Okay. This will be your scale. Okay, so now मैम अगर इसी फिगर को बहुत छोटा करके बनाना हुआ, लाइक मेमोरी ड्राइंग में तो बहुत छोटा छोटा बनाते हैं, छोटा बनाना है तो फिर उसको छोटा स्केल में कर दो ना। मैम फ्री हैंड कैसे होगा वो? फ्री हैंड अगर करना है तो ये स्केल देखो, पहले स्केल का प्रैक्टिस करो, एक बार फिर ये निकल गया ना, फिर आपको सेम यही पोजीशन आपको फ्री हैंड भी होगा। ओके मैम। ओके, लेकिन पहले स्केल से ट्राई करो, क्योंकि आपका ये समझना चाहिए कि ये लाइन कितना बड़ा होना चाहिए, ये लाइन कितना बड़ा होना चाहिए। अब डायरेक्टली फ्री हैंड करने जाओगे तो नहीं आएगा। एक बार ये 2-3 बार प्रैक्टिस हो गया, देन यू कैन गो फॉर फ्री हैंड। ओके मैम। ओके, एंड ये छोटा करना है तो स्केल छोटा कर दो यहाँ पे। या एंड आई वुड सजेस्ट कि स्केल के साथ जाओ, ज्यादा फ्री हैंड में मत जाओ, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं आपके।
ओके, यहाँ पे मैं पीछे ले रही हूँ। ओके, अगर आपको दूसरा स्ट्रेट दिखाना है तो आप यहाँ पे इतना ही लंबा आएगा वो भी। आप ऐसे दिखा सकते हो। दूसरा हाथ यहाँ पे कहीं दिखाना है, कुछ कर रहा है तो वैसा दिखा सकते हो आप। ओके, पीछे लीन कर रहा है तो वो भी आप दिखा सकते हो दिस वे। ओके, अगर यही फिगर, अभी ये फिगर 90 में निकाला है, सेम फिगर आप थोड़ा ऐसे कर सकते हो, प्रोपोर्शन सेम आएगा, बस ये थोड़ा ऐसा बेंड होगा। ओके, दिस विल बी साइड फेसिंग। अभी फ्रंट का जो है, ओके, फ्रंट में जो फेस आपने किया था सेम फेस का करना है। ओके, यहां तक आपका सेम आएगा। नाउ यहां से दिस विल गो दिस वे, ये ऐसा आता है। ओके, अभी हम इसका डिटेलिंग करने जाएंगे। दिस वे, ओके, इतना ऊपर पार्ट कर लिया। ये हाथ कैसे करना है आप रख सकते हो। चेयर है तो चेयर के ऊपर लीन कर सकते हो। अभी मैंने ऐसे ही दिखाया है, अपने लैप के ऊपर, थाइस के ऊपर। ओके, अब ये नी पोर्शन है। दिस वे, ओके, ये आगे रखना है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt. अच्छा, whole page once. Now, Navya, it's okay? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. I have a question. Yeah. When we draw human figures in perspective, जब पूरा सीन हो जाता है, we have to draw some human figures. तो अगर हमें दूर करना होता है और जितना देखो, दूर अगर आपको पर्सपेक्टिव का सीन आया एग्जाम में, ओके, तो फिर मतलब आपको कोई सिचुएशन दिया गया कि आपको ये व्यू कैसे दिख रहा है, आपको ड्रॉ करना है, तो उसमें आप देख रहे हो, राइट? आप अगर विंडो से देख रहे हो या फिर आप बालकनी से देख रहे हो, तो आपको उसमें ज्यादा फिगर्स ऐड नहीं करना है। आपको सीन, अगर वो पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना है। आप फिगर का, हाँ, जैसे आप खड़े हो तो आपका इतना हाथ पोर्शन दिखा सकते हो आप, या फिर आप वॉक कर रहे हो तो आपका लेग, नीचे का लेग पोर्शन दिखा सकते हो, वैसे कर सकते हो। और अगर कंप्लीट मेमोरी ड्राइंग का क्वेश्चन आया कि आपको कुछ टॉपिक दिया गया, तो उसमें आपको मेमोरी ड्राइंग करना है। ओके, दो डिफरेंट क्वेश्चन है ये। यस मैम। मैम, तो अगर हम जितना दूर करते हैं ह्यूमन फिगर उतना छोटा हो जाता है, एंड इट गेट्स वेरी मेसी, तो उसको कैसे मतलब सही करें? देखो, जितना जो है ना, कभी भी फिगर ड्राइंग का क्वेश्चन आया, ओके, इफ दिस इज योर पेज, ओके, 2 to 3 फिगर ऐसे करो जो मेन दिखे आए। ओके, ऐसे कुछ कंपोज करो। यहाँ पे दो बड़े हुआ, एक बड़ा, एक किड हुआ यहाँ पे, और एक कोई लेडी आपने साइड फेसिंग किया। सब फ्रंट फेसिंग मत करना,
ओके अगर दो फ्रंट फेसिंग कर रहे हो तो एक साइड फेसिंग करो, कंपोज होना चाहिए। ओके एंड देन जो पीछे के फिगर्स आप जो बोल रहे हो उसको आप नॉर्मली सिर्फ ऐसे वॉक कर लिया। ओके सिर्फ पेन वर्क में आपने ऐसे दिखा दिया इसमें, दिस मच इज इनफ। ओके मैम। ओके क्योंकि वो बैक फेसिंग है, मतलब वो बैकग्राउंड है, उसमें आपको ध्यान नहीं दिया, लेकिन सारे फिगर अगर आपके ऐसे हुए तो इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 3 फिगर्स आपके मेन होना चाहिए जो डिटेल में दिखना चाहिए। अगर ये आउटडोर हुआ तो, इंडोर था तो फिर बैकग्राउंड का ध्यान ही नहीं देना है, लेकिन अगर ये आउटडोर अगर आया तो फिर 2-3 ऐसे यहाँ पे आप डाल सकते फिगर्स। ओके उसमें आपका डिटेलिंग का जरूरत नहीं है, सिर्फ डिटेलिंग यहाँ पे चाहिए आपका। ओके मैम। ओके मैम, या can I show something? I have to ask something from that. या श्योर। या मैम, I have drawn this, but मेरे से यहाँ कैसे मैं बनाऊं एक्स्ट्रा कार्ड्स, वो बन नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं बन रहा? आपने आपका 1 पॉइंट आपने लिया है राइट? या ओके आपने यहाँ पे लिया है, आपको सारे व्हीकल्स यहाँ पे बनाया वो करेक्ट बनाया, आपने स्क्वायर लेके ये किया है ये करेक्ट है। ओके यहाँ पे आपको नहीं आ रहा फिर कार्स, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन आपको यहाँ बनाऊं कैसे, लाइक यहाँ बनाऊंगी तो ये तो दिख नहीं पाएगा। हाँ तो वो हाइड हो गई ना। अभी आप ट्रैफिक सीन पे अगर आप फोटो क्लिक करोगे, यहाँ पे एक कार आया, उसका पीछे का नेचुरली नहीं दिखेगा या फिर सिर्फ टॉप पोर्शन दिखेगा। हाँ तो वैसे ही आएगा। बना नहीं पा रही। अभी देखो आपका ऑटो के पीछे जो भी आपने बस या ड्रॉ किया है वो भी तो हाफ दिख रहा है, तो वो कंपोजिशन है, वैसे चलेगा। वही, बट यहाँ बन नहीं पा रहा मेरे से। ओके तो फिर देखो आपको वापस ये बनाना है। ओके जैसे ये मैंने आगे किया वैसे बैक साइड भी जाएगा। ये जैसे आगे लिया जैसे वो यहाँ पे जाएगा, ये लाइन यहाँ पे आएगा। ओके दिस विल गो हियर and this part. Okay now for wheels I'm drawing this lines to reference line. ओके फिर इसमें आप जो भी डिटेलिंग करना है इसमें करना। बट मैम मुझे तो यहाँ पे अगर मैं पास में खड़ी हूँ तो मुझे वो बड़ा दिखेगा, देन पीछे का पूरा एरिया ही कवर हो जाएगा। तो फिर वहां पे कास मत ड्रॉ करो, वहां पे आप पोल ड्रॉ करो, कुछ साइन बोर्ड आप ड्रॉ करो, कंपोज करना है तो आपको। बिकॉज मैंने ये सर ने दिया था ट्रैफिक ऑटो ड्रॉ करने, तो जो भी सर या मैम ने बोला कि यहाँ पे बहुत स्पेस और वहां पे बचा स्पेस हुआ है। आएगा। या फिर डू वन थिंग ना, पॉइंट यहाँ पे आपका राइट, आपका पॉइंट यहाँ पे है, सिर्फ गाड़ी का टॉप पोर्शन दिखाओ जो सबसे आगे आएगा, सिर्फ हाफ दिखाओ। ओके ओके सिर्फ ये ऊपर का पोर्शन दिखाओ। ओके मैम। ओके सिर्फ ये पोर्शन दिखाओ आप, जो ये है इतना ही दिखाना, तो अपने आप कंपोज हो रहा है ये। ओके Ma'am, can you do some pictograms? Yeah, we'll go one by one. Yeah, ma'am, before starting, please tell something about pictogram. Means I got confused in pictograms and icons. It's not clear, ma'am. Okay. Look, in your logo designing, there are 2 types. Yeah. Ma'am, students asking question on YouTube also. Can you show lizard view? First question. Then another question, can you show stick figure composition? Third question, some poster topics. Acha, okay. Yeah. Yeah. Okay. Look, we'll go step by step. Pictogram also I'll tell you. Okay.
After the scenario drawing, next topic will come process making. Okay, process making में आपको usually 4 to 5 steps में दिखाने आता है. Okay, process making को interesting बनाने के लिए you have to show this process from different angles, like making coffee आ सकता है, cloth drying आ सकता है, या फिर you're making a मैगी आ सकता है. कोई भी चीज ऐसे प्रोसेस, जो प्रोसेस है 5 to 6 स्टेप का, वो आ सकता है. या फिर सम स्टोरी विल बी गिवन एंड वो पढ़ के आपको कोई स्टोरी क्लियर बनाना है. ओके, जब आप ये कैसे बनाओगे, आप नॉर्मल बनाते हो. ओके, आप नॉर्मल स्क्वायर यूज करते हो, तो ये स्क्वायर ना यूज करके वो उससे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाओ. ओके, ऐसे दिखा सकते हो कि आपने फोटोज क्लिक किया है, ऐसे दिखा सकते हो कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, या फिर ऐसे दिखा सकते हो कि आपने मोबाइल पकड़ा, आप कुछ वीडियो बना रहे हो, ये आप दिखा सकते हो. ओके, एंड डिफरेंट एंगल्स दिखाना. भी यहाँ पे आपने फ्रंट व्यू दिखाया है, तो फिर टॉप व्यू दिखाना. अगर फॉर एग्जांपल मेकिंग अ कॉफी दिखा रहे हो, तो आप सिर्फ ग्लास में पोर कर रहे हो, तो ग्लास जूम करके दिखाना. ओके, यहाँ पे आप पोर कर रहे हो, ये सिर्फ जूम करके दिखाना. ऐसे कर सकते हो आप. No, you aren't allowed to break the box. बॉक्स साइज जो दिया है, जो भी करना है आपको, वीडियो रील्स जो भी बनाना है, उसके अंदर ड्रॉ करना है आपको. ओके, आई विल शो यू. Have some references. One sec. ये देखो, ऐसे कुछ आप बना सकते हो. ये आपका स्क्वायर जो दिया है, ओके, एग्जाम में जो स्क्वायर दिया रहेगा, इसको आपको नीचे यूट्यूब जैसा आप बना सकते हो कि आप वीडियो प्ले कर रहे हो. यहाँ पे दिखा सकते हो, यहाँ पे टाइम दिखा सकते हो, यहाँ पे 4 स्टेप्स में आप डिवाइड कर सकते हो. आप टीवी पे कुछ देख रहे हो, आपके लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप ऐसे कुछ बना सकते हो. इसको लैपटॉप का स्क्रीन बना के या टीवी स्क्रीन बना के आप यहाँ पे दिखा सकते हो. आपने फोटोज क्लिक किए हैं, तो ऐसे फोटोज क्लिक कर सकते हो. लेकिन ये जो मैंने प्लेस किया है, ये रहेगा आपके स्क्वायर के अंदर, जो रेक्टेंगल है उसके अंदर रहेगा ये. ओके, उसके लिए तो आप प्लेन ब्लैंक कलर कर सकते हो. एंड देन वन सेकंड, इसको आप प्लेन कलर कर सकते हो, एंड देन इस पे ये फोटोज ऐसे दिखा सकते हो. यस मैम, जैसे कि आपने नीचे टाइमलाइन बनाया है, तो ये हमें हर फ्रेम में बनाना होगा और जस्ट फर्स्ट वन? हर फ्रेम में. अभी देखो, फर्स्ट फ्रेम ऐसा रहेगा, क्योंकि यूजुअली मतलब स्टूडेंट्स 80 to 90% ऑफ स्टूडेंट्स क्या नॉर्मल स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल दिया है, उसमें बनाते. तो आप क्या अलग करोगे, आपको ये दिखाना है, आपको क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाना है. तो आप ऐसे कर सकते हो. फर्स्ट बॉक्स में ये जो लाइन मैंने यहाँ पे दिया, ये फर्स्ट स्टार्टिंग में है. सेकेंड बॉक्स में आपको 4 बॉक्स में कंप्लीट करना है. अगर सेकेंड बॉक्स में आप इधर दिखा सकते हो, यहाँ का टाइम चेंज कर सकते हो. थर्ड बॉक्स में आप यहाँ पे दिखा सकते हो, अगेन यू कैन चेंज योर टाइम. एंड फोर्थ बॉक्स हो गया वीडियो, ऐसे दिखा सकते हो. अभी जैसे यहाँ पे दिखाया, देखो, ये अभी यहाँ पे ये साइन आप हटा सकते हो, या फिर ये साइन आप एकदम ब्लर में सिर्फ आउटलाइन की तरह कर सकते हो, एंड बैकग्राउंड में सीन दिखा सकते हो. यहाँ पे भी प्ले दिख रहा है, तो आप पॉज का दिखा सकते हो यहाँ पे. ओके, यहाँ पे अगेन आप ये जो रेक्टेंगल है, बैकग्राउंड में रेक्टेंगल को एक प्लेन डार्क कलर कर सकते हो, जैसे ब्लू ले लो. ओके, रॉयल ब्लू ले लो, ऐसे कुछ कलर कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर. एंड देन उस पे ये जो फोटोज का ही डाल के यहाँ पे आप वो सीन ड्रॉ कर सकते हो. अगेन मूवी चल रहा है, आप इसे रील जैसे बना सकते हो. यहाँ पे आप एक एक पिक्चर्स दिखा सकते हो. ये कब जाएगा, लेकिन कंपोजिशन अगर आपको ऐसे स्टैंडिंग में लेना है, पोर्ट्रेट में लेना है, अगर आपको लैंडस्केप में लेना है, तो आपको ये 2 करना पड़ेगा. अगर पोर्ट्रेट में लेना है, तो ये भी आप पोर्ट्रेट में कर सकते हो, ये भी पोर्ट्रेट में आ सकता है. मैम, इसमें कोई राइटअप लिखना होता है क्या? प्रोसेस मेकिंग में नहीं होता राइटअप. ओके, एंड इसमें और एक चीज है, अगर इसके अंदर का कोई आप दिखा रहे हो, तो नॉट नेसेसरी, अगर आपके पास टाइम कम है, ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो, कंप्लीट आप आउटलाइन कर सकते हो, राइट. एंड सिर्फ कोई पोर्शन को आपको हाईलाइट, फॉर एग्जांपल अभी कॉफी मेकिंग का है, ओके, तो कॉफी आप पोर कर रहे हो या फिर कॉफी बनाए, तो उतना ही पार्ट को कलर कर लो, बाकी सब प्लेन रख लो. ओके, ऐसे कर सकते हो. या फिर उतना ही पार्ट को अपने, बाकी पार्ट को अपने पेंसिल शेडिंग किया, उतना ही हाईलाइट करने के लिए आपने कलर किया. ये चीज भी कर सकते हो आप. Ma'am, can we use these in all the topics they give? Can you use all the?
can we use these kind of tricks in all the topics they give, or is it like for Yeah, a you can use in certain? all the topics, all the topics. Okay, so like for coffee making also we can use, and for stories also? For stories also you can use. Okay. Okay. Okay, these are some references. You can find some more कि आप जो कर सकते हो. Okay, ये एक फिक्स करके रखना एग्जाम के पहले. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो इसमें से आप कौन सा आप यूज करने वाले, फिक्स दैट एंड कीप प्रिपेयर. Mama, done one process drawing. Can I send it to you and you can suggest some changes or Sure. modifications? You can share. I'm sharing, just a second. Okay. Where are you sharing? On screen or on my WhatsApp? I'm on your number. Okay, fine. Done. Okay. And process making में you have to look कि different angle से होना चाहिए. सब front angle से मत देना. Give some from top angle, give some from side, give some from front angle. Okay. And कनेक्शन लूज मत करना. फर्स्ट बॉक्स से सेकंड बॉक्स में कनेक्शन फाइन होना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे कॉफी आपने बनाया, गैस पे रखा और डायरेक्टली पोर कर रहे हो. बीच का स्टेप ऐसे इतना भी मिसिंग नहीं होना चाहिए. ओके, स्टेप वाइज कनेक्शन दिखाओ. So you have shared? Yes, ma'am. Okay, so you have drawn one box and उसमें अपने सारे दिखाए, right? Yes, ma'am. Okay. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बॉक्सेस डिफरेंट दिए जाएंगे. आपको 4 बॉक्स, तो यू हैव टू ड्रॉ 4 बॉक्सेस. अगर 6 बॉक्स बोला है तो आपको यू हैव टू ड्रॉ 6 बॉक्सेस. ओके. एंड ये क्या हुआ अभी, ये क्वाइट कॉमन हुआ है, सिंपल हुआ है. मतलब अगर बल्ब चेंज करना है तो सब लोग बल्ब दिखाएंगे, हाथ दिखाएंगे, लेकिन आप उसको और क्रिएटिव कैसे बना सकते हो. तो क्या करना है, देखो अगर आपने अभी फर्स्ट इसमें दिखाया, आप बल्ब रोटेट कर रहे हो. ओके, तो बस उसमें आप सिर्फ इतना दिखा सकते थे, एकदम क्लोजअप दिखा सकते थे. बल्ब आप सिर्फ रोटेट करते वक्त दिखा सकते थे. तो यहाँ पे कंप्लीट बैकग्राउंड दिखाने का जरूरत नहीं था. ओके, दिस वे. एंड सब में सेम नहीं होना चाहिए. एक में फिर थोड़ा दूर से निकालो. फिर कैसे, आपने बल्ब निकाला तो थोड़ा दूर से दिखा, फिर निकाल दिया आपने, फिर से अभी लगा, फिर आप स्विच ऑन कर रहे हो, तो तभी आप पूरा रूम का दिखा सकते हो. कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रहा है, या फिर वहाँ पे चेयर है, या फिर बुक्स है, तो बुक्स पे पर्टिकुलर लाइट गिर रहा है, ऐसे दिखा सकते हो. Okay. या थैंक यू. या वेलकम. मैम प्लीज पिक्टोग्राम्स के बारे में बता दीजिए. पिक्टोग्राम, अब देखो पिक्टोग्राम में आपको मेन ये लोगो डिजाइनिंग के अंदर आता है. आपको 2 टाइप्स आता है. वन विल बी आपका टाइपोग्राफी एंड वन विल बी पिक्टोग्राम. ओके, पिक्टोग्राम में क्या होता है, आपको सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू आपको डिपिक्ट करना होता है. वहां पे आपको फॉन्ट का यूज बिल्कुल नहीं करना है. ओके मैम. एंड टाइपोग्राफी में आपको फॉन्ट को डेकोरेट करना है. ऐसे नहीं कि आपने नॉर्मल फॉन्ट लिख लिया एंड बैकग्राउंड में आपने डेकोरेट किया, यही नहीं चलेगा. टाइपोग्राफी में आपको कंप्लीट फॉन्ट को क्रिएटिव वे में दिखाना है. ओके. क्या मैम, हमने टाइपोग्राफी की क्लास की थी आपके साथ, बट मेरी पिक्टोग्राम की क्लास नहीं हुआ. ओके, पिक्टोग्राम में कितना सिंप्लीफाइड वे से आप दिखा सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फ्लावर दिखाना है तो आप सिंप्लीफाइड वे से कैसे दिखा सकते हो वो देखना है. ज्यादा क्रिएटिव नहीं करने जाना है पिक्टोग्राम में. ओके, नॉर्मल पिक्टोग्राम कहाँ पे यूज होता है, जब नॉर्मल पब्लिक इजीली उसे रीडेबल हो सकता है. ओके, जैसे साइन बोर्ड में यूज होता है पिक्टोग्राम का, तो वो इजीली समझ में आना चाहिए कि आपने क्या ड्रॉ किया है. उसमें ज्यादातर आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज करते हो पिक्टोग्राम में. ओके, बोल्ड कलर्स का दिखते हो क्या, ताकि वो तुरंत समझ में आ जाए. हेलो मैम. या ओके मैम. मैम पिक्टोग्राम में लेटर्स का यूज नहीं होता है. लेटर्स का यूज नहीं करना. पिक्टोग्राम में आपको आइकन्स यूज करना है. अगर आपको लोगो डिजाइनिंग दिया है तब वहां पे आप बोथ यूज कर सकते हो. ओके मैम. ओके. या Ma'am, can you make one pictogram for an auto stand? Just a rough sketch, basic idea. An auto stand. Auto stand. Okay, so for auto stand, okay,
सो यू कांट ड्रॉ एन ऑटो। सिर्फ अगर ऑटो ड्रॉ किया तो एकदम ही कॉमन दिखेगा। तो आप मीटर का ड्रॉ कर सकते हो। ओके, जो मीटर है आप वो ड्रॉ कर सकते हो। और सिर्फ ऑटो स्टैंड का ये दिखा सकते हो। ओके, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जो ऑटो का सामने का पार्ट रहता है, राइट, वो लेके आप कर सकते हो। सॉरी, वन, या सिर्फ इतना पार्ट में आप दिखा सकते हो ऑटो है, ऑटो स्टैंड है, दिस मच। ओके, कंप्लीट ऑटो ना दिखाते हुए। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, प्रोडक्ट डिजाइन में आई मीन डिफरेंट कैसे करें, बिकॉज या मेरा वन एक बाय भी वन में आती हूँ प्रोडक्ट आपका डिजाइन। टॉपिक। अभी तक मैंने सिर्फ आपका 2-3 टॉपिक बोला है। नेक्स्ट हम लोग उसमें ही आते हैं। पहले, इसके पहले ना आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको कोई सिचुएशन दिया जाता है, आपको वो सॉल्व करना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक क्वेश्चन आया तब आया भी था कि आपका पाइप लीक हो रहा है मिडनाइट पे, आप क्या करोगे, क्या सॉल्यूशन फाइंड करोगे। ओके, या फिर आपका डोर अभी क्लोज नहीं हो रहा टेम्पररी, या टेम्पररी आप जब तक आप लॉक किसी को बुलाओगे तो फिर आप तब तक क्या टेम्पररी उसे कैसे किस तरह से लॉक करोगे। या फिर आपका कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, आपको मूव करना है, आप अकेले हो, तो क्या आप टेक्निक यूज करोगे उसे मूव करने के लिए। ऐसे सिचुएशन दिया जाता है, ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाता है, वहां पे आपको सॉल्यूशन बताना रहता है। तो फॉर एग्जांपल अभी पाइप लीकेज है, या फिर हाँ, तो मेनली क्या होगा, सबके दिमाग में क्या आइडिया आएगा कि आप कुछ कपड़ा बांधोगे, कुछ ब्लॉक यस मैम, करोगे, या और फिर एमसील वगैरह यूज कर लेंगे। एमसिल, या आप वैसे, तो मेनली सबके दिमाग में ये आइडिया आता है, लेकिन आप उससे अलग क्या कर सकते हो। ओके, जो फर्स्ट तुरंत आपको स्ट्राइक करता है कभी उस पर मत जाओ, रुको जरा, सोचो उसके बाद ही, क्योंकि वो सब लोग वही सोचते रहते, तो आप सोचो कि और क्या कर सकते हो आप। अगर बहुत जोर से अगर पानी आ रहा है तो आप उसे थोड़ा सा पैक कर सकते हो, नीचे कोई प्लांट रख सकते हो ताकि उसको पानी जाए, या फिर आप ऐसे कुछ वे बना सकते हो कि आपका पानी स्टोरेज में जाए, बकेट में, या फिर कहीं पे स्टोर हो जाए। थोड़ा वैसे सोचो, अलग सोचो फिर। मैम, इफ द क्वेश्चन सेज कि पानी रोकना है, तो हाँ, ये स्टोरेज वाले ऑप्शंस हम कंसिडर कर सकते हैं क्या? क्योंकि पानी उसमें रुक नहीं रहा, वो तो हम उसको पानी रुक नहीं रहा है, आपको वेस्ट, मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि आपने कंप्लीट पैक कर लिया है, ओके, किसी चीज से, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा, देखो कंप्लीट स्टॉप कभी भी नहीं होगा, राइट, थोड़ा तो ये होगा जब तक वो रिपेयर नहीं हो जाएगा, तो आप उसका भी यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको राइट अप देना रहता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। सो लाइक अगर हमने कपड़ा लगा दिया तो उसके साथ हम नीचे एक बकेट या एज यू सेड प्लांट रख दे। यस, करेक्ट। ओके, या एंड इवन अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन आया, बैकग्राउंड में अगर आपका ड्राइंग कंप्लीट कंपोज हो गया है, बैकग्राउंड में लेआउट के लिए अब आप ध्यान दे सकते हो। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी है, ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए भी है, दोनों में। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोडक्ट है, या फिर ये आपका, आपने बोला कि आपने कपड़ा बांधा है, यहाँ पे आपने और एक कुछ आइडिया दिखाया है। ओके, तो इसके पीछे बैकग्राउंड जस्ट लेआउट कर लो। यहाँ पे आप ऐसे पेंसिल से लाइंस कर सकते हो, कोई टेक्सचर दे सकते हो, या फिर यहाँ पे आप कोई कलर कर सकते हो ये पार्ट को ऑपोजिट कलर से, ताकि ये और स्टैंड आउट हो जाए, तो आपका ड्राइंग से प्लेन ना दिखे, बैकग्राउंड भी आपका लेआउट भी प्रॉपर। ओके, क्लियर? इसमें कुछ डाउट है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रहेगा आपका, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का होगा, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका प्रोडक्ट डिजाइनिंग। ओके, प्रोडक्ट डिजाइनिंग का कोई भी क्वेश्चन आया तो एग्जैक्ट आप क्या, आपको ज्यादातर ट्राई करो पर्सपेक्टिव में शो करने का। अगर आप हैंडबैग ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप कोई बॉटल ड्रॉ कर रहे हो, या कोई भी चीज, वॉच ड्रॉ कर रहे हो, पर्सपेक्टिव में दिखाने का ट्राई करो। ओके, एंड अब अगर आपने इसका सामने का फ्रंट पोर्शन दिखाया है, फ्रंट बैक का फ्रंट पोर्शन दिखाया है, तो सेकंड उसके बाजू में, ओके, यहाँ पे अगर ये आपका स्क्वायर है, ओके, यहाँ पे आपने कंप्लीट बैग दिखाया आपका, ओके, जो भी डिजाइन का आपका कंप्लीट बैग दिखाया, यहाँ पे आप उसका ओपनिंग दिखा सकते हो, इसका ओपनिंग कैसा रहेगा, अंदर कैसा रहेगा आप दिखा सकते हो, साइड पोर्शन कैसे रहेगा आप दिखा सकते हो, यहाँ पे उसका बेल्ट कैसे रहेगा वो आप दिखा सकते हो।
ओके एंड वन मोर थिंग, अगर आपने यहाँ पे बैग उठाया है तो बैग का कुछ तो इंस्पिरेशन होगा। ओके हमेशा ये ट्राई करना कि आप कोई भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग करो, यू हैव एन इंस्पिरेशन फॉर दैट। ओके फॉर इंस्पिरेशन आपका शेप के थ्रू भी हो सकता है, आपके कलर के थ्रू भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कोई एनिमल प्रिंट लिया है या फिर कोई एनिमल का शेप का बैग लिया है, तो वो एनिमल का प्रिंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, एक प्रॉपर शेप ले सकते हो या फिर रैंडम ऐसे शेप दे सकते हो, वहां पे एनिमल प्रिंट दिखा सकते हो, ताकि वो राइटअप के थ्रू ना डायरेक्टली आपके डिजाइन के थ्रू समझे कि आपका इंस्पिरेशन ये है और आपने ये क्रिएट किया उससे। ओके ऑलवेज शो योर इंस्पिरेशन एंड देन इसमें राइटअप में दिखना है। क्लियर? प्रोडक्ट डिजाइनिंग में किसी को कोई डाउट था? नो मैम। नो? ओके फाइन। नेक्स्ट आपका रहेगा फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन आएगा। ओके उसमें क्या आएगा कि आपको डिजाइन योर बैग, डिजाइन अ लंच बॉक्स, डिजाइन अ आई होल, डिजाइन अ बेड, ऐसे कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग 2050, 2030, 2060। मैम प्रोडक्ट डिजाइन में कुछ भी फ्यूचरिस्टिक ऐड नहीं करना है? करना है, कर सकते हो। मैम लाइक वो डिजाइन करने के लिए बोल वन रहा मोर है, थिंग, मतलब जो फ्यूचर प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जो ऑलरेडी है आपको उससे नहीं करना है, यू हैव टू थिंक समथिंग एल्स। यस मैम, क्योंकि वो डिजाइन करने के लिए बोल रहा है। या यू हैव टू थिंक समथिंग एल्स, जो ऑलरेडी है वो आपको नहीं देना है, वो अलग क्वेश्चन हुआ। प्रोडक्ट डिजाइन का एक अलग क्वेश्चन होगा एंड फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का वो अलग रहेगा। मतलब ये आपको टाइम से दिया जाएगा, मतलब आपको एक बैग, ट्रॉली बैग यूज करना, डिजाइन करना है अकॉर्डिंग 2050 या 2030, तो उस हिसाब से आप अभी कैसे डिजाइन करोगे, क्या आप ला सकते हो नया, तब सब डिजिटल होगा ज्यादातर, वो सब आप दिखा सकते हो। अगर आप आई होल, तभी आई होल नहीं रहेगा, तब सब कैमरास रहेंगे हर जगह पे। फिंगरप्रिंट्स तो अभी भी है, तो और क्या उधर हो यूज हो सकता है, आप कैसे दिखा सकते हो, कुछ सेंसर होगा तो आप वो दिखा सकते हो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन में। ओके ओके मैम, ओके मैम। या नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कोई वर्ड दिया जाएगा। ओके वर्ड के अकॉर्डिंग आपको वो डिपिक्ट करना है, या फिर टू ऑपोजिट मीनिंग्स दिए जाएंगे, वो आपको एक बॉक्स के अंदर डिपिक्ट करना है। जैसे यूजुअली 10x10 का बॉक्स होता है। ओके कोई वर्ड दिया, फॉर एग्जांपल रूड, तो आपको इमोशन रूड अगर आपको दिया है तो रूड आप स्क्वायर के अंदर कैसे डिपिक्ट करोगे, लाइंस यूज करते हुए। मेडिटेशन आया तो मेडिटेशन कैसे डिपिक्ट करोगे आप? Round and round and round and round, like circle, then big circle, then big मैम circle. फोकस टाइप डॉटेड का लाइंस कुछ के दिखा साथ यू कैन सकते हैं? क्रिएट। या रौनक? फोकस कुछ दिखा सकते हैं ऐसा, लाइक यस फोकस फोकस दिखा टाइप सकते का। हो। रूड को आप आर्श लाइंस दिखा सकते हो, ब्राइट कलर्स दिखा सकते हो। ओके ये चीज आता An है। example of this, I couldn't understand. एग्जाम्पल ऑफ Ma'am, this depicting. क्वेश्चन? ओके फॉर एग्जाम्पल great. Ma'am, can we show a lightning bolt or something for rude? Lightning. Word lightning. Lightning bolt, like fire or something like that. Okay. Yeah. किसको ये समझा नहीं था दिस पार्ट? खुशी. खुशी. Okay. खुशी, for example, if I have taken rude. Okay. तो rude आप किस तरह से दिखाओगे? You have to create a pattern. आप ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पे आप कूल सर्टल कलर दिखा सकते हो। ओके यहाँ पे ब्राइट हार्श कलर दिखा सकते हो, यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो रहा है सब, ये चीज आप दिखा सकते हो। ओके आपको एक स्क्वायर के अंदर वो वर्ड को डिपिक्ट करना है। अगर आपको मेडिटेशन दिखाना है तो आप एक चीज पे कुछ फोकस कर सकते हो, यहाँ पे ब्राइट लाइट दिखा सकते हो कंप्लीटली, यहाँ पे डॉटेड लाइंस दिखा सकते हो। ओके यहाँ पे वाटर के लिए आप स्ट्रेट लाइन दिखा सकते हो। ओके ऐसे कंपोज कर सकते हो आप मेडिटेशन के लिए। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. Yeah. Yes, ma'am.
one more thing. Okay, ये आता है आपको सिंगल वर्ड दिया जाता है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. दूसरा ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको टू अपोजिट मीनिंग दिया जाता है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके, नाउ अपोजिट मीनिंग फॉर एग्जांपल डे एंड नाइट दिया है, क्रिस्पी एंड सॉगी दिया है, हार्ड एंड लाइट दिया है, ओके, हेवी एंड लाइट, हाँ ऐसे कुछ दिया है. तो ये कैसे आपको कंपोज, आपको एग्जैक्ट हाफ नहीं करने का कंपल्सरी, ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट हाफ करना है, यू हैव टू शो. यू कैन कंपोज इट दिस वे, here you can show, you can use one object. Okay, for example आपने फ्रेंच फ्राइज दिखा है, okay, you can show the french fry here. यहाँ पे एकदम आपने अच्छा प्रॉपर क्रिस्पी वाले आपने ये दिखाया है कुछ, एंड यहाँ पे पूरे ऐसे फ्रेंच फ्राइज पूरे बेंड हो गए. ओके, एक ही ड्राइंग का आपने दो पार्ट कर दिया. ओके, ऐसे कुछ सोचो, यहाँ पे अलग ऑब्जेक्ट किया, यहाँ पे अलग ऑब्जेक्ट किया, वो इतना नहीं जाएगा. मैम अगर वहां पे दो अलग अलग बॉक्सेस दिए हो तो कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको अलग अलग बॉक्सेस नहीं दिया जाता. आपको ऐसा दिया जाएगा चाहिए तो ऐसे सर्कल्स, पर वो भी आपको क्योंकि आपका ऑनलाइन होने वाला है, तो ये सब भी चीजें आपको आने का मतलब नहीं आएगा, आपको सिंपल बॉक्सेस ही ड्रॉ करने बोलेंगे. ओके मैम. मैम तो ग्रिड वाले क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, लाइक नहीं आएंगे तो भी आपको है ना स्ट्रेट ऐसे स्क्वायर के आएंगे, बट इवन दैट नहीं आ सकते, मतलब नहीं आएंगे, क्योंकि आपको ग्रिड ड्रॉ करने में उतना टाइम जाएगा, एंड सबका ग्रिड के साइज अलग रहेंगे, तो फिर इसलिए वो भी अवॉइड होगा क्वेश्चन. Sueda, what was your question? Can you just message? Yeah. So यहाँ तक clear है? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, as Yes. given in the guidelines that we need to use pencil color, poster color, and preferably we can use a pencil color, so we can't use soft pastels also. You can use pencil color, you can use watercolor, but I would suggest you don't go with watercolor, क्योंकि आप चाहिए तो base for base you can use watercolor, but for finishing क्योंकि आपका उसमें practice नहीं हुआ है, तो directly go and jump for that, and pastels are also not used. Okay. Yes, ma'am. I'm asking for the soft With that pastels. because for finishing नहीं आएगा. Yeah. Ma'am, I'm asking for the soft pastels. That you can. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Even brush pen is not allowed, huh? Here. Yes, ma'am. And कुछ poster making. Yes, ma'am. Would you teach us how to make a mind map? क्या? How to do a mind map before drawing? Ma'am, there was a question that express love, hate through sketches. Yeah. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से शेप क्या डिपिक्ट करते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ. How do we represent those by shapes, right? Yeah. I'll share my screen. Okay. फॉर एग्जाम्पल इवन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपका कैरेक्टर से आपका पर्सनालिटी कैसा है उस हिसाब से शेप्स यूज करके डिपिक्ट करो, या फिर कोई वर्ड्स दिया जाता है अकॉर्डिंग टू दैट आप डिपिक्ट कर सकते हो. आपका नेचर कैसा है उसके थ्रू आप दिखा सकते हो. यहाँ पे यू डोंट हैव टू यूज ओनली वन शेप, यू कैन मिक्स, यू कैन ऐड सर्कल, यू कैन ऐड स्क्वायर, यू कैन ऐड कर्वी लाइंस, डिपिक्टिंग कि आपको कौन सा इसमें यूज करना है. ओके, स्क्वायर मोस्टली बॉक्स के अंदर फिट रहता है. ओके, तो आपको ज्यादा इसमें एक्सप्लोर का आप नहीं दिखा सकते स्क्वायर के अंदर. तो स्क्वायर के अंदर डिटेल वर्क, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ऑर्गेनाइज्ड, ये सब आप दिखा सकते हो. परफेक्शन अगर आपको दिखाना है तो ये सब आप स्क्वायर के अंदर दिखा सकते हो. ओके, ट्रायंगल में आप हमेशा ग्रोथ दिखा सकते हो, मूविंग दिखा सकते हो. ओके, ट्रायंगल आप कोई भी पैटर्न में ले सकते हो, नीचे पॉइंटेड, साइड बेस दे सकते हो. ओके, एम्बिशियस, जो भी ग्रोथ से रिलेटेड आएगा वो आप ट्रायंगल में डाल सकते हो. ओके, एंड जो आपको एक बॉक्स के अंदर फिट दिखाना है कि आप ऐसे ही हो, यही चीज चाहिए आपको, वो जो भी वर्ड्स आएंगे वो स्क्वायर के अंदर आएंगे.
सर्कल कंटिन्यूटी दिखाता है हमेशा। ओके तो सर्कल में आप क्या दिखा सकते हो, ट्रस्ट दिखा सकते हो, इन्फिनाइट दिखा सकते हो, ये सब चीजें आएगा सर्कल के अंदर। ओके एंड आप श्योर नहीं हो किसी भी चीज के बारे में, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो, या फिर आप क्रिएटिव हो, ये सब चीजें आएगा स्क्रिबलिंग के अंदर। जिस कोई भी टाइप का आप लाइन ले सकते हो, इवन ये लाइन से यू कैन क्रिएट अ पैटर्न, वो भी स्क्रिबल के अंदर ही आएगा आपका। ओके यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके ये मोस्टली आपको डिजाइन में भी यूज होगा। दिस विल बी यूज्ड कि आपको जो पैटर्न का क्वेश्चन आता है उसमें भी आपका यूज होगा। एंड इवन यू कैन यूज दिस फॉर योर लोगो। आपका लोगो, अगर लोगो डिजाइनिंग का क्वेश्चन आया, या फिर आपको आइकन डिजाइनिंग का क्वेश्चन आया, क्योंकि वहां पे आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। ओके अगर आपको आपके आइकन में आपको डिटेल दिखाना पड़ती है, या फिर नॉलेज रिगार्डिंग कुछ दिखाना है, तो वो आइकन को स्क्वायर के अंदर फिट करो। अगर आपको कंटिन्यूटी दिखाना है, किसी हॉस्पिटल के लिए आप लोगो डिजाइन कर रहे हो या फिर आइकन डिजाइन कर रहे हो, तो आप सर्कल के अंदर दिखाना। ओके या एंड इवन आई हैव दिस कलर, जिसको कलर का डाउट्स था, यू कैन जस्ट टेक दिस। हेलो मैम। राइटर या मैम अभी जो आपने इसके पहले बताया, एक बार मुझे फिर से बता दीजिए कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जो शेप से रिलेटेड? यस मैम। आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, वो शेप के थ्रू एक बॉक्स में 10 by 10 के स्क्वायर में डिपिक्ट करो, या फिर आपको कोई वर्ड दिया जाएगा। ओके वो वर्ड को नॉर्मल शेप यूज करके उसमें डिपिक्ट करो। ऐसे चीजें So ma'am, how would we depict like our just show friendship, personality? how to show friendship? तो आपको अभी आपका पर्सनालिटी आपको क्या क्या लगता है, आप कैसे हो? आप हार्ड वर्किंग हो, इंडिपेंडेंट हो, तो आप स्क्वायर ले सकते हो। एंड जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्क्वायर, आप 2-3 शेप्स को भी मिक्स कर सकते हो। 1 minute I'll show it. मैम 2-3 शेप लेके ओवरलैप कर सकते हैं। Can you do yours? Like yeah, what happened? Ma'am, can you do yours, like depicting your personality through shapes? This is so funny. Okay, for example, this is my square. Okay, अगर आपको हार्ड वर्किंग दिखाना है तो आप ऐसे यहाँ पे दिखा सकते हो स्क्वायर। ओके अगर आपको एम्बिशियस दिखाना है, लीडरशिप दिखाना है, किसी चीज का दिखाना है, सो यू हैव टू क्रिएट अ पैटर्न। ओके ऐसे दिखा सकते हो। इसमें प्लेन ना रखते हुए आप ऐसे लाइंस का यूज कर सकते हो। ओके अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, सिर्फ ये कंप्लीट ट्रायंगल ना ड्रॉ करते हुए सिर्फ ये पोर्शन आप डार्क में कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल ही दिखा रहा है। ऐसे कंपोज कर सकते हो। बैकग्राउंड में अगर सर्कल का आपको फ्रेंडली दिखाना है या फिर केयर दिखाना है, तो यू कैन यूज दिस सेमी सर्कल, या फिर यहाँ पे कंपोज करने के लिए और एक सर्कल दिखा सकते हो। यू कैन गिव कंप्लीट टेक्सचर, क्योंकि ये पार्ट कलर में रहेगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट अगर रहेगा तो ये Can you explain shape psychology, like discussing separately? Yes, ma'am. Yeah, what happened? Ma'am, would you explain shape psychology? Okay. Because we don't know. We haven't learned. Okay, I'll show. I'll repeat it. Separate another class or you only? Ma'am, first tell this will be come on BD's paper. Yeah. Yeah. मैम प्रॉब्लम वहाँ आता है ना? Done. कहाँ पे आता है प्रॉब्लम? मैम लाइक प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चन था कि यूजिंग एनी शेप और डिपिक्ट योर पर्सनालिटी, तो वहाँ पे शेप लिखा हुआ था, शेप्स नहीं लिखा हुआ था। ओके तो फिर अगर सिर्फ शेप लिखा है तो आपको क्या लगता है एक स्ट्रॉन्ग? ओके आप सिर्फ एक ट्रायंगल तो नहीं ड्रॉ कर सकते। तो अगर आप एक ही शेप, अगर आपको सिर्फ लगता है कि आप बहुत एम्बिशियस हो, ओके तो सिर्फ ये यूज करके डिजाइन्स बनाओ, पैटर्न बनाओ। यस मैम ये बैलेंस नहीं लगता ना थोड़ा सा, तो हाँ तो वो होता है, लेकिन इसमें कंपोज करने का ट्राई करो। फिर यहाँ पे आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखा सकते हो। मैम इन सारे बॉक्सेस में टेक्सचरिंग कर सकते हैं, लाइक अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन सारे बॉक्सेस में टेक्सचरिंग मत करना। अगर इसको कलर किया है तो उसके ऊपर वाला आप उसको टेक्सचरिंग करना।
ओके अगर ये नीचे वाला टेक्सचर क्या है उसके ऊपर वाला कलर करना, ऐसे करना। ओके मैम। मैम वो कलरिंग भी कलर साइकोलॉजी के हिसाब से ना? कलर साइकोलॉजी के हिसाब से। ओके मैम। बट मैम वो कैसे जानेंगे कि मैं क्या बता रही हूँ? लाइक ट्रायंगल में बहुत आपको राइट अप में प्रेस लिखना है आपको। we इसका have to राइट write ना? कंपल्सरी रहता है आपको। ओके 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 और यहाँ पे अगर आपको शेप्स बोला है तो यहाँ पे आपने ये क्यों यूज किया है, ये क्यों यूज किया है, कौन सा कलर किया है, वो आपको बताना होता है वहाँ पे। तो राइट अप में आपको राइट अप में आपको मेनली ये लिखना है कि आपने क्या बनाया है, क्या आपका आइडिया क्या है, वो आपको पहले लिखना पड़ता है। कौन सा कलर स्कीम आपने सिलेक्ट किया है, विच कलर स्कीम यू हैव टू राइट दैट। ओके ये आपको लिखना है। मैम मैम कैट के ग्रुप में ना 2 क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू आई गेस कलर साइकोलॉजी एंड शेप साइकोलॉजी। आप एक बार प्लीज वो सॉल्व करना सिखा दो। यस मुझे मैम शेयर कर सकते हो? मैम वेयर 1 minute. I'll message my number. Can you share here? Yes, ma'am. Sure. Your name? Ma'am Manya Mehta. अच्छा okay. Okay. Yeah. Okay. तो शेप्स का इसका आपको समझा है। देखो कोई भी शेप में share the screen again. ओके शेप में अगर आपको ऐसा दिखाना है कि ये एक बॉक्स के अंदर फिट है, मतलब आप काफी ऑर्गेनाइज्ड हो, अगर आप काफी क्या बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट हो, तो फिर आप ये सब स्क्वायर में दिखा सकते हो। ओके अगर आपको कंटिन्यूटी दिखाना है किसी चीज में कि आप हर जगह पे हो, वहां पे आप सर्कल का यूज कर सकते हो। ओके अगर किसी चीज का आपको ग्रोथ दिखाना है, कोई भी वर्ड जो ग्रोथ से रिलेटेड है, जैसे फोकस हुआ, एम्बिशियस हुआ, करेज हुआ, जो भी वर्ड जो ग्रोथ से रिलेटेड है, ओके इसमें आप ट्रायंगल्स का यूज कर सकते हो। ओके एंड ये स्क्रिबलिंग ये देख के आपको क्या लगता है, आप कंफ्यूज्ड हो या फिर आप क्रिएटिव हो या फिर आप बहुत एक्सप्रेसिव हो या फिर आप एकदम आपको बहुत आइडियाज आता है, आपको बहुत कुछ बोलना है, तब आप ये कर्व लाइंस का यूज कर सकते हो। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखो तो आपको ये हेल्प होगा ये वर्ड का। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ओनली आपको ये कलर्स यूज करने हैं जो भी डिजाइन में, इवन आपका जो वर्ड डिपिक्ट आएगा क्वेश्चन या फिर लोगो डिजाइन आएगा, उसमें ये कलर्स का क्वाइट मतलब काफी इंपॉर्टेंस है। ओके जो ब्लू कलर में आता है वो इवन व्हाइट में आता है, पीस व्हाइट में भी आता है, लॉयल्टी व्हाइट में भी आता है, ये व्हाइट में भी आएगा आपके वर्ड्स। ओके मैम क्वेश्चन में है एक भी क्या क्वेश्चन में है? तो लाइक मॉडर्न, हाउ टू सो मॉडर्न और साइलेंट और प्रिमिटिव। मॉडर्न और साइलेंट आप कैसे दिखा सकते हो? ओके साइलेंट के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, कौन से लाइंस यूज कर सकते हो या फिर क्या आप दिखाओगे, आपका आइडिया क्या है? आप स्ट्रेट लाइंस का यूज कर सकते हो या स्ट्रेट लाइन। और कैसे उससे आप पैटर्न्स बना सकते हो कुछ। एंड एक्सक्यूज मी मैम। प्रगति यस अंजलि या तो आप और क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो इसमें, और क्या आप शेप्स यूज कर सकते हो या फिर पैटर्न यूज कर सकते हो? मैम व्हेन वी आर आस्क्ड टू यूज जस्ट शेप्स एंड लाइंस, तो हमें कुछ पैटर्न ही बनाना है या फिर हम छोटा ड्राइंग भी या शेप यूज करके आपको पैटर्न बनाना है। सो स्मॉल इलस्ट्रेशन या कर सकते हैं कर सकते हो। एंड उसमें इवन आई विल सजेस्ट स्टिक फिगर या कलरिंग मत करना, इवन टेक्सचरिंग पार्ट यूज करना। तो स्टिक फिगर वगैरह बना सकते हैं उसमें। फिगर्स नहीं बना सकते, एक्सप्रेशन डायरेक्ट नहीं दिखा सकते आप किसी चीज का। ओके ओके अगर कुछ एक्सप्रेशन वाला आया तो आप डायरेक्ट वो एक्सप्रेशन ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल शेप के थ्रू आप ये शेप्स यूज कर सकते हैं, आप ह्यूमन फिगर नहीं बना सकते हो, आपको एक पैटर्न बनाना है, ह्यूमन फिगर एक पैटर्न नहीं हुआ। ओके
Okay. Ma'am, what is the difference between illustration and composition? ओके देखो कंपोजिशन में क्या आता है, यूजुअली आपको कंपोज करना है ड्राइंग। ओके कोई भी डिजाइन है ना, आपको कंपोज करना है, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ओके कैसे भी कंप्लीट भरा हुआ है ऐसे ड्राइंग नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर बैलेंस चाहिए। जैसे कि मैंने अभी ट्रायंगल और स्क्वायर में आपको दिखाया। ओके अगर यहाँ पे आपने बड़ा नीचे आपने कलर ट्रायंगल दिया है, उसके ऊपर आपने टेक्सचर किया है, तो वो बैलेंस करने के लिए नीचे कहीं ना कहीं यूज करना है आपको। आपको कोई आप स्टोरी क्रिएट नहीं कर सकते, आप वहां पे ऐसे इलस्ट्रेट नहीं कर सकते हो। Okay. Mom, there's just Okay, one ma'am. doubt. Yeah. And what is illustration? Illustration means आपको एक you have to show one story, आपको कुछ उसमें कनेक्शन दिखाना है, क्रिएट करना है, वो यहाँ पे नहीं दिखाना है आपको। Excuse me, ma'am. Yeah, आ गया। Ma'am, then when about we composition. Yeah, what happened? like in offline exams, we actually attach that mind map or a rough work with our sheets, right? So in online exam, if we are making mind map, what should we do? Should we upload it, do it on the same page as we are doing the main work, Yeah, or upload it. leave it? Don't upload it. What Upload it. should be done? Done on Upload the it. same page or On the rough same sheet? page. On the same page. Okay. For example, if you're designing some product, right? Okay, your sketches will be there, right? So you can do one thing. You can compose it this way. Okay, this is your main product. This will be your inspiration part. Okay, or any shape you can take randomly. One sec. Ma'am, I have sent you the questions. My phone goes. Students, please wait.
Okay, sorry, I lost my connection. Yeah, वही हम प्रोडक्ट डिजाइन का मैं आपको बता रही थी, right? The sketching part. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. So if this is my object here, okay, for product designing, I'm saying. I'll spotlight it. Yeah. So here will be my inspiration, some pattern or some animal or from flower, anything. Okay. Here will be your inspiration part. Okay. Here on background, okay, you can show your rough sketches. For example, you have made this. You have made, for example, this one. This. You can compose your rough sketches here. Okay. And then this will be the front view. Here you can show the top view, side view, this way. Your complete drawing will be composed this way. Understood? Yes, ma'am. या फिर you can also do one thing. अगर आपका जो ये background is, if your background is light, so you can do one thing. You can make a big rectangle or random shape you can make, and just these rough sketches you can just do it, outline it with pen, so pencil. Okay, make it dark, and then you can show your this way. Okay, this way you Can can you tell compose it. this one again? Last one. This one. Okay. If this is your inspiration part, okay, your inspiration pattern or something, here will be your main sketch, okay, from front view. Okay, main sketch. Here you can draw your sketches with your pencil, which will be visible directly. And here you can show the top view or side view here. Okay, ma'am. With a light pencil. Yeah. So you can do one thing, you can take some topic. Okay, you can just compose this and you can share in me on WhatsApp. Okay, we'll see the composition. Same way you can use that for your exam part. मैम एक चीज और, Yeah. मैम लाइक अगर राइटअप का स्पेस गिवन ना हो कि मतलब अलग पेज पे आपको राइटअप राइटअप को आपको स्पेस दिया ही नहीं जाएगा क्योंकि आपके पास आपको एक ही बॉक्स में राइटअप, अगर मैम लाइक अगर एक ही बॉक्स में राइटअप और वो ड्राइंग दोनों को मैनेज करना हुआ तो कैसे? क्योंकि राइटअप और ड्राइंग को एक साथ करने के बाद वो बहुत मेसी सा लगता है देखने में। ड्राइंग उसमें राइटअप ऐड ही मत करो क्योंकि आपको अभी स्पेस दिया ही नहीं है। आपको ओपन आपको मतलब शीट बोला है, राइट? तो आपके ड्राइंग के नीचे आप राइटअप लिख सकते हो। ओके मैम, आपको मतलब अपलोड अभी हम लोग फ्री है ना, यहाँ पे आपको स्पेस दिया ही नहीं है, सो आपके हाथ में है। ओके मैम। या मैम तो उसमें जैसे 6x6 के बॉक्स में बनाने के लिए बोला तो फिर तो अगर राइटअप लिखना हुआ तो आपके बॉक्स के नीचे स्पेस रहेगा ना? यस मैम। नीचे लिखना है, राइटअप कभी ड्राइंग में मत लिखो। ओके, वो मिक्स हो जाता है, मर्ज होता है, वो मत जाओ उसमें। ओके मैम। ओके मैम, एंड इवन इफ राइटअप नहीं पूछा है, add write-up for all design based question. Yeah? Okay, ma'am. Yeah. Ma'am, I didn't understand the difference between illustration and composition. The difference is illustration means you have to show some scene, you have to show it. Okay. And the composition means you have to compose it. For example, if you're drawing one figure here, so the composition, so you have to balance this figure here also. You can, now this you have drawing a tall, big figure, okay, or some big space, big shape you're taking. Okay, to compose it, you have to take one small and you take one more here. This is known as composition. Okay, and illustration means you have to show some story, you have to show some movement in that. मैम Okay, ma'am. मैंने कुछ किया है, मैं आपको दिखाऊं? Yeah, sure. मैम 1 minute. जैसे मैम मैंने इधर लिखा हुआ है। ऐसा मत करो, एग्जाम में ऐसा मत करो। ओके मैम। ओके, आप नीचे जो आपने लिखा है ना, द कलर, ये कलर का ये है, ये कलर का ये है, वो आप दिखा सकते हो वहां पे। ओके, एंड ये पोर्शन क्या दिखाया आपने जो पैंट में यूज किया, दैट सर्कल पार्ट? अनुष्का,
Yes, ma'am. Can you show that again? Yes, ma'am. Okay, look. अभी ये कैसे कंपोज करोगे मैं आपको बताती हूँ. Same idea. Okay, ma'am. If this is your paper now, okay, this will be your figure right here. Okay, here you have taken one texture for t-shirt and one texture you have taken for pant. Okay, Yes, so what ma'am. we'll be doing, we're drawing a square this way and this way. Okay, this texture will be complete wavy one, and this is triangles, right? Yes, ma'am. Okay, this, and here this will be the figure. Okay, this will be your figure. Yeah, now Yes, this way you're gonna show, and the color you can make it here. Okay, your composition should be this way. Understood? Yes, ma'am. Clear हो रहा है इसमें? The bullets that you made on the right side, what do they represent? What happened? The bullets that you've made. This right bullets, side. she has mentioned some colors. Blue color shown for this, orange color shown for this, like that. Okay. Okay. Ma'am, can we show detailed explanation by writing below Yeah, it? but below, here, down, Yes, below ma'am. the square. And also, ma'am, if we zoom that by drawing, can we draw under that also? Yeah, even that part you can do. Okay, ma'am. Ma'am, the color part. Ma'am, I have sent you the question. One by one, what? Is it necessary to depict all the colors which we have used? Most main colors you have to depict. For example, the t-shirt will be blue and this, and here the belt part you have taken it's red. If you don't show that, then that's okay. But orange and blue, that you will have to show. Okay, ma'am. How will we show the features of the product? Like if You can there's zoom it. You can just arrow it and you can show the magnifying glass, or you can show some lens and you can zoom and show the features. तो उसके लिए we'll have to write. I mean, तो वो वहाँ पे composition. नहीं लिखना है, you have to write it down. But यहाँ पे आप you can do one thing कि आप ऐसे zoom करके, ऐसे zoom portion, इतना ही portion zoom करके आप दिखा सकते हो, उसका एक part. या फिर ये पैंट का मुझे दिखाना, तो मैं यहाँ पे zoom lens डाल दूंगी. तो सिर्फ zoom कर दे, लिखे कुछ नहीं. नहीं, लिखे कुछ नहीं. अगर one line लिखना है, one word लिखना है कुछ, तो आप लिख सकते हो. पूरा write up मत लिखने जाओ drawing पे. Okay. Okay. Ma'am, in this question, what all should we include in the write-up? In which question? In this one, which you're showing right now. Yeah. What all should we include in the write-up? Write-up, for example, what was the idea? Yeah, why you have selected that particular pattern and particular color, you have to write that. And which age group, who can use this design? Only that much. Okay, what will be the material? If you have material knowledge, you can also add that if you want, but that's not compulsory. Okay, now the last one, design based question. Okay, design based question में क्या आएगा? For example, design a chair for a dentist, design a bag for a makeup artist, design a bed sheet for teenager. इस टाइप के डिजाइन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. यहाँ पे you have total freedom, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना है. You will be given one size, 6x6, 7x7 का साइज आपको दिया जाएगा, उसके अंदर you have to design this. Okay, now for example, if you have to design a bed sheet, तो आपको bed sheet draw नहीं करना है. You have to just draw a square and you have to just use the pattern which will be used in your bed sheet or in pillow. Okay, pillow बोला है, pillow का अगर डिजाइन करना, you don't have to draw a pillow. Pillow के अंदर जो डिजाइन होगा, that you have to draw. Okay. And जब भी ऐसे डिजाइन रहेगा, डिजाइन क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल डिजाइन अ चेयर फॉर डेंटिस्ट, डिजाइन अ चेयर फॉर मैजिशियन, ये सब क्वेश्चंस आता है. डिजाइन अ टैप और डिजाइन अ कंटेनर फॉर आर्टिस्ट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. तो फिर आप उसको उनका यूज, उनका यूटिलिटी भी होना चाहिए, उतना एस्थेटिक ब्यूटीफुल भी लगना चाहिए.
ओके, यूटिलिटी होना चाहिए उसका, ये मेनली याद रखना है, ठीक है। एंड एनी क्वेश्चन इन दिस? Ma'am, should we color could these? you tell us how to do a mind map? Color. Backpack. Ma'am, How to draw a backpack? mind map. No, ma'am, mind map. Mind map. How to Okay. plan a mind. Yeah. Okay. Before drawing. Look, that I've shown, 1 minute. Yeah. Okay. First try using normal shapes. Okay, basic shapes से go with, start with them. Okay, जैसे shape आप जाए फिर then उसको modify करते जाओ. Okay, कोई भी आप normal sketch, you'll be starting with sketching part, right? Start with basic shape. For example, अगर आपने triangle for यहाँ पे motif लिया है, okay, why you have taken that? Okay, for example, your inspiration is turtle. Okay, turtle का you have used hexagon shape. ओके, तो हेक्सागन क्या यूज हुआ है, पहले सिर्फ हेक्सागन ड्रॉ करो एंड देन उसको मॉडिफाई करते जाओ एंड वो चीज आप यहाँ पे दिखा सकते हो. ओके ओके मैम. या एंड वन मोर थिंग, करंट सिचुएशन के हिसाब से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर भी थोड़ा वर्क करो. कोविड बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, लॉकडाउन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, थोड़ा उस पर भी देखो. जैसे 2020-2021 कैसे गया. Okay, on that questions can come, so you have to cat and dog. Okay, I'll show that. Okay, 2021-2022 के बेस पे क्वेश्चन आपका सिचुएशन कैसा गया या फिर मूड कैसा था, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, डिजाइन अ पोस्टर ऑन अवेयरनेस, कोविड अवेयरनेस के हिसाब से आप देख सकते हो. कोई सैनिटाइजर बॉटल, हैंड वॉश का या फिर मास्क का एक्सप्लोडेड व्यू आ सकता है. या फिर अभी ऑनलाइन है ये, राइट, तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग कैन कम. जैसे आपके सराउंडिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ग्रैब करो एंड ड्रॉ करो, ऐसे कुछ आ सकता है. ओके, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड जो अभी बीच में कुछ महीने पहले बुलिंग के रिगार्डिंग चला, तो बुलिंग पे कोई एंटी बुलिंग, स्टॉप बुलिंग, ये सब कोई आ सकता है. पोस्टर में स्टैम्प, पोस्टर या स्टैम्प आ सकता है इसके बेस. या फिर कोई प्रोडक्ट डिजाइनिंग में ऐसा आ सकता है, कोई प्रोडक्ट डिजाइन या डिजाइन सम प्रोडक्ट फॉर फ्रंटलाइनर्स और फॉर सम डॉक्टर्स के लिए आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करो, ऐसे सब आ सकते हैं. ओके, ये सब चीजें देखो. इवन जो क्लाइमेट चेंज है हो रहा है, क्लाइमेट चेंज बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है. ओके, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज रखो, पढ़ो कैसे क्या है. ओके, डायरेक्टली एग्जाम में आपको भी स्केचिंग में टाइम मतलब ज्यादा नहीं डालना. ओके Okay, ma'am. Ma'am, can you give some ideas about 2D and 3D design? ओके, 2D एंड 3D डिजाइन. 2D डिजाइन और 3D डिजाइन में मेनली मतलब क्या आइडियाज, कंपोजिंग का डिजाइन. Yes, ma'am. Some tips or some example for that. Examples like composing a Yes. design in a square. Yes, ma'am. Okay. Related to that only. नो मैम, लाइक कुछ ऑप्शंस दे देते हैं और उसमें से बोलता है कि चूज एनी 5 ऑब्जेक्ट्स एंड ड्रॉ देम, ऐसा कुछ. In 2D and 3D form. Both. मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको, कोई आपको शेप्स कुछ दिया जाता है, ऑब्जेक्ट्स देते हैं, राइट? Like draw a bottle in 2D and 3D form, both. Okay. So yeah, जब भी आपको 2D में ड्रॉ करना है, okay, you don't have to look for detailing part. आपको जस्ट फ्लैट में दिखाना है, इसको प्लेन कलर करना है, शेडिंग नहीं करना है. ओके, ये आपका 2D रहेगा. एंड 3D में
ये जो पोर्शन है ये आपको ध्यान से डिटेलिंग सब करना है। ये जितना कर्व रहेगा उससे ज्यादा इसको कर्व लेके ओके, ये डिफरेंस आएगा। 3D में आपको जितना डिटेलिंग आपका दिख सकते वो आपको आएगा। यहाँ पे शेडिंग आएगा। ऑब्जेक्ट ड्राइंग का शेडिंग पोर्शन यू नो राइट, एक बार बता दूं। Look, if this is your cube, if light is coming from here, this will be light to highlight to light portion. Okay, back side will be completely dark, so this will go from middle to dark portion, and this way from highlight to dark portion. Okay, similarly, if this is your cone part, okay, now this is circular, so this will, if light is coming from here, okay, any circular, any triangular object, any cone object, okay, if this is your cone and light is coming from here, so this part will be dark to light, this portion will be highlight, and light to dark, and this for 3D view here you have to show the reflection, to show the normal shading. Your coloring will be this way, coloring or pencil shading, anything. Okay, dark to light, and again you have to while coloring any product design also you have to remember this, your shading will be this way. Okay, this will be your highlight portion, and after this the object is 3D show, so the reflection line will be seen here this way. Okay, reflection line will be completely light color. Okay, this is for cube, this is for cone. For sphere it will be again same. If light is coming from here, so this will be a light part, highlight part, then the light portion, okay, then you can start from dark, आपको कंपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, लाइक 3 ट्रांसपेरेंट क्यूब दिया है एंड 1 ओपेक क्यूब दिया है, यू हैव टू शेड दैट, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकता है। Okay, this way, highlight, this will be highlight, light, middle and dark, and this portion will be reflection. Okay, understood this? Yes, ma'am. Ma'am, we can use this in still life composition. For example, ऐसे आ सकता है कि you have to compose 3 cubes, 3 cube transparent cubes and 1 opaque cube. तो ये कैसे आप ड्रॉ करेंगे? You have to compose them. Compose करते वक्त you have to remember कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक क्यूब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक यहाँ पे ड्रॉ किया, ऐसे नहीं, ये इसके अंदर इंटरलॉक होना चाहिए। ओके, तो कंपोजिशन अच्छा दिखेगा। ओके, ये यहाँ पे इंटरलॉक हुआ, एक क्यूब यहाँ पे नीचे है बैलेंस के लिए, एक यहाँ पे जा रहा है, इसके ऊपर रखा हुआ है, this way. Okay? Yes, ma'am. Ma'am, for transparency, we will use that gray shade. Yeah, you can also use pencil for transparent. अगर आपको कोई स्पेसिफिक कलर में भी आप transparent can also use ना, like का शेडिंग में। Yeah, what happened?
लाइक वुड में वुड वाला स्ट्रक्चर दिखाना, देन मिरर या शीशा जो ट्रांसपेरेंट होता है उसमें लाइन 2-3 ड्रॉ करते हैं ना, टू शो दैट इट इज ट्रांसपेरेंट. ओके, ट्रांसपेरेंट में आप लाइंस ऐड कर सकते हो. ओके, बट आपको इवन वो कलर के इसमें दिखाना है. ओके, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज माय ट्रांसपेरेंट क्यूब, ऑफ कोर्स इफ इट्स ट्रांसपेरेंट तो मुझे बैक साइड भी दिखेगा, राइट? So the shading portion will be, अगर ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ पे थिकनेस का रिफ्लेक्शन होगा. One minute. Okay. What is happening? Give me a minute. इवन अगर आपको मेल्टिंग आइस ऐसे कुछ आया तो आप ऐसे ही कर सकते हो इसको. Okay, this way. Now this part will be seen. Okay, understood? Yes, ma'am. कैसे लाना है समझा? Yeah, ma'am. Okay. Yeah. Any And ma'am, hands? for opaque one, we can use that wooden texture or like any metallic Yeah, texture. you can use. You can use them. ठीक है, ओपेक में आपको बताया नहीं तो प्लेन यूज करने से अच्छा इंस्टेड आपने अगर वुडन टेक्सचर सब यूज किया या फिर मेटल आपने दिखाया तो इट्स क्वाइट गुड. And for the transparent one, glass like will be colored. You can use colorful glass. Yeah, you can use colors. Okay. Ma'am, what to give a texture like the glass, the mirror? Like how to give a texture like in a mirror? This way in linings. For glass, ma'am. Yeah, Ma'am, this is transparent now, like for the glass, like for the mirror. Yeah. Ma'am, how to give texture to metal Ma'am, or she's wood? talking about that mirror look, like reflection it shows. Reflection. Then you have to show that. For example, यहाँ पे mirror है, right? This is mirror. So the other object will be also seen. So you have to also show that. Ma'am, how to give metal or wooden texture? Okay. Okay, ma'am. Wooden. For wooden texture. Okay, I'll show you the wooden texture here only. Okay, first I've drawn these lines. Now
Yeah, sorry, I'm facing quite network problem. Yeah, so wooden का मैं आपको दिखा रही थी. First you have to draw this lines, okay? And जो अभी जहाँ पे आपने lines draw किया, that part will be dark, and then this will go lighter. Similarly, now this part will be dark, okay? This will go light. Again, dark portion. Okay, understood? ये एक वुडन में आप दिखा सकते हो. नेक्स्ट आपको अगर वुडन लॉक का दिखाना है, देन यू कैन add this textures this way as a skin. And metallic? Yes. And for metallic, this you can take in straight. Okay, for metallic, you have to show sudden dark and sudden light, highlight portion. Okay, this way. Okay. Yeah. Yes. एक्चुअली ये है कि जो फोटो हम लाइव जो देखते हैं पेज पे और जो फोन से क्लिक करके फोन में जो आता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है. फोन वाला उतना अच्छा नहीं दिखता जितना सुंदर पेज पे दिख रहा होता है. Yeah. Then तो Exactly, वो ma'am. how to show
तो आपको एकदम नजदीक के करके जूम प्रॉपर ये करके आप फोटो भेजना जब फोटो आपको अपलोड करना है। लाइक क्लियरिटी की बात नहीं है, सुंदर, लाइक वही फोटो अच्छे अगर फोन से अच्छे कैमरे से भी लो तो उतनी अच्छी नहीं आती जैसे देखो क्या सामने होता देख है, के होती है। यहाँ पे फोन में अगर कहीं भी अगर आपका थोड़ा भी बाहर गया रहेगा तो वो अनफिनिश तुरंत दिख के आता है, राइट। पेपर पे उतना नहीं दिखता वो, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ऑनलाइन, मतलब वो एक है प्रॉब्लम। लाइक कुछ ऐसा कर सकते हैं इवन ना कभी कि कभी ऐसा यस होता है कि आपने यस कलर मैम, जो ऐसे ही यूज होता है। किया है वो वहां पे डल दिखेगा कलर। मैम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक प्रॉपर जो या भी ऐड करके भेज दें पीडीएफ में, जो क्लोज से हमारा जो ड्राइंग है उसका भी एक फोटो लेके भेज दें। यस भेज सकते हो, बट यूजुअली क्या होता है कलर्स जब आप यूज करते हो ना तो कलर्स कभी कभी फोन में देखो आप फोटोज ले रहे हो तो कभी वो डल दिखता है या फिर वो कलर बहुत ही ज्यादा कलर ब्राइट हो चेंज भी जाता हो है, जाता है, या कलर का शेड भी चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। तो इसलिए एक बार एग्जाम से पहले सारे कलर्स है ना आप पहले ऐसे लाइन से कलर कर लो, ओके एंड उसका शेड प्रॉपर कैमरा में आपके कैसे दिख रहा है वो देख लो, उस हिसाब से फिर आपको एग्जाम में आप पोस्टर के लिए सब कलर यूज कर सकते हो, वो हेल्प करेगा आपको। लाइक कोई आइडिया होगा ना जिससे कि मैं अगर लाइक रियल में हो या नहीं, फोटो में वो चीज कुछ अच्छा ऐसा लगे। टेक्निक हो कि अच्छा दिखे। हाँ अच्छा दिखे, ओके तो इसलिए मैं पहले बोल रही हूँ जो भी पेंसिल से आप कलर यूज करने वाले हो, पेंसिल कलर या पोस्टर कलर आप यूज कर रहे हो तो पहले आप इसमें कर लो, पहले एक रफ पेपर में करके देख लो आप एंड देन फिर वही कलर यूज करना जो उसमें अच्छा दिख रहा है। यूजुअली कभी कभी ब्लर दिखता है या फिर डल दिखते हैं आपके कलर्स या फिर एक्स्ट्रा ब्राइट दिखता है, वो भी आपका कलर पूरा चेंज हो जाता है एंड जब आप डिस्क्रिप्शन में देते हो वो कम्प्लीटली उसके अपोजिट मैच नहीं करता, ओके ये नहीं होना चाहिए। और मैम अगर हमने कोई जो भी कलर किया है उसको जब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं तो वो कैसे क्या क्या चीजें लिख सकते हैं उसमें फिर कलर के हिसाब से? कलर में आपने वो कलर क्यों सिलेक्ट किया, वो कलर किसके लिए स्टैंड होता है, ओके एंड देन आपने अगर कलर स्कीम लिया है तो कौन सा कलर स्कीम लिया है, यही लाइन आपको बट चाहिए। मैम this is also disadvantage for us na, Yeah, it because is. on the basis of photo we are judged. मैम बट वो सबके साथ होगा ना, सिर्फ हमारे साथ नहीं सबके होगा ना। साथ होगा वो, ये सबके साथ होगा। थोड़ा प्रॉब्लम है अगर किसका फोन का कैमरा, वो थोड़ा चेक कर लो कौन सा कैमरा अच्छा है कौन सा फोन का, आप वो यूज करो तो ज्यादा क्लियरिटी ज्यादा अच्छे से जाएगा। ओके आपके रूम के लाइट्स चालू रखना, डल इसमें फोटोज अच्छे नहीं आते हैं, ओके तो हमेशा ब्राइट लाइट में फोटो लेना। Okay. Mom, if Yeah. someone has Staedtler watercolor pencils, so can we use a little bit of water to smudge the background? Yeah, you can add. Now here as it's online, आपको सब allowed है, watercolor, poster color allowed है, so for that also you can use. And mom, I've sent some of my works to you. Can you please One by suggest one. some improvements? You have shared in WhatsApp? Yes, ma'am. Okay, I'll check. I'll check and message you there, okay? Yeah. Okay, mom, no problem. Yes, next. Ma'am, shadow, ma'am. Yeah, what happened? Shadow? Yes, ma'am, shadows of objects. मैम आप चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख सकती हैं क्या? Yeah, मेरे को okay. आपको कुछ वर्क शेयर करना था क्लास के बाद। Okay, I'll share. Also, mom, can you suggest some quick fonts that can be like used to write anything in 2 minutes and looks good? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. Because if we focus on writing calligraphy types or writing on fonts, it takes Yes, lot. ma'am. Fonts and calligraphy maybe. Yeah, yeah. Okay. Akansha ma'am will share you my number. I've told. Okay. Yes, ma'am, sure. Shared? Okay. Yeah. Okay. First, I will start with shadow part. Okay.
फॉर शैडो, अगर कोई कोनिकल ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका शैडो अगर लाइट यहाँ से आ रहा है फ्रॉम फ्रंट व्यू तो इसका शैडो ऐसे जाएगा, अगर एग्जैक्ट सामने से आ रहा है तो इसके शैडो पीछे जाएगा जो आपको नहीं दिखेगा, अगर लाइट यहाँ से आ रहा है यहाँ पर शैडो इस तरह से आएगा। ओके, हाईलाइट के ऑपोजिट योर शैडो विल बी देयर, जो साइड आपका रिफ्लेक्शन लाइन है दैट साइड शैडो रहेगा। ओके, शैडो शेडिंग के वक्त ऑब्जेक्ट से डार्क होना चाहिए, okay, then middle tone and then light tone, okay, this way। कोई भी स्फीयर का ऑब्जेक्ट रहेगा, ओके, स्फीयर का ऑब्जेक्ट का शैडो अगर यहाँ पे है, ओके, लाइट यहाँ पे है, शैडो इस टाइप आएगा, लाइट ऊपर से आ रहा है, शैडो यहाँ पे गिरेगा, और लाइट ये साइड से आ रहा है, शैडो ये साइड ऐसे गिरेगा। ओके, अभी मैं लाइट यहाँ पे है तो शैडो यहाँ पे आएगा, सो स्फीयर का शैडो भी इस तरह से रहेगा, दिस विल बी डार्क पोर्शन, then middle and then light। Okay, this will be sphere। and for cube, okay, अगर in case light यहाँ से आ रहा है, you have to draw two parallel lines, and ये जो है इसको यहाँ पे ये parallel line, again this portion will be dark, middle and light। Okay, this way, done? Yeah, Okay, ma'am. Yes, ma'am. yeah, one sec। Ma'am, so जो भी आपने, yeah, what happened? Ma'am, can you show metal वाला again? मेटल वाला, देखो मेटल वाले में आपको क्या करना है, आपका हाईलाइट डार्क और हाईलाइट आपका काफी टाइम रिपीट होगा क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है ना, तो ये हाईलाइट रहेगा, okay, this way। Yes, ma'am. Thank you. Yeah, 1 minute। Okay, any other questions? Yeah, मैम स्टोरी बोर्डिंग वाली क्वेश्चंस कैसे करेंगे? स्टोरी बोर्ड आपको आशीष सर बताएंगे, जो प्रोसेस का है वो मैंने अभी बता दिया, प्रोसेस मेकिंग आपको कैसे दिखाना है, राइट? ओके मैम। या ये जो आज हमने अभी टॉपिक किया, तो अभी जो टॉपिक कवर किया उसमें से सब समझा है, क्लियर है? एनी डाउट्स? Ma'am, that font one also, Font please. and typography और calligraphy। ओके, देखो फॉन्ट में आपको बेसिक फॉन्ट्स कैसे चाहिए, मतलब किस चीज में? Ma'am, जो जल्दी से हो जाए, they look good, they are fast enough. देखो Because वर्ड्स आपको ना जैसा वर्ड आएगा उस पे आपको फॉन्ट लेना पड़ेगा। ओके, एंड इवन टाइपोग्राफी में क्या है, अगर आपको जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया था, जैसे कोई फ्रूट जूस आया, ऐसे कोई चीज आया, ओके, फॉर एग्जांपल आपको वो शेप आप क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आप लेमन है तो यहाँ पे आप फ्रूट दिखा सकते हो,
ओके यहाँ पे आप फ्रूट लिख सकते हो। ओके दिस वे आप यहाँ पे फ्रूट दिखा सकते हो, यहाँ पे ऐसे ड्रॉप्स दिखा सकते हो। ये पोर्शन का आप जूस बना सकते हो, इसके अंदर आप जूस लिख सकते हो। ओके ऐसे आप कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको फॉन्ट चाहिए, फॉन्ट किसके अंदर आप लिखने को बोल रहे हो? मैम हेडिंग्स पोस्टर्स के अंदर या हम जो स्टोरी बोर्ड में लिखते हैं ना, जो सोचते हैं तो वो इक्वली लिखना होता है, मतलब वो सेम आपको सेम नॉर्मली लिखना है, क्योंकि आप उसमें इतना एक छोटा सा ऐसा ही आपको शेप रहेगा, आपको बस स्क्वायर के अंदर, इसके अंदर आप कैसे फॉन्ट करोगे? बस इतना क्लियर लिखो कि वो दिखना चाहिए, उसके अंदर फॉन्ट कैसे यूज करोगे आप? एंड अगर पोस्टर्स में आपको फॉन्ट यूज करना है, तो अगर सेल जैसे वो सब है तो वहां पे थोड़ा कर्सिव फॉन्ट्स आप यूज कर सकते हो, थोड़े ऐसे सब फॉन्ट्स यूज कर सकते हो। अगर आपको टाइटल लिखना है तो टाइटल उतना बोल्ड इनफ होना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए कि आप प्रॉपर दिखा सकते हो। पोस्टर्स में सब फॉन्ट्स तो यूज सिंपल होता है। मैम पोस्टर में डिफरेंट काइंड्स के फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं? ज्यादातर फॉन्ट्स में मत जाओ पोस्टर में, क्योंकि पोस्टर ऐसा चीज होता है कि आपको डायरेक्टली मतलब आपका मैसेज देना है। ओके अगर भी आप फॉन्ट्स यूज कर रहे हो तो इतना ये रखो कि आप वो डायरेक्टली रीडेबल होना चाहिए जो आप लिख रहे हो। मैम एक एग्जांपल दे सकते हो? देखो यही मैं बोल रही हूँ, ऐसे आप लिख सकते हो, बोल्ड फॉर्म्स ले सकते हो, यहाँ पे शैडो दे सकते हो ये पोर्शन में। ओके ऐसे ले सकते हो। अगर आपको कर्सिव से लिखना है, ऐसे कुछ कर्सिव फॉन्ट्स ले सकते हो। ओके अगर आपको कोई ट्रैवल से रिलेटेड करना है तो आप आउटर शेप कुछ प्लेन का कुछ ले सकते हो, उसके अंदर आप लिख सकते हो। ओके यस मैम। या ओके आई हैव शेयर्ड माय नंबर राइट, जो भी आपका वर्क है जो भी है आपका, आप मुझे वहां पे शेयर कर सकते हो। आई विल रिप्लाई यू देन। ओके ओके मैम। या आशीष सर। Ma'am, where is your number? Akanksha ma'am, I shared you in chat. अभी तो नहीं आया, बाद में। अच्छा ठीक है, you can ask for more. She has shared. Ma'am, Yeah. ma'am, please show how to draw cat or dog. अच्छा वो या ओके इसका स्केलिंग पोर्शन नॉर्मल जो स्केलेटन जो रहता है, ओके दैट यू कैन गो दिस यू कैन यूज इट एज फेस। ओके या फेस के लिए दे सकते हो। देन you have to draw one more circle. Okay and here one more. ओके ये डॉग का मेन स्केलेटन रहेगा। यहाँ पे लेग, इसके जो पीछे है ये जो कवर है यहाँ पे लेग आएगा। ओके नाउ ये जो है सर्कल, ये सर्कल से जाके ये एक आगे की तरफ बेंड होगा। सिमिलरली दिस वे ये यहाँ से आएगा एंड ये पोर्शन ऐसे जाके ऐसे आएगा। ओके दिस विल बी द टेल पोर्शन। अभी नेक्स्ट जब भी आप इसमें डिटेलिंग में जाओगे, ओके ये आप यहाँ पे दिखा सकते हो। या सो ये जो है यू कैन गो दिस वे। ओके here you can show the eyes portion, ये यहाँ से दिस वे। ओके ये ऐसा आएगा, ये पीछे का लेग है तो ये यहाँ तक आएगा। ओके यहाँ से दिस वे ये बम्प आएगा हल्का सा यहाँ पे और यहाँ पे वापस।
Okay. Next from here this way. Again ये जो है पीछे का था, ये यहाँ से ये आगे के टुवर्ड्स बेंड होता है. Okay. And legs portion is not visible. Yeah. Now this will go from here straight. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Yeah. And अगर similarly cat का भी आपका ये scaling same आएगा. Okay. यहाँ पे face उसमें अलग होगा. यहाँ पे अगर आपको फ्रंट फेसिंग दिखाना है तो सर्कल ड्रॉ करना है. ये उसका मिड लाइन होगा. यहाँ पे उसका माउथ नोज पार्ट होगा. माउथ नीचे रहेगा. ये ईयर्स रहेगा. ओके. यहाँ पे और एक सर्कल ड्रॉ कर लो. ओके. सर्कल ड्रॉ करने के बाद दिस विल कम हियर एंड दिस विल कम हियर. ओके. नेक्स्ट इसका जो ये नीचे का पार्ट है यहाँ पे और एक सर्कल आएगा. ओके. सो ये ऐसा रहेगा दिस वे. ओके. ये ऐसा आके यहाँ पे ये उसका बॉडी पोर्शन हुआ. नाउ फॉर लेग्स यहाँ पे दिखा सकते हो. ये यहाँ से आएगा. ये उसके दो फ्रंट हुए. ओके. ये उसका सिटिंग. यहाँ पे पैर आप ऐसे दिखा सकते हो. टेल पोर्शन ये उसके ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए जैसे भी आप चाहिए ले सकते हो. ओके. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, Ashish sir, you can take over. Thank you, ma'am. Pooja ma'am. Thank you. Welcome. Thank you, ma'am. Okay. Yeah. Ma'am, would you send us What, Yes, Khushi? what? ma'am, would you send us this sketches of animals on WhatsApp? Okay. Akansha ma'am, मैं आपको share करती हूँ. Then you can share with them. Okay, sure, ma'am. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. Welcome. Bye bye. You helped a Thank you, lot. ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Bye. Hello, Ashish sir. Hey, ma'am. Hi. Hey. So now we have Ashish sir with us. He's on NIFTian alumni, right? Yep. Okay. Hello, sir. Hey. Yeah, Hello, Ashish sir, sir. over to you. Hello, sir. Hey, Nandini. Hello. How are you? Hi, sir. Yeah. So, a lot of students. Yeah. So, see, basically, my subjects are gonna be basically the storyboard, mascot, color psychology, elements of designs, all those areas. If you can just start with your fears and your tensions about the exams on the first place. Do you have any questions regarding how to approach your questions? How to present them. Yeah. Pardon? How to present them. Present them. How to Presentation. present them? Present them. Like any answers or any particular kind of answers that you have in your mind. Generally. Like Generally, how see, to show the picture and photos. Like it will look good on the photo or in phone. I didn't get you. Font. Is that So what you no, asked? actually the thing is when we see Did you ask me something what- on paper, it look different, and when we click a photo, it looks different. So she's Yeah. basically asking how to do something that it looks good on photo as well, because that's what Okay, actually matters. get a scanning app, a perfect scanning app for your mobile on the first place, and then do a proper. Is it allowed to pixel changes? No, they No, have their no, app. You sir. have to take photos from that, or up only that Oh. app will make the PDF, and you have to upload that. Okay. Even Even though we cannot exit option that is app. not that good in that.
Okay. See, the point is, it's not about the way the aesthetical your work looks, aesthetically how it looks. It's about how what all content you give on the first place. The one common or one important element I always make sure to mention is, regardless whatever work you're giving, let it be a mascot or a composition or maybe a t-shirt design, you give a proper mind map and a proper background work that I think all of my students are aware about already. You know how to how did I taught you about how to give mind maps and how to give a background work. Yes, sir. Yeah, just make sure that if regardless whatever you're submitting, just make sure you submit your rough paper where you do your background work. In formal and NIFT entrance exam or an NAD entrance exam for that matter, there will be 2 pages for you as a working column. And as any of your answers is gonna represent you as a designer in front of them. And every design's background work and background mind map is much important than the final answer, like just like a maths problem. The working column, or the way you did the work, is more important than the final one piece of answer. So make sure that you add your working column for each answer in somewhere really good. I mean, I kind of give a heads up about how to do that in the last class, but yeah, I can just I can explain it again. See, imagine that. Is my paper visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so imagine that you're gonna do a composition in a box, that they're gonna give you the box size, and they might ask you to do some kind of design. And let it be a t-shirt design or a costume design per se, and you do your work, and they're going to give you concept, what motive that you have to follow, what concept, what should be your inspiration. They're going to give you a tagline if it is a t-shirt design. So what you have to do is you write a proper mind map, not on the paper, just a piece of paper extra that you can pin on the paper. Let it be an optional. Let it be an optional. If they are not allowing you to keep it with them, you just submit it separately. And I'll show you how to do the mind map for the proper design collection, or any design for that matter. If it is a mascot or a comic book or anything for that matter, you need to do the proper mind map. So you'll do the mind map. Mind map is basically nothing but whatever word that comes to your mind whenever you think about the concept. Let it be, if they're going to ask you about musics, you can write them in notations, musical notations. The design elements that comes to your mind as simple words or simple terms, you just write it down, whatever comes to your mind. Maybe an 8 to 9 words is good enough. About music, you said music topic. Yeah, music, yeah. A guitar, mic, yeah, music notes. Yeah, notations is there. So yeah, instruments, all the elements that come to your mind, you just write it down. And what else? Instruments, notations, the colors that represents music. Since we talk about color psychology, you can actually use color psychology in music also. It depends. If it is in different what kind of music that you're representing. If it is jazz, you might want to go for a vibrant color. If you're gonna go for a metallic music, you might want to go for the achromatic and metallic shades. You know what I mean. So color has an importance. Color has much importance, and you might want to specify what kind of music that you're going for as your motive and your inspiration. And then what else? Give me the mind map when it comes to music. Give me the elements that comes to your mind. Just write to your mind. Don't think too much over it. Just whatever comes to your mind when you think about music, except instruments, colors, or notations. Calmness, life, peace of mind. Music notes. So musical emotions, right? Emotions.
And notations and notes we already written. Okay, good enough actually. 5 elements, 4 or 5 elements is enough for such a small work. And then you will narrow it down. Cut short. What all elements are that are important? What all elements can be narrowed down? The next step will be the next step for the mind map, which is creating your mood or your vision. What all are the final elements or final vision of your work? So of course there will be elements of notations on print. Then instruments. I mean, give me one single word that includes all these things. That can be that can be under one umbrella. Sir, please repeat the question. I joined late, so I just missed the question. Yeah, I mean, question is not important actually. We are just, as an example, I'm just showing you how to give the background work for a design. So just a example for t-shirt designing, and your topic that they gave is music, and how to do the mind map for that and background work for that. So you just narrow it down. Maybe I'm going to completely focus on metal bands, because metal bands has all of these elements except notations. So you can I mean, whatever the final design is, I'm not going to show about the final design. I'm just going to show you how to narrow it down to a vision board from a mind map. About your final work, about your final idea. And okay, then, sir. Yeah, and then you do the rough sketch. Why rough sketch is important? Because in certain situations, your background sketch looks more beautiful than the final sketch. Background work is there might be not a lot of space for you to showcase all of your skills in certain questions. So you can actually use this rough sketch to show your all ideas, like in simple sketch, and make sure that you don't take more than 5 minutes or less. Sir, on the same sheet of examination or at any rough sheet? Pardon? Excuse me. So she's asking, we have to show our mind map in the same sheet where we're gonna draw not on a the same final sheet. drawing. Not on the same sheet. Never on the same sheet. A different sheet, and you will just clip that sheet to the answer sheet. But I mean, I don't know whether so far the online exam it is available. Offline exam, workspace is always mandatory. There's 2 pages. So sir, you mean we have to attach 2 sheets? Like one is the final drawing and one is for mind map. One whole paper of your final drawing and maybe the write-up of the paragraph, whatever it is, and one small sheet of paper of your mind map and your background work. That will be the better way to show it. And just use detachable paper clip, so that even if it is not even if they don't want it, you don't have to ruin your final work, even if they're not asking in an online test, because they are omitting a lot of such things in online tests that were not evaluated, that were evaluated differently in offline test. So this is actually one idea that you can show your evaluator that you have what it takes to be a designer. More than a person who just do a design just for the sake of getting into an industry, into a college. This is what makes you this is what is going to hit your answer differently to the evaluator. A proper mind map and a proper alignment to your final design, and proper explorations. And yeah, you give a final answer, whatever it is, you give a final answer and your final product. I mean, I'm not going to show you what to do on the final product, just an example, just to show you a template, how to approach with the proper mind map and proper background. Just whatever it is. That is one way to give an answer with a template. That, see,
There might be different kind of template, but I always says to my students that none of the Niftians or NIDians are expected to be a good follower. They're expected to be out of the box thinkers and designers. So you can go for your own innovative ideas and innovative way to show it. Rather than just following templates, you can give your own extra elements, add-ups. But always understand the difference between going overboard with your content and giving what is necessary. Is that part clear? Yeah, so that's clear. Yes, sir. Do you have any subjective doubts? Anything regarding comic strips or mascot or still life or elements of design? Anything like that? Storyboarding. Sir, mascot. Can you suggest how to name a mascot? Yes, sir. How Yes, to sir. name a mascot? Yeah. Well, yeah, that is very important. Whoever mentioned it, hats off, because people doesn't understand how much relevant a name of a mascot is. But then it is the 20% of the of mascot design is on its innovative and likable name, because the idea of a mascot is making the concept, or maybe the brand, whatever it is, more likable and relatable to the audience, making it more attached to their mind. So a beautiful name like what do I give an example? Vodafone Suzu, if you know about that. You know Suzu, Vodafone's mascot, Suzu. Yes, sir. Yeah, sir. Or Yes, sir. this Dolu the elephant. And Sir, Bholu. if you want, yeah, I do. I make that all the time. Ronak, thank you. Yeah, Ronak is the one who always corrects me with his name. Okay, how I'm was a your writer preparation, Ronak? also. Yeah, guilty. So how's your preparation going, guys? I'm sure Sir, it's all of you going too are. good. Sir, going awesome. Sir, I'm excuse sure me, you sir. know all of you are gonna. If everyone works hard, that is gonna show in the result. It's Sir, not but gonna be even an after this is a piece exams of cake. also, I will Pardon? like be in contact with you. Sir, even after exams also, I'll be in contact with you. Like how to Great to clear hear. NIFT. On that note, can I send you text on like 2 a.m. to disturb you to check my works? Yeah, sir. Because I wait Sir, actually, I throughout the send night you. and Yeah, send it sir. to Yeah. next. Okay, now you guys are giving me blushing, and I'm happy to hear all this. I mean, yeah, I really enjoy teaching you. I mean, you guys were gems. Sir, the teaching method is In one word. awesome. Yes, sir, we like our teaching style. Sir, Yeah, your sir, hair. seriously. Sir, I have a question. I mean, Yes, sir. sir, do you teach perspective? Do you want me to teach perspective? Then I'll. Sir, I just have a doubt. I was just drawing a perspective. I was just doing a perspective question. And that view me, I don't know how to draw a ceiling. How to draw a ceiling? Rat view me. Or from a rat's view, you don't know So, how sir, to. can you do a rat view for a college canteen? Okay, Sir, actually, this question Yes, just sir. Pooja ma'am took. That is oddly specific. Yeah, but But it's we good didn't to get learn it well, more. now. But, It's good to Yeah. learn more. Yeah, but exactly. we should cover the topic right Yeah, now. I mean, when it comes No, to this but we should clear our points now. Just wait a minute, students. Please, one by one topic Ashish sir will take and resolve your problems. Right, sir? Thank you, ma'am. Yeah, so please mention your topics in chat. Okay, ma'am. See, I will give you the basic things that you should keep in mind when it comes to perspective. But you know, it is always good to understand the subjective ideas of different people. You know, when you, I mean, that question was oddly specific. You know, rat's eye view. Is there a previous year question paper or something? Mock test. Cool.
Yeah, Sir, I I was had a doubt. checking one of your. All right. Sir, while making a mascot for something, is it really important to name it or write description about it? It is really important to name it actually. And when it comes to mascot, you don't have to write a long paragraph as the explanation. You can do it as bullet points because mascot, if they don't ask you to give a paragraph, you can give small bullet points about the costume, about the color scheme, about how you end up creating this name as you create like you create a specification board. If you have seen the specification board of certain technology, like mobile specification board, spec sheet, or a car spec sheet, you know how to give proper aligned bullet points as the final product explanation. So, sir, If I you read want a me, I can question give. about Incredible India mascot. So, can we choose peacock for that? Yeah, such questions you can really go for incredible such official animal or official bird or national bird of national animal. You know the difference between official animals and different. There are different animals or different assigned creatures for different areas. Aware about that. So one more thing. You know what is the official bird of India? Peacock. Maybe sir, official peacock. That is my national bird. Peacock is national bird. So what is the difference between Hello. national and official? It is an official bird. Audyogiga Pakshi. Is it kingfisher? Pardon? Is it? She's I don't saying know. kingfisher. You can search and send me. I mean, I always accept diversities of answers, but if I get one proper answer, because it is not very difficult to find answers nowadays. सर वो पेज दिखा देंगे जिस पे आपने ड्राइंग बनाई थी क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू हो गया. No, you are not audible, my child. Saroj. Hello. Kumari. Hello. सर speak loud? ऑफिशियल speak बर्ड louder? में पीकॉक दिखा रहा है. Wow, this is actually hornet. National bird is peacock. Official bird Indian is different. peacock. Official animal is also different. National heritage animal is elephant. And Yeah, aquatic just go through different kind of national. When you come to such a question, being aware about that area will help a lot. One student was asking me how to give a mascot about khadi. I just before like 30 minutes I just talk about like you can actually even if it is not related to the subject, if it is related to the Indian iconic and Indian heritage, you can go for the mascot. Khadi, it is better not to take the khadi wheel and create a mascot, or you can go to a likable. So that bird. was make in India, not khadi. The topic was made in India. Make in India. Oh, it's about cat. It's about everything that is made in India, huh? Sorry, can you repeat? Is it about everything that makes in India? So can we use tiger as a mascot for making it? Make in India. Make in India. I The official one is lion. See, if you go for make in India, it will be better if you just create a funny cartoonic image. Maybe you can go for a coconut and create it into a mascot. It will be more likable and makes more sense if you know how much Indian cluster development programs are supporting COIR and its development, COIR development. Something like that, something that is relevant, something that is likable, something that is cartoonic. I mean, lion is already taken for many things in it. Lion and tiger, all those things is taken for many areas already. Hello. So sir, what about monkey? Because they are very creative. So make in India, it will be relatable, right? What about? It is relatable, but what is the relevance of monkey? Like, just go through the relevance of monkey. Like, So what about a mascot with Gandhiji specs? you can try that, but never doesn't. Always try not to make it obscene. Like, doesn't they should not offend
any of the one who's gonna read a question paper, this shouldn't affect you. What if it is a Gandhian, proper Gandhian who doesn't really like people trying stuff on Gandhi? I mean, you can actually try Gandhi glass and Gandhi pictogram for if it is a mascot about Swachh Bharat, because Swachh Bharat is assigned that pictogram is the Swachh Bharat mission's pictogram, if you know about it. Hello. Okay, sir. Yes. Yeah. Try not to offend your invigilator. Like, try to be likable. Sometimes we just need to know the tricks to be likable. What can be a mascot for e-commerce revolution? Pardon? What can be the mascot for e-commerce revolution? E-commerce. So just think about the mind map. Whatever comes under e-commerce. What all are the internet sources or internet spaces that is used for e-commerce, and whether it is a good idea to make an animal that is not at all relevant to it, or whether it is a good idea, whether it is it better to choose it's something related to technology, something that is not alive and making it into likable alive character. There's a lot of things that you can use for that. Maybe a screen, or maybe obviously you can't create a mascot out of a website, but you can of course create a mascot out of a computer, maybe, or anything that shows the technology as it is, the raw side of technology. And likable colors, that is, thank you. Likable colors is the main side. So when it comes to such topics or mascot design as it is, sometimes you might want to go to the likability of the audience more than expressing your idea to its fullest, making it into a proper minimalistic idea. You might have extreme abstractive ideas inside your head, but you might want to think through the mind of a Peter Pan or a child to make the mascot more likable and more not less, just right amount of creativity, a good amount of likability. That is the perfect ratio to explain about a mascot. And how to name one? How to name one? Yeah, that's where the conversation started. This is very Pardon? confusing. This thing is very confusing. That's why. Yeah, naming the mascot. What was confusing for you? How to name one? Hello? Deciding or Yeah, thinking of something. Yeah, I just explained about Dolu, or there is a common example that I used, like Tokyo Olympics mascot, like Miratova and Somati. Yeah, Ronak, I remember this time. Yeah, I remember, at least I remember something this time. Yeah, I always messed up with these names. But I mean, the reason why they took Miratova is, Miratova means it mix up of two words, which means future and eternity, which also means the future is in eternity. Not a beautiful way to create a mascot, and it is something that represents a nation. So it should be relevant, and it should be sensible. And Somti is the official, national flower of the Tokyo. No, Tokyo, right, Ronak? Yes, sir. Hello. Yeah. Yes. Tokyo. Yeah. National flower of Tokyo. Just naming. We just understand which topic needs to be named with the relevance with the proper relevance. I mean, if they're asking you to go for a FIFA World Cup, Olympics, or anything that represents a nation or represents a proper brand, you might really want to go for a proper naming. I mean, Suzu is such a silly name. It just Vodafone Suzu I'm talking about, or this Dolu, or any of these just simple words that are just for the fact that they're likable, they name them. But when it comes to a mascot that really represents a strong
strong side or a strong cause, you might want to go for a sensible, proper name. Like ICICI Bank's mascot, that is Chintamani. Chintamani means a gem that will give you whatever you decide, wishes. A perfect name for a bank's mascot. If you think about that, in that way, you should know how which is relevant, which should be relevant, and which should be just silly. You understand that? Sir, according to you, what can be the good names for a mascot for Incredible India or Make in India? Give me the elements that you have in your mind. Just I'm walk me thinking through of your mind making a map. peacock. Like for a peacock, what can be the good names? Tell me more about your peacock first. Sir, can you suggest the name for mine one, that the khadi one I sent you? That's not khadi, but still. I mean, it looks more like it shows more about khadi. No offense. So anyone who see that, I made that scroll representing all the emerging industries. That's what I made that scroll. I'm not saying it's bad. It's good. I'm just saying it shows khadi. It's just predominantly talking about more like khadi because it has charka. Yes. And the costume was made out of khadi. So I mean, normally a person who doesn't really know the topic might judge out like that. That's all. Doesn't mean your mascot was bad. So can you suggest a name for It that? was a good mascot. Let me just see your paper once again so that I can. I mean, it's such a. It is making in India, right? Yes, sir. What was it? What was it topic for that? Let me properly go through a mascot and create your try to help you with the name. So yeah, you have a flyer that includes all the elements or pictogram representations of Make in India. Good. And emerging industries are there. And there's a turban. Why do you go for a turban? It shows the tradition of India. So when you go for such a costume, what will be the first thing that you should keep in mind when you choose a name? It should be maybe in Hindi or some regional language. Regional language, yeah. Because it's basically to cater the local audience. Sure. So that should be it should be about regional language. And what is the animal that did you try to show a mouse? No, that's not an animal. I just made a face out of a charkha. I don't know, just the shape really says more like a mouse. But yeah, I mean, who am I to judge anyway? So just tell me more elements of it. There is spinning wheel, there is khadi cloths, emerging industries, there's a turban. So just it's always safer to go make your name according to your mascot's costume and appearance. Just think about regional names that is attractive to the people who are natives. Just give me some names that are Sikh, like just some people. Just give me just certain names that you're already familiar with. I'm not from North, so I can't just completely give my own judgments about this. What do you call someone who takes initiatives? Someone who takes initiatives. Come on, North Indian people who are familiar with the topics, please. I'm a Malu. I mean, I have limitations in having the knowledge about such a topic. I mean, being sick or talking more about the regional heritage of India in that area. So just give me just throw out some names. Hello. Students, please reply. Yes, sir. Yeah, whatever you know, just tell me. I mean, as I always say, there is no right and wrong when it comes to design.
So for mascots, either than using animals or creating a character, we can also take the product, right? I don't get you. The question was not Okay, actually clear. so what I'm trying to say is mascots बनाने के लिए we either use animals and we make up characters to promote the brand. So I'm saying that we can also take the product and उसमें थोड़े maybe changes करके we can make a character out of it. You can actually. If you have seen certain advertisements of Red Bull, you could see the Red Bull can is the mascot of them. As the Red Bull can is the character. Yeah. I mean, you can go precise to the point and just show whatever it is necessary. And I mean, if you're confident about creating the proper products, I mean, what if they just ask you about maybe what if they ask you to create a mascot for lace? Are you able to create a proper lace packet with a complete proper template? I mean we can try. Hello? Am I audible? Yeah, tell me. Yeah, I'm saying you mean replicating the exact packet? Yeah, I'm saying, I'm just giving you an example how to choose, how to properly give the product that is safer when it comes to creating an answer, whether you should choose the lace packet or a chips, lace chips. Yeah. Well, which one is safer to create a mascot when you choose the product? That's what I'm saying. I think the packet is safer. Packet is safer. No, sir, the product is safer. Because when it comes to the lace packet, there are. So you are asking what should mascot be? Okay, then just wipe out all those things. I will just tell you what I create. I will just tell you there are three basic fundamentals of mascot design. Okay, just basic three things that you should keep in mind when you design a mascot. Okay. Yes, sir. Yeah. So just you should know that whenever you create a mascot, the first thing being it should show the feel of the company. Any kind of mascot, it should be either related to the company or should show the feel of the company. I mean, how to relate to the company and how to show the feel of the company. So it is quite confusing, but I will explain it to you. I will cut short it to you. Just sometimes the company sometimes when you for example, Pillsbury mascot, which is quite a cliche example, but then when you look at the mascot, it is very brilliant. It is made out of a cooking dough, and it looks delicious and extremely likable, and yes, pure white color. Shows that it is made out of a food item. That is one way you can relate to the company. Or the other way is you just like that you make a mind map. What all are the basic points that makes that company as it is, or the topic as it is, whether it is a silly company, whether it is a cartoonic, whether the company admires cartoonic and immature and fun comic way of stuffs. You can choose the mascot like that too, showing the feel of the company. To understand whether the company whether to choose a serious one or a silly one. If you've seen the mascot of Excite Battery, it is a bunny, a Yes, pink color sir. bunny. Pink Yeah. color bunny. That bunny says a lot because bunnies are the one creature that is fast. About in the reproduction is like a madman. The stamina is just a perfect mascot for a battery, and that is more relevant than a cheetah. Cheetah is also smart. There are different animals that you can show for stamina and fast. You can go for a parenti monitor lizard or a cheetah, but why they go for a bunny? Whether it is because bunny is energetic. It doesn't really get tired easily. Bunny is energetic. Yeah. Also, bunny is silly. Battery is not that a beeswax business that you
have to be, you have to put your head inside and it's a serious deal or anything like that. Battery, and they wanted to make it to be likable. It shows the fun and silly element of it also. So two things that is like the meaning of the product and the feel of the company. How to judge that? That's what I'm saying. Whether you should go for a serious fun or a silly one. I mean, cheetah is a pretty serious mascot. And Yes, how sir. would it look like when you create an advertisement for a Excite battery who's wearing a cheetah with cheetah wearing a Very battery on serious. its backside? Yeah, it's just not as likable. Doesn't work like that for a 10 rupee battery that is quite popular. Now you understand how to judge out the feel of the company. Yeah. Yes, sir. Sir, can you explain how to solve metamorphosis question, because it is very difficult to solve for me, at least. Can we just finish this topic and then I'll come. Sure, sure. Talk about your chop. Asta, just put a pin in that and ask me right after I finish the topic. Okay, Asta. All right. The next point is the costume. How to do a costume for the mascot. I mean, as I mentioned about Chintamani, the ICICI Bank mascot is wearing a representative, typical office representative costume, and though To the elephant. identify with the job or the main thing. Yeah, just the costume should be relevant, and if you just think about it, there are a Color lot are of like Color choice. color yes, palette should be colors. very important, very important. Just Like like when you create a like if logo, we are you should making also. just like Hello? butter, Amul butter Just like you're designing mascot. logo, just like you're Yeah. designing a logo, you follow the same color palette of the company. You should follow the same color palette for the mascot too. That's all. Yeah, Amul butter, the Amul girl, utterly butterly Amul girl, and one of I mean, Boomer, pardon? boomer, chewing gum, that Boomer, blue yeah, man. yeah, boomer. Yes. And okay, I will give another example. I will give one more example to show how to feel the company. Have you seen the not Kajaria tiles, Ambuja cement mascot? Yeah. That Yes. strong man with Yes, muscular Strong sir. arms. Yeah, that muscle bodybuilding. man. Yeah, how The relevant McDonald's. could be to show a company's. But Boomer's mascot also muscular man, right? Pardon? Boomer's No, mascot is also it's a muscular. chewing. Boomer's mascot is About the a color. superhero. A superhero, muscular man, a man who is holding a dam with his strength, is quite serious than a boomer man who flies around and with his cape. You know, if a person has muscles doesn't mean that they show us a certain Yes, sir. similar idea or concept from the. You understand that? Yes, sir. Yeah. Boomer man is wearing a blue jumpsuit. He is stretchable. He is just everything that is funny for a muscular guy. It's not about how much muscle that guy has. The characters and the subtlety of the design. How efficiently you are able to explain it. I mean, depict it. Is that clear? Yes, sir. Yeah. Second point being costume and colors. Third point is the common question, the naming the mascot. A very underrated side, but then very relevant side. I must say, 20% of my mascot's design brilliance is on naming it. Never ever forget to name your mascot. Even if your mascot is not your best work, just name it and give whatever necessary. Just write the point. Just show your design development. Show your point and relevance of the particular design. Yeah, that's all. What if we just go for an example? You know, do you guys want an example? Yes, sir.
Let's take a random Excuse me, topic. sir. Yes. Please take a topic typography also. Typography. It's asking on YouTube. Not a real expert in that, but I'll do what I'll say what I know. That will be the typography of font creation. You know, is that what you're asking? Creating the font, ma'am? Yeah. Oh yeah, actually I will just share you whatever I know right after I talk about Mascot. If you're completely out of your question, like completely out of your doubts, we'll go for the next topic, or we will go for an example, like Artline or Camelin. We'll just go take a company random and we'll try to make a mascot for that. Yes. Yes, sir. We'll just go for the camel. I mean, for sure, camel. What mascot should we take for camel? For the company camel, what mascot should we take? For camels. Camel, yeah. It just you don't think over it too much, because sometimes when you think too much can really ruin your design subtlety and necessity of That camel carrying pencils. Pardon? So a cartoonistic camel painting or Cartoonistic sketching camel. something. Yeah, I will just try. I don't know how hard it's going to happen, but we will try. I'll just don't look at the. Yeah, I'll try. I'm just gonna not. A cartoonic camel with the googly eyes, probably. I forgot how the ears was a camel. Let me just Google the image of a camel. You guys excuse for that. Yeah. So now let somebody give me about the costume. So what was the topic? Sir, Just random topic. We are talking about how to make a mascot for the camel with the one company brand we all are familiar with. Being designed. sir, it may be a school uniform or Should it be a school uniform? We are not about making the mascot for NCRT or anything that is related to school. Let's not scare children like ever again. Let's just go for something So we artistic. can draw a camel and put all the pencils on its back. What if we give the camel an apron, an artist apron, a classic, aprons that we cook, where when Yes, we yes. cook and paint, with the pocket that has all the brushes and elements that remains you as remains of an artist. Nothing really difficult. Just a normal way to show the apron and the folds of the dresses of its dress. No, not too scary for the school kids by seeing a camel in school uniform, remaining that their art equipments are just for schools. If we give a little bit of hair, it's all your imagination. If you want to give him a cooling glass, I mean a glass also, it is okay. It's just all up to you. Make him look more like an artistic look. And then the hands, I mean hands and legs. Okay, just one thing when it comes to creating a mascot is if you want to make a mascot more likable and more childish,
give it a skinny hand. And if you want the mascot to be more strong and show the company's strength, you might want to go for a very strong arms. Is that idea? You know, Yes, sir. making Yes, sir. the mascot more likable to the audience is tend to be, you know, a skinny, powerless arms or a chicken leg tend to be more likable to the mass audience than voluptuous, strong person's body generally. And yeah, that's all. That will be all. And if you want to give the camel legs, if you want to give that, or if you want to give a shoes, you can give that. It's all up to the person's imagination. It's a very simple one. You don't just go over and over it and create your mind into a cathartic side that you can never access in between the exam. You know, just finish that work in like what, 8 minutes to be precise. Got it? Yes, sir. Yes, sir. And you might want to Yes, name sir. the camel. And now the last part, naming the camel. Look at this camel and give me think about a name. You know, which is just a camel company. I mean, Artline company. You don't have to go over and over again create a name. You can just go for names like Artie or what? Sir, artsy. Heartsy or maybe The old artist. you know what is Kokuyo? It's a sub brand of camel. Pardon? Mate. Yeah, mate is a good name. It has a clear selling point. You know, make the name look more friendly to the audience. A name that is more friendly and more attached to the audience. Mate is a cliche name. I'm just giving you that as an example. You can go for any names, in any language. That is up to you. Mate or matey. No, matey is there. You get that? You made a mascot in like 8 or 10 minutes with the name and whatever necessary and elements. Maybe when you're doing the mascot in officially, make sure that your aprons and all those things clearly shows that the camel is an artist. No? And maybe some spill of your different colors. Just make the mess with more colors. Yeah. So is that side clear to you? Yes, sir. Yeah. So yeah, that's all about mascot, I guess. Somebody was asking about metamorphosis, and Matt told us to talk about typography, right? Or creating your own font. If they ask you to create a font that shows yourself, you might want to go for the same step, your mind map. The mind map that is talk about the elements that you have to pick that speaks about you. Like, okay, I'll show it on the paper. Such that one. See, whenever you create this typography, the only thing that you should follow more than anything is like, regardless how much messy your your calligraphy is, you should always understand that typography or creating a font needs consistency. If you're writing a name, per se, my name, Ashish. Huh? This is my spelling. It has yes, 2sh. And what is a font or a typography? It's just creating letters. So this yes should be the same as the next yes. It should be like, you create a font A, B, C, a completely different kind of font of letters, and the repetition of the letters should also show the consistency of your work. Or
rhythm of the work. You understand that? Yes, sir. Yeah, that's how you should. One thing that you should keep in mind before you start the work, because one thing that is important is you should understand what is a font, whether it is type Penguin or Times New Roman or I forgot font names, but yeah, any kind of fonts. It's not creating calligraphy, or it's not creating the graffiti work where each letters are different. It's like each letter should be repeating, and it should look like a font more than it is a beautiful calligraphy. So let's just do a more small mind map. Things that talk about Ronak, give me things that talks about you. Yes, sir. Sorry, sir. Yeah, give me a mind map. If you're gonna create a font, what are the elements that you have to follow on mind map? Just 5 words that describes about you. Sir, happiness. Okay. If we create subjective topics like Confident. that precise to the, yeah, I mean, it's better not to go such difficult mind map. Confidence. How you going to pictorial represent confidence? Maybe you go for simple your likes, like music, arts, or Yes, sir. movies. Which has a lot of pictograms that you can pick to your font. If you show confidence, if you talk about confidence, you might have to, you know, roll over it as a paradox while you're writing the exams, and how to show confidence. Just Sir, give we me can anything. include balloon type of typography. Like Pardon? balloons are more confident. Balloons are confident. No, happy. Balloon show happiness. Balloon shows happiness. Yeah, I mean, happiness is okay. Happy, you can show happiness by your colors, your color choices, anything that you go for. Happiness is also something that you can be shown by anything. But I'm They so show sorry. sensitiveness. Pardon? Sensitive. Okay, sensitive, fragility. Ronak, are you that sensitive? Huh? No, Aren't we sir. strong? Yeah. Never ever let anyone judge you. Yeah. Yes, sir. Yeah. Now you tell me about your mind map. Art. Yes, I mean, sir. yeah, art. So element of art should be there. And what are you into music? Yes, sir. Little bit in Yeah, traditional music. music. Because why I'm saying music is when it comes to creating a font, music is gonna help a lot, because if you're gonna create an yes, you can really give a musical notation, and it is cliche, but it works. Or if you want to create an M, this is just clearly the topics that is precise to the design ideas. That is going to help you a lot when it comes to mind mapping. Okay, then next one. Food. Food, yeah, food. Ambitious. Food. Let me this is enough. Okay. Then now we'll just to cut short the words. I mean, art and happiness can Sir, can be on active. can be under. Pardon? Active. Yeah, I mean, Sir, like actions दिखा सकते हैं. pardon? Sir, we can show actions in our typography. We can show, according to the principles of design. If you when you understand rhythm and movement, you can actually give actions in a typography, like a continuous movement. Let it be Y has a lengthy underscore, like the entire. If it is May, a movement that goes continuously sometimes seems like a lot much, but sometimes seems like a good idea. Just always on up to the topic or your concept. Is that what you meant, Ronak, or Yes. anything else? Yeah, just extension of the work. And yeah, that is, I mean, you don't have to go dig deeper to that. We will just precise to the topic and just show you how to create typography according to my observations and my own studies. And yeah, when I say my own studies, you should keep in mind that
Okay, I will say that. See, you are going to be a designer on the first place. Yeah, for creating a font, making a poster, making a logo, whatever it is, you shouldn't be a one who follows templates. You should be the one who follows your observation and your own analytical skill. Being a designer, the main point is your observation and how you analyze it, how you evaluate it, and being a critical thinker. So when you, I mean, a few days back when I was talking about um, stamp design, one of my students were like, distinctly remember she just told me that her price should be on certain area. So what I did was I went to my research. I mean, whether she is right, whether I am wrong, we don't know. It just up to the moment. So I went to my own research and I took most of the important Indian stamps and I saw price anywhere possibly, price all around the place. There is no such thing called keeping price at some point. But then you should have the liberation to put the price in the right place, and that only comes by observing and going through different works and different published stamps and different famous. I mean, you should be your own evaluators and you should be your own designer. You shouldn't be a follower. They are not looking for followers. They are looking for designers who can create, not obey. Yes, sir. Yeah. So yeah, again, this that's why I'm saying these are my own observations and my own analyzations. So we'll just directly jump into the way I did it. Let's say, what is the spelling, Ronak? Sir, RAUNAK. Okay. And Ronak Rai, right? Yes, sir. Rai. RAI. Aishwarya Rai. Oh, Cousin is sweet. Well, okay, let's just try creating a font. Okay. So think about the element that we had in mind: happiness, art, music, food. Clearly, for R, for the first letter R, what element can we choose? Choose from this. Hmm? Hello. I need Yes, your sir. ideas to be involved as the input, not mine. The mascot, everything that we are giving example is from your own idea, your own mind map. It's not just mine. So say that how can we show the element of or Sir, element of happiness, art, music, food, any of these elements or everything together. How can we show that on R? sir, R can be converted into paintbrush. That straight line of R. Yep, that is true. So yeah, R can be converted into paintbrush, and we'll just draw a rough idea of that. R as a paintbrush, and then the extension of it, maybe, or you wanna do We can make more color palette. Yeah, good idea. Really good idea. You can just make it into a color palette. 1 second, let me get an eraser. Yeah, lucky. I don't have an eraser. So yeah, we can make a color palette. Yes, and sir. yeah, so R. So if you're creating an R in here and see you one, and maybe in here you might want to give a pencil. I mean, yeah, that is to me it is too much of it as a design. Sir, ये R बहुत over हो जाएगा. Yeah, that's what I'm saying. To me it's too much. So understand the difference between, what I said, extreme and avant-garde style, or where to give a full stop on your design. Just understand the equilibrium point. That's all. Maybe just this simple line is enough in here. That is completely black.
A universal law of design is always less is more. And since your 1R is this, what about his second name? Second names R is going to be the same as I told before. You understand that? Yes, sir. Yeah, the repetition of a font. Like palette. Actually, that is a good logo for a person that is some kind of relation with R. And what about your A? You're talking about balloons or anything that Sir, anything rainbow, related to music, food, happiness, art, shows happiness, rainbow. So how can we make a rainbow on as an A? Semicircle rainbow. Pardon? See, there is upper caps and lower caps, and in lower caps, A will be something like this, right? Okay, I'm saying about name? like in capital letter. Yeah, but when it comes to a name, the first letter will be caps, and the rest letter will be lower caps. That is the basic understanding of font, right? Do I have to start from there? Huh? Guys? I don't think that's necessary. Pardon? Pardon? I don't think that's necessary. I mean the basics. This is just that is too basic to explain. Yeah. Yeah, to be in here. So yeah, the first letter will be upper caps, and yeah, let's just add elements in A. How can we show this A with art, music, or anything? Sir, we can take the shape of pasta and we can write A because there in mind map you wrote food as well. Can you give me for instance, like can you give me a small sketching, a small sketching, precise to the point. What is your idea is? Sir, how can I show on because I'm on using laptop right now. Okay. Do you have a webcam? Sir. Pardon? Yes, sir. Yeah, I would really love to see your idea then. I mean, just show it off. Come on. Sir, but it will take few minutes. Okay, then you work on your A, and I will just continue with the next letter U, which seems certainly easier to create a font. So, Ronak, your third letter is U, right? Maybe a smile. So yeah, maybe this side. Pardon? Hello. A smile. Yeah, maybe a beautiful smile, but with a U, it always looks like a creepy smile, to be honest. But yeah. Or maybe Second just. letter will be A. Pardon? R-A-U. Yeah, I mean, she's working on the A. Whoever gave it a pasta idea. You can use as a tongue. Pardon? We can use tongue as a U, no? Yeah, I mean, we already said that they wanted smiley. Sir, it will look more funny. Yeah. See, what's So the that's whole point? You know, it can be funny. You know, you can show yourself as funny and comic, and you don't always necessarily have to be the serious designer. You can just make a smile in your individual head, mind. It is all right. It is all right to Yes, have a sir. funny, funny, funny font.
Yeah. So yeah. So what about that? You're saying you as this with a creepy smile and a tongue. Somebody said there should be a tongue. So yeah, tongue and the nice. I'm so sorry, Ronak. Yeah. Yes, Hari sir. Yeah, it's fine. I mean, at least you're getting privileged to be the model of our font. I'm leaving the space for A, whoever is designing it, and then I'm gonna do the and then the tongue and NAT, right? Next one is NAT. NAK. NAK. Oh, sorry, NAK. And NAK. What about Yen? Can we The just go for music the same notation. pasta? Pardon? The musical notation. Somebody was saying something. The musical notation for So N. Yeah, maybe we can do something like this, right? Or is that what you meant? Hello? Somebody told about your musical notations. Is that what you meant? Is that what you meant? Musical notations. I mean, there is like for there is this. This is what I meant. Somewhat. Okay, so yeah, we can use that. So again, yeah, musical notation. Again, there is a lots and lots of elements that is in this work. In this work, I mean, I don't want. I'm just giving this as an example. Just minimalize your elements. Don't give a lots of elements and make your invigilator go nuts with it. Sir, in Yan, we can also show a trolley bag, na? If we are like, if we like tourism and traveler. Like, can I show? Hello, sir. You can make it as a trolley bag, but he doesn't have traveling at art, music, food. There is no traveling in here. I don't think Ronak is a traveling kind of person. Yes, sir. Yeah. So I'm done. Do we have to complicate the design right at this point, at this 11th minute? Ronak, adding Sir, more अगर हम elements सारे to your letters mind में map? कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो it will look. Yeah, there is somebody who got an idea with pasta. Okay. Like sophisticating in So word. what do you think about that, Ronak? सर अगर हम सारे लेटर्स में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो ये बहुत ओवर हो जाएगा ना. Yeah, that's what I'm saying. You should have I'm just giving the extreme example, you know. It's not always okay. I showed an example last very day kiddish of type. my. I think you're quite upset. No, sir. No, sir. There is nothing like this, sir. Oh, sweet. See, I will just show a font that I made last day for an example, so that if this timing is not gonna take, I will just see. This is a somewhat some kind of font that I mean, do not make this much liney and messy. We were just doing essay as an example, and it was Ashish, ASH, and it's looking very mature. Mind map. Ronak. Sir, sachi. Ronak, I think you are so upset about being your font being childish. No, sir. Yeah, Why don't he's you just take a moment break and go cry for it? Cry over it. Ronak, Sir, you just give me a tongue and all and don't know what.
Sir, you want It's to because be there was a lot of mature. ideas. It's not about you. There was ideas and there was people putting their inputs. But I just got to say Don't be that upset. that font speaks a lot. Yeah, I mean, don't be upset. I mean, if you want, you can take a 2 minutes break and go cry about it. I mean, No, sir. So please, can you cover metamorphosis? Please. We will. We'll just finish the sign up and then we'll go. Okay. Sure. I'll just show the example. Yeah, with my matured font. Okay. Yes, sir. See, yeah, my matured font has certain mind maps that are set, psychedelics, which talks certainly about my personality, metal band, books, art, and that's it. Yeah, books, art, metal bands, psychedelic arts. So I took my next element as pentagram. If you're familiar with pentagram, a symbolical representation of a star that shows 5 elements. All in all. So yeah, we students discussed and made a pentagram inspired a yes that doesn't necessarily have to be an explanation, just looks like a circle as it is, and a H that almost looks like a book, and this middle line or the tying up line makes it into an H. And in here I clearly omit the fact that it should be lower caps, because for the integrity of the design this should have been there, showing it into a book. And I's dot is a pentagram in Sir. here. Okay. So do we have to design all alphabet? No. The one which they are asking you to do, and that is probably going to be your name, and that's what the chronological order says. But what I say is, see, the yes should Like be there's as a same as the question, next. designer typography of a name. So do we have to design Yeah. all alphabet of a name? See, we have been designing names. Have you seen me going for all the alphabets for designing the name? How many letters are there in a name on the max? 6, 7? Yes. Yeah. My name has basically 5 letters, and basically I mean that day itself we made three designs, which is A, S, S, H, and the repetition of SH and I. And the I is dot, and for that also we had a good enough example about the typography of NIFT's logo and its bindi, and that discussion went to into a whole different level. If you remember that class, Nandini. Yes, sir. So yes, see, sir. yes, and then the H again, the H that shows the book. So the repetition of the pattern. See, whatever messy I am, I'm just showing you the concept. When you're creating a font by your own, your lining should be right and it should be neat. I just simply draw and show the example in the last class. And I'm not gonna finish the Ronak and make that poor Ronak upset more than he is already. Ronak, what happened? Are you Happy crying? Ronak? No, sir. He's- अरे why? He's क्यों not रोऊंगा saying मैं? Yeah, you are not saying these are anything, the situations even I a single miss. word. मैं बस ये देख रहा हूँ कि एक He's रौनक just से so कितने upset that रौनक my बन font गए. is mature. Ronak, see, when you create your own typography, you make it into a stunt master, maybe WWF, Yes, sir, and a and show mature whatever type the of. fantasy that you have. Don't tear anyone. Yeah, make it mature. Yes. And then take it mature 5 times again and again, so that people will believe that you're mature. Okay, sir. How about that? Let's move on to metamorphosis then. The metamorphosis is what you, the one who asked about metamorphosis? Asta, right? Asta?
Asta. There's more than one Asta in this class, so that was not me. Pardon? She left, I think. She left. Okay. See, I will just give you the basic examples about metamorphosis. Then, what do you guys know about metamorphosis? What's the meaning of? It's a barking sound coming very Somebody's, loudly. somebody's audio is on. Somebody's audio is on. Vishal. And I can hear a barking. Yeah. So metamorphosis. What do you know about metamorphosis? Please tell me whatever you know about metamorphosis. So the process of cocoon to butterfly. Transformation of one thing to another. Yes, a Yeah. transformation. Transformation or a change from one thing to another. That naturally happens in nature, but then man-made changes also, like plastic surgery human beings, for example. That's just one. Maybe the transformation of a caterpillar to butterfly. That is a metamorphosis, right? Or the simple example for a metamorphosis. So what if I ask you to show the transformation of what to say? Up. Somebody give me an example. I'm just out of examples. Come on. Like converting a fist into a man with a brain. Like Converting a fish into a man with brain. fist, fist. Fist. Not fist. Fist. Yeah. Yeah. And this finger shows the Like brain. not converting into a man's brain. You mean like, the fist that I am, your hand's fist? Yes, sir. Okay. So converting a fist into A bird a into a man's flower. brain. So बढ़िया है बस चल रहा है ये सारी क्लास चला रही है आज there's some kind of voice disturbance going Or on. a chair into a And whoever giraffe. is doing that, I would really appreciate if you don't do it again. I mean, whose audio is on? All right. I don't know, so let's sir. say, okay, let's just say we're converting a fist to a human brain, right? So let's just imagine that process inside our head, how a fist could transform to a human brain, because a human brain as it is already looks like a collection of fists, like fingers and these areas. If you've seen the human brains, it's basically already looks like a collection of a lot of A fists chair already. into a giraffe. Pardon? A chair into a giraffe. Nice one. What did she say? I didn't hear anything. She said chair into a giraffe, and I said nice one. Okay, she said chair into giraffe. So okay, we just okay, just choose either one of them. We don't have time to do both. So choose between. From between which two things we have to choose? Chair into a giraffe makes sense. A fist into a brain also makes sense. It's up to you now. Hello. What happened? Why everyone goes silent? So I didn't get it. See, we can choose either one of them and just try to do it right now. Just as a rough work. Sir, a pencil into snake. Okay, let's take a pencil into a snake now. Yeah. Yeah.
When we have two subjects that are conflict, it is better to go with the third one. So there will be stages. Like if a tadpole that turns into a frog, it has a stage of the tadpole stage, and then the stage when he started growing its legs, and still keeps it. See, I will just show you the transformation of a tadpole. And when the tadpole transforms, it will still have its tail, but it starts growing its legs. And then later it has a pinch of its, almost completely grown frog will have a pinch of its tail. And then later the guy, the frog as it is out. I'm just showing you a like full figure of a frog just because we started it. So this is the 4-stage transformation of a tadpole to a frog. And the idea of transformation is the evolution of this to this to this, not a tadpole that is like directly looks like a cartoonic frog. So each picture should have connection towards each other. It should look like first one transformed to second one, and second one to third one, and the next one should be. Sorry, I can't recall a frog, so I'll just try. Yeah, the connection with the elements should be overlapping. The first picture's element should overlap the second one, also should have the elements for the third one. You get that? First one has taken its tail to the next level, but also grown its legs. Okay, let's just follow this same method to show up a transformation of a pen or a pencil or anything to a snake. The first wing. Actually, I don't think this is a good idea. We'll take an ink pen that looks more like a snake, to be honest. You know the ink pen, Parker pens that already has a snake type of a face. Yes, sir. Fountain pens. Pardon? Sir, fountain pens. Yeah, fountain pens. Thank you, Ronak. Yeah. So fountain pen, and we will just transform it into a snake. Okay. So for the next graph, we'll show it by 4 diagrams. For the next diagram, what will be the element that is going to change from a pen to a transformation of a snake. Just imagine itself. It will have maybe scales on the next diagram. You know, a snake scales. See, are you able to follow me? Yes, sir. Yeah. So just choose the element that you wanted to omit from the first picture and select the elements that you have to add on the second picture. You know, there will be a certain percentage of elements will be reduced from here. When you go for the next level, you can clearly reduce this midline and give a continuous body and just a continuous body with a scale and keeping the same head. There will be, as I said, there will be elements that are overlapping, but elements that are overlapping in a very brilliant way. Maybe on the second one, the pen got a little bit skinnier and a little bit taller. And the second one has scales.
Is it clear to you guys how I'm doing the work? Yes, sir. Yes, Huh? sir. Yeah. So do a rough sketch before it as your mind map. Instead of doing the mind map, metamorphosis is like you can do a rough drawing and your mind map together just as one. You don't have to write it down and just do that. Just go for the design as a rough drawing. Simple small one. And then the third picture. What are the elements that is going to repeat? The scale and the body, and what will be the Yeah, change? curvy body. Yeah, body will be more curvaceous, and the head of the snake will be more started to become more obvious, and where we can give the mouth. Since there is a clear cut in between here, we don't have to look a lot about it. We just can make this as the mouth, this as the head, and continue the scales all around the body. Okay, you try now. Not entirely. You're not gonna completely make it. Since we decided it's gonna be 4 parts, we are gonna do it as 4 parts. So we'll just try to. Then in the next one, the face will be more open. And the body will be quite more, not exactly curvaceous, just a little bit more. Like the snake is starting to bend and starting to understand that it is alive and it has a body. Just imagine this situation inside your head. And the tails will be more sharper, and the pattern will be continuous. And we are not going to give the eyes now. We need to see you. Actually, we can make a beautiful cobra out of it instead of a python that has a separable one. We can make a beautiful cobra. So I have one more topic to discuss after this one. Yeah, we will discuss that. Let's just finish one topic and from there we will go to the other. Okay. Okay. Yeah. And even if you have any more of doubts, you can just come directly and inbox me. Ask with me, and you can ask to my students. I always ready to give the doubts clear. You asked, right? Yes. Then you can come and ask to me anytime. Yes, sir. But some things can be explained in a better way in class only. Yeah, that's true. At least you think my classes are better than the question chats. That is a compliment. So yeah, the pattern is continuous, and although it is not a complete snake, it is not at all a pen. See how the transformation came from the first to the third. It was a fully pen with its textures, maybe a highlight of the pens, like that proves that it is a pen to the audience. And when it comes to the second picture, a pen with scales with some elements that are reduced. When it comes to the third one, a curvaceous, maybe a transformed, but not exactly a snake. Now the last final one. Vicious. I told you we will just finish it up, and we will give a full snake that is spectacle cobra. A spectacle cobra if you want, and which is completely curvaceous, which is skinnier, which is lengthier, which has more length and less girth, which might have a split tongue. There are also a Trishul print on a head. Pardon? That Trishul print on a head. Yeah. We'll come to that. We'll just finish the body and we'll come to that. Okay? Thank you, Ronak.
just give a beautiful pattern. Okay, I just simply draw it. You can just go for a very rhythmatic and moving pattern, and that is, yeah, yeah. And as Ronak said, the Trishul head, spectacle cobras highlight this Trishul head and Yes, sir. the split tongue, yeah, and the split tongue. And now the continuous pattern. The pattern's continuity should be shown. Like it should feel like the same pattern is on the next picture. So for that, you just want to follow the same methods. When you, Sir, they if you also want ask. to give a better. Hello, sir. Pardon? Sir, they also ask for a write-up in this type of questions. And hello. Sir, will So what all are the for a what all write-up? are the basic? Yeah, I'm just saying. Before we had discussions about color psychologies and all those questions. And remember, I whenever there's a write-up, there wouldn't be a particular format, but then there are tricks and techniques that can make your invigilator aware that you know what you're doing, you know your craft. Like what all are the principles of design that are visible in a straight to a pattern that shows, like how many principles and elements of design that you can see in this. Textures can be visible clearly. The Rhythm. texture is added clear. Yeah, rhythm, of course, rhythm at the end, and the continuity of that rhythm. So always add that topics that, or the subjects that are matters. You don't have to just explain a lot about the snake or what brand pen it is or whatever it is. Just do not go for the irrelevant stuff. Just go precise to the point. What all are the elements and principles of design that is visible in there? And whenever I'm teaching elements of principles of design, I told you, I always says that these elements and principles of design is the liberation of a designer. You can just give your work a definition. I mean, even if you do, even if any work you do, you'll have a perfect definition if you know what is all the elements and principles of design. Get what I said? Was it clear, Ronak? Yes, sir. Yeah. So yeah, you say where is the presence of rhythm? Where is the presence of movement? Of course, there is movement in here, and lines. The clear, perfect usage of line, and what is metamorphosis as it is, and what kind of metamorphosis changes that you can see. What are the add-on elements? I mean, you add texture. You add this texture of the scale. I mean, that is an element that completely change the pattern from one to another just by you don't know it is a snake, but the texture of the scales might give them just started the feel of a snake or a reptilian species, because tessellated scales are the features of a reptilian species. That is just understood. So if you just continuously give the scales and talk about the elements of textures and continuity and rhythm, everything that is presented in this was design. And yeah, that's all. It's just as simple as that. And voila, now you have yourself a metamorphosis. Where is Ashta? If she's back, the one who were asking. Yes, sir. Ashta? Yes, sir. Yeah. Are you clear about the concept? Yes, sir. Yeah. Any doubts regarding this? Just understand No, that sir. what to give for overlapping, which element should be reduced and which element should be added. Do not reduce the 100% element and jump to the second design by giving the 100% element of the second one. Just always add what is obvious. I mean, what is basically obvious on the first side to the second one. I mean, what is basic element of a snake, and what are the elements that should be omitted from the pen. The partition between the top and bottom. We just omit that side. Instead, we give a continuous body with snake scale on it. We don't have the head. We don't have the curvaceous body.
but then we have certain elements. Pardon? Vidhi? Hello. Okay. Yeah. So well, we just made a straight pen towards a pen with scale, which seems like it is transforming into something else. Clearly, the subject should be ambiguous when it comes to second figure. Third figure, we will know that what is it transforming it into, but not entirely. It is not completely transformed. And fourth figure, a complete transformation, which looks like this is transformed one from this. And how you strategically use your resources and your elements that you that you got in the question is what makes your work unique. You know, the definition of a skill is drawing. The definition of the skill of a designer is drawing for sure, and the other side is proper use of resources. You know, such questions are to judge how you're going to use your observation and resources properly. Yes, sir. Yeah. So metamorphosis, font, mascot is done. Anything else? Yes, sir. What about? Does anybody have any? Question: design an emoji on the following. First is hurry, worried, hurt, or interested. I clearly don't understand your language. There's some kind of Sir, emoji design. So she's saying that draw some emojis on hurry and stress, and I don't know, remember Sir, what she said. I designed two. ये mock test का questions I designed two. मैं दिखाऊं? Okay, wipe it out. Just precise to the point. What was the question exactly? I'm sending you the screenshot. Okay, I'll just read it out. See, when you read a question, always evaluate what the examiner need. You know, more than understanding the literal meaning of the question, understand why is that question. If it is a composition related question that has a particular subject, you should understand. Okay, maybe if they're asking you to draw a rear view mirror picture, what are all the elements that are looking for? There must be the presence of this perspective, and there must be the presence of a strong memory and your understanding of textures, because rear view reflection is not always going to be a clear picture. There will be reflection of the glass. There will be the highlights on the glass that affects the composition entirely when it comes to drawing. So three things that an examiner need. Focus on that element. So like that, judge out what the examiner is asking for more than what the answer is completely. You know, just understand the need of the examiner. Use your evaluation and critical thinking at that point and create a strategy. Now I will read the question. Okay, 3 emoji designs. I think I have covered the gestures and expressions area, and how to show expressions through subtle lines and subtle techniques. Remember, people? That was related to comic strip. Okay. So just, Yeah, sir. do you really think that it is any different from that? Emoji are different. Pardon? Emojis are Emoji showing are different. the gestures and expression study. Emojis are showing expression, and here they clearly asking for expression. And one of the major workshop or homework that you need to do when it comes to comic strip is your expression study and gesture study. Emoji are different, but not really. You know, every design seems different, but the truth is everything is connected to each other. Just like when you understand, dig deeper to the elements of principles of design, every single element is connected to each other, and one way or other way, this is the
Dot will be the line will be the extension of dot. I told you if you remember that. Line will be the extension of dot, and shape will be made out of line. So everything is related. It's not like each single one has a different template and different rules. Get it? Yes, sir. Yeah. I will just try to create these emojis because just tell me how an emoji looks basically. Mostly circular. Mostly circular. And how many lines would an emoji has? Mostly. There will be an eye, there will be a pair of eye, there will be lips. There won't be a nose most of the time, unless it is related to certain topics such as angry. You need to have a red line and you need to show the red nose. At times, rest of the time it will be just showing by the lips and the eyes and the eyebrow lines. So shall we try to do one of the emoji? Okay. Yes, sir. So there are hurried, worried, hurt, interested. Stress. I see. So what's can you please repeat the question? The design an emoji on the following: hurry, worried, hurt, interested. And Ronak just told me about stress. I don't see that in the question paper though. Hurried and stress. Yeah, worried, stress. Yeah. So let's just see. Even if you see such, I told you about how to do the emotion and gesture study. Can somebody tell me what was the method? What was the method I asked you to follow to do the emotion study and gesture study? Remember? Sir, I remember you said if you want to change emotion of a face, you said eyebrow changing of eyebrow. Eyebrows and eye. Changing of eyebrow, it will change expression of face. Like if we want to show angry, aggressive, or If you want crying. more evidence for that, if you heard about Natya Shastra or everything about emotions, Yeah. Hello? Yeah. Yeah. Bharadamuni said that Mangala Shile Rasapraskriti Kanga Muduvan Tunakki Venda. Kanna Pirigam. It is Sanskrit. Basically, all the rasam, which means the emotion or the expressions, like Navarasams, if you're familiar with that. So the one who wrote Natya Shastra itself said that only with your eyebrows and your eyes should show your emotion. Yes, Not your. yeah. You shouldn't have a follow up with your entire body. Kannagal Visheshal Pirigam. So yeah, if the man himself says that, who are we to debate? So I told you, I just told you how to do homeworks about emotion studies, which is basically on a novel, try to depict an emotion that you saw on a face. What if the person is angry? Just show the subtle The way curvy to eyebrows. eyebrows. Of course, eyebrows. Just you don't have to draw an entire face, just emotion and a full face. You just need an eyes and an oval to show the emotion, not an entire face. Does he look angry? Yes, sir. Yes, sir. Does it look like an emoji? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. And what about now? Does it look like an emoji or a character? It does not look like correct. It doesn't look like Does it look like an emoji or a so like character. Sir, does it it's look like an looking like a emoji or a cartoon character. Yeah. Okay, now again, come back to the first point. Now what does it look like? Inside a circle. It's not a character. It is back it to still the doesn't element. look like an emoji because emojis don't have nose. Pardon? Nose. Few emojis has nose. I just showed you
when I omit some certain elements, and just include the expression inside the novel, you got an emoji. And when you add certain elements of the character of a human, you got a comic book character yourself. It's just completely related. It's not something a completely different topic when it comes to the expression study of the comic strip or the expression study of an emoji. That's what I was showing. I just show you the transformation of adding certain elements to an emoji to the character. You got the example? Hello, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. No? Somebody said no. Nobody. Nobody? Okay. Nobody says no. Yeah. Of course, we'll just try one more. I mean, see, when it comes to an emoji, you will just take the minimal elements. Like, I mean, if it is a very simple expression, just like a smiley, you wouldn't even go for the eyeballs or anything. Just two dots and just a smiley face. Sir, No. So sir, this looking like me. emoji, Pardon? this emoji already exists, Yeah. and we have to make one of our own. We cannot We make. have to design an emoji. You have to design. I mean, see, just tell me how you are going to design the emoji. How different it could be. Like, how much difference it could be if you take an Different inspiration from the and existing one. different from Can we use a square? there's Yeah, we can change different shape. elements that you can follow, and it's just simple differences you can follow by one simple concept. अरे भैया Like बेडशीट नीचे गिर जाएगी. Just move me. What? Pardon? Hello. What was that? Sir, I don't know. Somebody was shouting. Shouting what? I don't know. Someone's mic was Bedsheet नीचे unmute. गिर जाएगी type. Ha, exactly. Yeah, exactly. Someone's aunties was shouting. Okay, can we just move on? All right, we'll just see how differently your emoji can be. See, most of the times this emoji is in a circle doesn't mean that if the basic element of the emoji is always going to be the eyes and the lips, the proper element of the expression. You can just change it to do anything if you want difference. Maybe you like what? Different, but not really. See, the emotion is going to be the same. It's just it has become a twinkle star. That's all. And Yes, so, an emoji. what about the color? Can we also manipulate the colors, or should it be? See, colors is if you go to the real emoji, you have seen a bitter face or a devil face with a violet color, an angry face with a red color, Yes, and a green one. disgusting face with a green color. It just shows your psychology properly. Like whatever you will learn, use it wisely. And of course, an angry emoji will be a red emoji. And if you've seen the animated movie Inside Out, you can clearly see the five. Have you seen the movie Inside Out? Yes, five different emotions, and they Yeah. have their respective colors according to the emotion. Exactly. So you can understand even in such an Oscar-nominated movie how much it is important. Even for even they follow the proper color psychology to show the characters. That anger was completely red, disgust was on green, and happy Joy was on was yellow, yellow. and sadness was on blue. How strategically they choose the colors. So emotion and colors, of course, have connection. Like when you saw the cold color, as I give an example, when it comes to a movie, even if it was a movie about happiness and lights, if they're gonna show a funeral scene, it will be mostly on a rainy day with black umbrellas, and automatically the season changes because the people want to get the feel of the movie. But mostly, why that happens? Have you ever questioned yourself? Hmm? Hello.
Can you just repeat the question? See, okay, just imagine a movie, any movie. Let it be a fight, stunt movie, a comedy movie. Suddenly they will want to show you a funeral scene, maybe a funeral scene where the body is gonna be buried on a cemetery. It will be on a rainy day. People all will be wearing black umbrellas, and the lighting started to be more dim. Hmm? Why all of them follows the same methods to imply imply that particular emotion to the audience? Is it because rain represents uh, sadness, or It is was light. Yeah, or darkness yeah? represent sadness, So like black. every single palette will be all colors. Yeah. Exactly, makes the audience crawl up to a bed and feel depressed and tired suddenly. It just affects your serotonin automatically according to psychology. And whenever you see that scene, even though you're not connected with the character, all around the color palette will be just precisely designed that you might somehow connect with the scene. Hmm? The Yeah. So that entire you can slide. relate yourself to the scene. Yeah. That you can When you like, if they want to show sadness, then they like raining will happen. yeah, because if then on a rainy time it will be called colors, and on a natural rainy day you don't even feel doing anything. You just naturally feel tired and you just want to be on a bed. That is your natural emotion. Yeah. Even though you are not sad, you will feel this natural tiredness because you be our psychology naturally affected by the colors around us. And yeah, so use your color psychology properly. It is not a game, it is not a joke, it's just something that you focus and explore and understand. Hmm? When it comes to showing an emoji also, you choose your color properly. It is always a pretty way to show happiness by an yellow emoji. See, I'll show you. If you make this twinkle star or this star to an yellow, it might look cliche, but it will do the job anyway. You know. So But do you also, think? Can Pardon? we add gradation? You can actually. Have you seen emojis with gradations? can we can we also show little hands with the emoji? See, emojis. When it comes to emojis, it is what is emoji or emojis are basically emotional pictures that there are Expression. emojis that yeah, there are emojis that has hands and legs. I mean, yeah, I want to give an example, but those aren't really about the expression. Those are just about sorry telling a topic, right? If a character is just sad or just sad, you just want this three lines only. You don't have to go dig deeper into a hands and a legs. But there are emojis that has legs and hands and legs. If you have seen the emojis like this, Like the emoji for silence, the one that has a finger on the mouth. That yeah, and includes. then there is an emoji that is a famous emoji about like that shows something like a Joey Tribbiani is compared to the emoji. If you have seen that, something that shows two hands to the something like this. A famous emoji that's been used in the internet nowadays. Doesn't really about it's not really about the expression on the face, it's about the two hands gestures. Sir, I made a emoji of good morning in Can I which see? I showed a excited son is coming with a brush in his one hand and a morning breakfast. Sir, ऐसा कुछ था. Sir, what Can I see that? not very much Can I see detailed. your It was simple, but it was all about a excited son is coming with a brush and a morning breakfast. can you walk me through it again? I don't understand. Sir, I made a emoji of a good morning. Sir, in which I showed a excited son is coming with a brush and a morning breakfast. So you just
short breakfast, 2 friends, all of those things. Sir, in his one hand, I show a plate in which sandwich was, don't know what was in the plate, but there is a plate in his one hand, and in a second hand, there was a toothbrush. And he was coming towards us and says, "Utho, utho," type of feel. How can we just narrow that down now? How can we just reduce the elements? Sir, let me show you, sir. Just a minute. Ashish sir? Yes, tell me, ma'am. Sir, we have only 5 minutes. Ronak, just excuse me. I think ma'am has. Yeah, I tell will me, ma'am. share you. Yeah, Ronak, please share your sir. Yeah. Right. So I Yeah, I will share you. yeah. Ma'am has joined us. Joshita ma'am has joined us, right? For last session. Hey, ma'am. Okay. Hey, ma'am. Yeah, I will just wrap it up real quick. Very good evening, sir. Good evening, ma'am. Yeah, so Ronak, show your emoji. Sir, I will share you on your personal platform. Yeah, sure. See, all Sir, you Sir, need I to also want to show. What's the conclusion on hands? Pardon? Just What's one the person. conclusion for hands? Shall we use it or not? What's the conclusion for what? For using hands emoji. Hand. Yeah. So see, that's what I'm saying. Expression and gestures is a whole different topic. Whether the emotion require gesture, that's the question. If it doesn't require, if it is a normal smile, why do we have to add a hand? That's what you should understand. If it is a emoji about hurry, there is a topic about hurry. You might want to show hands. Make it into more expressive one. So gesture study and expression study. Understand the difference between that. Emotion is something that happens on your face with your facial muscles, and expressions, gestures will be often used by the elements of the body. If the emotion or the topic requires that, you give it. If it doesn't, you shouldn't. You should not. You wouldn't. Correct. And yes, and I don't think this question will come on this NIFT exam, because previous year the same question came, like draw emoji on some 4-5 topics. So we can't predict. Yeah, just knowing everything is a good idea. Even if it is the heaviest route, like I said before, even if it is the heaviest route, it is a good idea to carry an umbrella in your backpack. What if it rains? So be prepared for everything, and that's all. Be the jack of all trades, and go get that exam. That's all. Okay, sir. Yeah. Anyone have any questions? Did ma'am suggested that, or any students suggested that? They're gonna right now. Hello, ma'am? No, sir, student. Okay. I'm so sorry if it was you. I'm just wrapping up the side. Is there any questions? I mean, anything at all regarding emojis or whatever you asked, metamorphosis or mascot? Color psychology. Color psychology. Ma'am, can you cover that up so that you can start your session, or should I? Yeah, Joshita ma'am with us right now. I think I will just hand over to her. And thank you guys. It was a great. Thank you so much, sir. Great pleasure to interact with you. It was always great. Always my pleasure. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Yeah, you really solved many questions. Pardon? You really solves our many questions that comes in our mind. Thank you so much. I mean, I will always I like I'll be happy to help you or whenever you want, just message me anytime. I'll be happy to help you guys. It's just for one simple reason. 4 years back, I was a clueless student. Now you are a clueless student. Let me just try to help you out. We are just in here together. That's all. See ya. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, so good evening all.
Very good evening, ma'am. Good evening, ma'am. तो प्लीज अब थोड़े से मैम बहुत देर से हम बहुत so please turn on your cameras, students. Ma'am, should I stay or can I leave? Yeah, sir. Please. Okay. Thank you, guys. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, Ronak. Okay. We have many students. Please turn on your cameras. Still many faces. Turn off. Okay, so Joshita ma'am, welcome. Thank you so much, ma'am. Okay. So आप सबकी तो वैसे ही favorite मैम हो and energy booster मैम, right? ये तो अब ये बताएंगे. Okay. So over to you, ma'am. All right. Thank you so much, ma'am. Hi, everyone. How are you? Hello, ma'am. Hi, ma'am. Not really good. Good evening, ma'am. How are you, ma'am? Very good evening. Very good evening. So I have not been keeping well for some days, but now I can feel that looking at some of you right now, I'm getting energy, and sooner or later, yes, there will be some bombarding of several emotions. So yeah, I got one comment right now. Not really. Why? Why not feeling good? Now it's just हाथी निकल गया और पूंछ बाकी है. Yes. Ma'am, there is a bhoot whose name is Dar. Okay. Yeah, ma'am. So, what kind of डर you are getting? क्या डर लग रहा है आपको? किस चीज का डर है आपको? बताइए. Whether we get like NIFT में होगा नहीं होगा. पता नहीं कैसा पेपर आएगा मैम. कैसा आएगा question? What will happen? Is like. ठीक है. So the thing is, अभी तक आप लोगों ने मॉक दिए? कभी डर लगा? नहीं. No, ma'am. But that was mock, na. Yeah. टेस्ट तो टेस्ट होता है. जब स्कोर अच्छे आते हैं तो खुशी भी उतनी आती है ना? So the thing is, guys, it's just a process. ठीक है? It is just a process, so don't worry at all. Whatever preparation you guys have done, it is pretty well. Now it's just you have to stay calm, focused. You are left with just a day. That is tomorrow. And after that, boom, pleasure time is coming. है ना? जो इतने टाइम की प्रेशर, स्ट्रेस, है ना? सब खत्म हो जाएगा. सब खत्म नहीं होएगा. शुरुआत होने वाली है 6 फेब को तो आपकी. Whatever you guys have planned, आप उस रास्ते पर आके खड़े हो गए हो. अब से उस पे बस चलना है. Yes, ma'am. रोज एक नया दिन आएगा and you guys will find something new, something exclusive, something exciting. खत्म कुछ नहीं होना. 6th को तो बस शुरू होना है. खत्म तो कल होना है. टेंशन वाले दिन. Are you getting? Yes, so, ma'am. The thing is, whatever preparation you guys were supposed to do, you guys have already done. हो गया. बस पेपर आएगा सामने, आपको क्वेश्चन को रीड करना है और उस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन लिखना है.
If you guys are unaware about the answer, you can leave that question at that moment. आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि करना ही करना है. You have to keep 15 to 20 minutes as your buffer time so that you guys can come check those questions which you left. ठीक है? क्लियर बेटा? Yes, ma'am. आप सभी को इतना टाइम लेके चलना है कि मैं वापस आऊं और चेक करूं अपने उन आंसर्स को which I have left. ठीक है? करेक्ट को नहीं चेक करना. Okay? Because when you are 100% sure, mark it and that will be absolutely correct. When you are dicey, leave that question. Okay? Skip that question for a moment and move on to another question. Clear, beta? Because yes, ma'am. there is negative marking. For example, if you have solved 3 correct and 2 incorrect, तो उन 2 के 0 तो आएंगे ही आएंगे, साथ के साथ नेगेटिव मार्किंग के 0.5 भी जो सही करे ना 3 उसमें से कट जाएंगे. So please mark only those answers where you are 100% sure. You can follow move on technique. उस टाइम पर छोड़ के आगे बढ़ो. फिर 15-20 मिनट का टाइम एंड में रखना उन क्वेश्चंस को जहां पर आपने फ्लैग किया है. आप सभी को पता है. You guys are already aware about the pattern, right? Yes or yes, no? Ma'am. Yes, ma'am. Great. So the thing is, shall I start my session and we will cater the doubts at the end? Okay. So what I have planned for you, my session will be dependent on sheer revision. Okay. I have planned something for you guys. So मैं आपका पूरा revision करा दूंगी इस session के अंदर. And after that, whatever doubts are popping to your head, you guys can ask. Fair enough? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया. You guys can see my screen. आप देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. Now, what is this all about? Today, I will be guiding you for your exam. So I'm starting with number of questions. So in Bachelors of Design, 100 questions will come, and in Masters, 120. English, 50 questions for Bachelors and 60 questions for Masters. And there is negative marking, you all know pretty well. Now in Masters of Fashion Management, Fashion Technology, and Bachelors of Fashion Technology, there will be in total 150 questions, and for English there will be 50 questions in MFM and 40 questions for case study. Okay, I have planned something for you in case study as well, but at the end we will discuss. All right, for Bachelors of Fashion Technology, there will be 45 questions and 25 questions of case study. There is negative marking too, so you have to be very cautious for that. So guys, the time allotted for Bachelors of Design exam will be 2 hours. That is 120 questions. In Bachelors, you will get just 1 minute, okay? And you will get some time for revision, but you will not get time for revision in Masters of Design because 120 questions are there.
and you have 120 minutes only. For MFM, MF Tech, BF Tech, you will get 3 hours. That is 180 minutes, 150 questions are there, although you will be getting time, but I will suggest you to solve your exam, means your one question in 1 minute, so that you get ample amount of time to come back, because there are tricky questions in your exam. All right. For the last day, I will suggest you to keep yourself engaged in LMS, okay, which the portal which has been provided by Pehel to you, and you can do online quiz. There are several, and whatever stuff you guys are preparing on should be time-based. Okay. Now, for last moment, you guys should focus on these topics. Okay, so I have prepared some rules, important rules, where I will be covering these complete topics for you guys. All right, so let's start. Shall I, with your prior permission, guys? Yes, ma'am. All right. So rule number 1 says that the hyphenated noun means 500 rupees. So there is hyphen. ये जो डंडा लगा हुआ है ना, let me see if I can use this. I can't use. Yeah. So if this hyphen is coming, so whatever noun is surrounded by this hyphen cannot be plural. Hyphenated noun में कभी भी plural नहीं आएगा. जैसे 500 rupees will not come, it will be 500 rupee. Okay, similarly 5 stars hotel will not come, it will be hotels, but S won't come in star because there is hyphen in between 5 and star. All right. Rule number 2 says that noun which express number should be used in singular form. ठीक है, जैसे 5 dozens, although dozens are ज्यादा, but still we will use dozen. ठीक है, dozen 12 होते हैं, 5 dozen उससे भी ज्यादा है, but still we will use 5 dozen because it is expressing number. Okay, 2 lakhs. No, it will be 2 lakh. Although there are large number of people who attended the ceremony, still we will use lakh. But if you are using of, then lakhs of, thousands of, millions of. Am I clear with the fact, guys? Yes. Yes, ma'am. ठीक है. Rule number 3 says collective noun, चाहे वो कमिटी है, ज्यूरी है, हाउस है, मिनिस्ट्री है, पुलिस है, मॉब, ऑडियंस, टीम, whatsoever collective noun. Collective noun क्या होता है? ग्रुप, संगठन, किसी भी चीज का. So if you are taking these words as a group, as a unit, तो आपको क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब. अगर ये सब एक यूनिट की तरह यूज हो रहे हैं तो आप इनके साथ यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब. ठीक है. और अगर ये इंडिविजुअल, इफ दे आर यूज्ड एज इंडिविजुअल, देन यू विल यूज व्हाट? प्लूरल वर्ब. चलिए, लेट्स सी एग्जांपल. पुलिस. पुलिस क्या है? बहुत सारे लोग जो कि वर्दी में है. ठीक है, क्लियर? द पुलिस डैश बिकम इनसेंसिटिव. क्लियर? यहां पर पुलिस किसकी तरह रोल प्ले कर रही है? एक कलेक्टिव यूनिट की तरह. Great. So here police is talking about a group, a unit. ठीक है, that's why we are taking it as has. The police has.
Okay, and the police were posted all over the route. मतलब इंडिविजुअल, कोई इस गोले पे खड़ा है, कोई उस चक्कर पे खड़ा है, कोई उस चोपला पे खड़ा है, कोई उस टक्कर पे खड़ा है. Here guys, next is committee. For example, सबने एक रूल पास किया, they approved. ठीक है, so we will take committee with is, does, has, was. But if committee are providing different resolutions or different approvals, then committee are, committee do, committee were, committee have. Clear beta, this special rule? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. There was a lot of confusion in group which I felt with the word public. क्या आएगा public के साथ? Is or are? Is. When it is used as group. ठीक है, अगर सब अलग अलग है, garden में खड़ी है public, if we are talking about that, is or are? Are. Because there is one park which has recently started and I also decided to visit, pay a visit there, but when I decided, there was a lockdown announced. So Bharat Darshan Park, Punjabi Bagh in New Delhi. तो कोई ताजमहल देख रहा है, कोई कुतुब मीनार देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, तो obviously they are segregated. We will use are. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, great. If a preposition connects to singular noun, both the noun should be used in singular. कैसे? पन्नों पे पन्ने पलटते जा रहे हैं. You will not say pages after pages. You will say page after page. Clear? एक जहाज के बाद दूसरा जहाज आ रहा है, एक जहाज के बाद दूसरा जहाज आ रहा है, क्या बोलेंगे आप? Ships after ships or ship after ship? Ship after ship. Ship after ship. Great. Next, when the pronoun each, every, neither, either, one person asked me one point कि क्या either के साथ, क्या neither के साथ और nor का लगाना mandatory है? I said no. With either we can use or, with either we can use of even. ठीक है? So either of. Sorry. Either of मतलब दो में से एक. ठीक है? Either of the girls. Now here, if you are taking either, if examiner is writing either, please make a note of this. Either of the two girls is missing. Either of के बाद क्या आएगा? Plural verb. Girls is written. Plural noun and singular verb is also written. ठीक है? Clear? Now what is the error? Can you please let me know? Sentence is either of the two girls is missing. This is my sentence. It should be Yes. either of the two girls are missing. No. Because It should be girl. okay. Now, whenever we are using either of, we will always take plural noun. ठीक है? And singular verb after it. Plural noun आएगा, girls है, absolutely correct. Singular verb आएगा क्योंकि दोनों में से एक लड़की मिसिंग है. Both नहीं, either. Are you getting, guys? Yes or no? Yes, ma'am. So is जो लगाया वो भी सही है. Now, what examiner used here, which is wrong, is it is but obvious. Either two के लिए लगता है, ज्यादा के लिए लगता ही नहीं है. तो two का आना
रॉन्ग है। क्लियर बेटा? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So either of the girls is missing. Either, but obvious है, दो के लिए लगता है। अगर बहुत सारों में से एक लड़की खो गई है तो क्या यूज होएगा? One of the girls is missing. Is this point clear बेटा? Yes or no? Yes, ma'am. Great. चलिए. Now next is, I guess, either, each, every, neither, anyone, मतलब ये सारे words will take what? Singular verb and singular pronoun. Clear? Each boy and each teacher is required to bring their luggage. हालांकि अपना अपना सामान लेकर आना है, अपना अपना बोरिया बिस्तर लेकर आना है, ठीक है? हर एक टीचर को, हर एक लड़के को. क्लियर? बट ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड. आर नहीं आएगा, भले हम ज्यादा की, हर एक की, ज्यादा लॉट की बात कर रहे हैं, स्टिल वी विल यूज इज. ठीक है? यस और नो गाइस? Yes, ma'am. Each boy and each teacher is required to bring singular pronoun his luggage. Next. Just a second. How this toolbox will, just a second, I don't know why. Chalo, I guess there is some glitch here. Some nouns such as separation, excuse, cite, mention, report, pardon, favor, these are not used with noun. ठीक है ना? इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा. ठीक है? उसके नजरों के सामने से चोर भाग गया. After these words we cannot use noun or pronoun. But आपने जरूर से सुना होगा, I need your favor. Yes or no? Yes, ma'am. Your favor, favor के साथ आ गया pronoun. This is absolutely incorrect sentence. I need favor from you. ठीक है? When you are saying pardon me, it is incorrect. It will be only pardon. ठीक है? Clear बेटा? At his side is incorrect because side cannot take his before it. At the sight of him, उसकी नजरों के सामने से robbers भाग गए. Rule number 6 is very important. Please make note of this or take screenshot. चलिए. Rule number 7 says कि both के बाद and आएगा as well as नहीं आएगा. Examiner will always use as well as after both. Both you as well as my brother are going to attend. This is incorrect. क्या आएगा? Both you and my brother. Clear बेटा? Yes, ma'am. चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि which और who का यूज कब कब आता है. So when you are making choice among many, जब आप बहुत सारे लोगों में से एक को चुनते हो ना, तब आप यूज करेंगे which.
not who. आपने सुना होगा ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि हु इंसान के लिए लगता है, विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है. बट हियर रूल इज डिफरेंट. जब आप बहुत सारे लोगों में से एक को चुनते हो एंड यू नीड टू यूज रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन मानी कि हु, हुज, हुम, विच, दैट में से कोई एक इस्तेमाल करना है, देन यू हैव टू यूज विच. क्लियर बच्चे? यस और नो? जैसे कि ऑफ द सर्वेंट्स विच ब्रोक योर क्रॉकरी. आपके सर्वेंट्स में से किसने आपके क्रॉकरी को तोड़ा? विच. ठीक है. नेक्स्ट, when you are joining end with a human and with one animal or a non-living thing, आप किसी इंसान को किसी जानवर के साथ जोड़ रहे हो, एंड का यूज कर रहे हो, then who will not come? Because man is human but dog is not human. So what we will use? What relative pronoun we will use? That. I repeat once again. जब भी आप एक ह्यूमन को एक जानवर के साथ, या ह्यूमन एंड हिज बैग, द मैन एंड हिज बैग, एक इंसान है और एक नॉन लिविंग थिंग है, अगर आप उन दोनों को जोड़ रहे हो तो what relative pronoun you will use? That. These are very important rules. ये स्पेशली डिजाइन करे गए हैं रूल्स आपको एंड मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए, बिकॉज इन लॉन्ग प्रेपरेशन यू गाइज मिस सम इंपॉर्टेंट रूल्स. तो ये वो इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स हैं जो जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है. क्लियर बेटा? शैल आई मूव फॉरवर्ड? यस मैम. नेक्स्ट है who or whom. Whenever we are using who is always used to represent subject. ठीक है. who का यूज कब होता है? Who is coming for dinner tonight? Who is coming for dinner tonight? We always say Ram is coming for dinner tonight. So Ram is what? Ram is subject. ठीक है. And if we are saying whom are you inviting for dinner tonight? I am inviting Ram for dinner tonight. So here I is subject and Ram is object. Whom is used to represent object and who is used to represent subject. Any confusion? आगे बढ़े? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Superlative degree. After superlative degree, we have to use that as a pronoun. हमेशा examiner who, whose, whom, which लगाकर देगा, लेकिन आपको पकड़ना है after superlative, if any pronoun is coming, then that will come. Clear बच्चे? Yes or no? Yes, ma'am. चलिए. ये कैसे हटेगा? एनी आइडिया? ये चलता ही रहेगा दिस टूल बॉक्स. Now guys, next rule. Whenever as or then are coming in the sentence, जब भी as या then आ रहे हैं,
भले ही कहीं पर भी आ रहे हो सेंटेंस में, at whatever place they are coming, it hardly matters. After as and after then means then, we will always use subjective case. I, we, he, she, it, they, you. यदि as और then आ रहे हैं, इनके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा एंड एग्जामिनर वोंट यूज सब्जेक्टिव केस एनीवे. ठीक है. नेक्स्ट इज whenever we are talking about illusionary sentences, काल्पनिक sentences की बात कर रहे होंगे. यदि राम यहां होता, यदि मैं यहां होती उस टाइम पे, उस दिन, if you are talking about illusionary sentences, imaginative sentences, then every time you guys have to use verb. come what may subject is, चाहे जो भी सब्जेक्ट आ जाए, चाहे राम आ जाए, चाहे पीपल आ जाए, चाहे चिल्ड्रन आ जाए, चाहे टीचर आ जाए, चाहे ट्री आ जाए, singular, plural, whatsoever subject is coming, always we will use verb. Clear beta? Yes or no? Ma'am, would it be applicable to if I were the president of India? Absolutely correct. Okay, ma'am. ठीक है. Now the thing is, it is clear that whatsoever subject is coming, whether it is singular or plural, it will take verb. Now after verb, what object will come? Object will also be of subjective case, only if we are talking about imaginary sentences. Clear beta? जब भी हम काल्पनिक सेंटेंसेस की बात करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल जो मर्जी हो चलेगा. It will take verb as a verb, and after verb always subjective case will come and would plus verb first form will come. Clear? Next rule number 14 says let. देखिए सब कुछ इस पीपीटी में मैं लिख दूंगी तो फिर आपको पीपीटी पकड़ा देती हूँ, मेरी बोलने की जरूरत ही नहीं है. So whatever word I am uttering from my mouth, please make note of each and everything, because some points are here, some points are coming to my head at the moment and I am telling you. So the thing is, if, let, but, between, except, which word? Let, but, between, except, if these words are coming, and any verb, verb first form, verb second form, verb third form, whatsoever verb form is coming, and any preposition, in, on, at, under, upon, over, whatsoever, after these words always what will come? Objective case. Let me handle this situation. ठीक है? Clear बेटा? Yes or no? Yes, ma'am. अब Yes, देखिए, ma'am. these chocolates are for. For is preposition, after for objective case will come. यदि sentence, rule number 15 says, if sentence is starting with one, यदि sentence one से start हो रहा है, one, further pronoun will be one or ones. यदि sentence one से start हो रहा है तो आगे his, her, him, their, share कुछ नहीं आएगा. ठीक है? What will come? One or ones. One must not boast of his own success, जो कि ये सेंटेंस हालांकि मैंने लिखा है, बट मैं ये मानती हूँ कि करना चाहिए. ठीक है? One must boast. ठीक है? बिकॉज अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अपनी सक्सेस पर, if we will not talk about our success, then how other people will talk? So one must boast of one's own success. I will change not here. Clear beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
बोर तो नहीं हो रहे कहीं आप लोग? नो मैम। नो मैम। पक्का बेटा? बड़े फिर यस आगे? मैम। चलिए ग्रेट। So guys, normally I get questions like ma'am then का use कहाँ करते हैं? THEN then, THAN then. ठीक है? So the thing is whenever we are doing comparison, दो लोगों के बीच में आप comparison कर रहे हो तो आप use करोगे THAN then. क्लियर बेटा? बट अगर आप बात करते हो then उस टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है? आई कॉल यू देन, जब भी हमें लड़ना होता है ना किसी से कि कब कॉल किया था, मेरे पास तो आया ही नहीं, आई कॉल यू देन, ये रही हिस्ट्री ज्योग्राफी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच अदर एंड वन अनदर? सो अगर मेरा, ठीक है, इसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, ये राम है, नॉर्मली आई यूज राम इन एवरी केस, है ना, क्योंकि मेरे नाम में आता है सीता, तो मैं हमेशा राम का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। सो ये राम है, अगर मेरा और राम का रिलेशन बहुत अच्छा है, सो व्हाट आई विल यूज? ईच अदर। क्लियर? यस और नो? और Yes, अगर ma'am. मेरा सभी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, तो what I will use? One another. Clear? I always suggest you guys, चाहे किसी से भी बात करो ना करो, लेकिन अपनी फील्ड के सभी लोगों से टिप टॉप बात होनी चाहिए। क्लियर? बिकॉज यू गेट टू नो मोर अबाउट द फील्ड। सो two brothers love one another or each other? Each other. चलिए, now the thing is BEING, रट लीजिए, ये जो being है ना, ये gerund है। क्लियर? being is a gerund. gerund क्या होता है? वो वर्ड जो कि नाउन की तरह एक्ट करता है। क्लियर? सो एक नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है कि प्रोनाउन आता है? आंसर में what comes first, adjective or pronoun? Pronoun. मैम एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव होता है हमारा विशेषण, आई गेस, राइट? इफ आई एम राइट। यस मैम। ठीक है। सो क्रिया की विशेषता बढ़ाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सो एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स व्हिच मॉडिफाई noun or pronoun, so they always come before noun or pronoun। ठीक है? और भले ही प्रो लिखा हुआ है नाउन के आगे, प्री, बट इट डजंट मीन कि वो उसके आगे आता है। pronoun are those words which come at place of noun। नाउन की जगह पे राम 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 राम, हम जाप करने में तो बोल सकते हैं, but while speaking, while articulating, we can't say ram on and off, we have to use he, him, his at times। ठीक है? So the thing is, whenever being is coming, we can't use pronoun before it, we have to use my। my is what? Possessive adjective। क्लियर बेटा? क्यों माय आता है? आप पूछते हैं मेरे से कि मैम माय क्यों आया, मी क्यों नहीं आया? तो क्लियर हो गया आपको? यस और नो? यस मैम। चलिए, सो आज्ञा, हाउ आर यू? मैं पहले देख रही थी यूट्यूब पे, आपकी आवाज सुनी थी मैंने क्रिएटिव क्लास में। ऑलराइट, सो here comes the rule which I mentioned couple of minutes ago, each of, either of, neither of। ठीक है? क्लियर हुआ? whenever each of, one of, either of, neither of, none of, if these words are coming, then
they will take plural noun, which is boys written here, and singular verb. Has is written here. Clear, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा मुझे एक बात बताओ. If I am using each of these two boys has done his homework, is this correct or incorrect? I repeat, each of these two boys, या चलो इसको 3 कर देते हैं. आज मेरा 3 बोलने का मन है. Each of these 3 boys has done his homework. तो क्या ये सही है या गलत है? Is it correct or incorrect? It's correct. Are you sure? Yes, ma'am. चलिए. Can you repeat once? Each of these, देखिए दो पेन लेकर मैं बैठी हुई हूँ जो कि स्क्रीन पे चलते हैं, बट राइट नाउ आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट वर्किंग. चलिए. So the thing is, each of these 3 boys has done his homework. बस these के बाद 3 लगा दो आप. बताओ सही है या गलत? सही है. Are you sure? मैम एक बार आप रिपीट कर दीजिए. चलो इधर ही लिख देती हूँ. Have done their homework. No, ma'am, it's correct. Yes, ma'am. I think it should be have done their homework. राज्य बेटे, each किसके लिए यूज होता है? टू के लिए या मैनी के लिए? Tell me. गाइस देखिए, आपको पता है कि डे 1 से मैं आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करके टेस्ट करती हूँ. तो बताइए ईच किसके लिए यूज होता है? टू के लिए या मैनी के लिए? मैम मैनी के लिए. Are you sure? Not sure. Singular. Alright. देखिए मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पर 3 कर दूं, 4 कर दूं, 30 कर दूं, इट हार्डली मैटर्स. सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, माना each Because other. at the end of the day they are doing their own work. एब्सोल्युटली. ठीक है, अब देखो मैंने कंफ्यूज क्यों किया आपको ये जज करने के लिए कि मैंने भी थोड़ी देर पहले और इसी स्क्रीन पे ऊपर लिखा हुआ ईच 2 के लिए समझाया था. ठीक है, राम और मैं, राम और मैं. तो मैं ये देखना चाह रही थी अगर मैं 3 लिख देती हूँ 2 की बजाय, या फिर मैं 2 3 कुछ भी ऐड कर देती हूँ, तो क्या इसमें चेंजेस आते हैं आपके आंसर्स में? सो द थिंग इज ईच ऑफ दीज 3 डालो, 2 डालो, 30 डालो, मैटर नहीं करता है, because this is each of. It is not talking about 2. Clear बच्चे? Yes. Great. चलिए, now we are running with time. मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैं थोड़ा सा इसको अब जल्दी जल्दी. Ma'am, you are on mute. All right. So the thing is, now we have to go very quick. चलिए, रूल नंबर 19 ये बोलता है कि whenever we are using end, ठीक है, and we are talking about 2 different nouns. If 2 different nouns are used, ठीक है, and they are taking individual article, then they will take plural verb
ठीक है, अगर द कलेक्टर और द मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ है तो फिर आर आएगा, द कलेक्टर एंड मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ है तो इज आएगा। क्लियर, बिकॉज द कलेक्टर एंड मैजिस्ट्रेट इज सेम पर्सन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही कलेक्टर है, कलेक्टर ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, so it will take is, it will take singular verb, singular pronoun। क्लियर बच्चे? यस मैम। चलो नेक्स्ट इज, ये मैंने अभी आपको बताया था लेट वाला रूल, सेम 21 मैंने अभी आपको समझा दिया कि इफ वी आर टेकिंग इंडिविजुअल आर्टिकल देन आर विल कम, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल तो आर आएगा, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल तो इज आएगा। क्लियर, ईच एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, सो दैट आई हैव एक्सप्लेन। ठीक है, रूल नंबर 23 कहता है कि नाइदर के बाद नॉर, आइदर के बाद और, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो, नन के बाद बट आता है, and whatsoever verb is whatsoever subject is coming after nor or but also but, उसके बाद सिंगुलर, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल वर्ब डिपेंड करेगा जो भी सब्जेक्ट और नॉर बट ऑल्सो और बट के बाद आ रहा है। ठीक है, नाइदर सलमान नॉर हिज फ्रेंड्स, जो भी नॉर के बाद आ रहा है वो सेंटेंस का वर्ब डिसाइड करेगा। ठीक है, नॉर हिज फ्रेंड्स आर प्लूरल सो वी विल यूज आर। क्लियर बच्चे? यस मैम। चलिए रूल नंबर 24 मैंने अभी अभी जस्ट ये आपको समझाया है। ठीक है, और इसका आंसर आप एक बार देख लीजिए कि वाई has will come, why not have, because plural noun and singular verb। ठीक है, similar 25 question I have recently explained you, 25 rule। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है many a। many a के बाद आने वाला, और many a या फिर more than one के बाद आने वाला noun, pronoun, verb, everything will be singular। क्लियर, आप एक बार रूल्स चेक कर लीजिए क्विकली गाइस। एग्जाम्पल्स देख लिए। Shall I move to rule 27 because we have to hurry up? चलिए, rule number 27 says that if sentence is starting with it, अगर वो it से start होता है और it के तुरंत बाद आता है आपका auxiliary। ठीक है, whatsoever auxiliary is coming, it hardly matters, after auxiliary we have to always use subjective case pronoun। ठीक है, इट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इट के बाद ऑक्सिलरी आ रही है, इज, आर, एम, जो कुछ भी आ रहा है, और उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा देन दैट प्रोनाउन विल ऑलवेज बी ऑफ सब्जेक्टिव। क्लियर, और उस प्रोनाउन और उस नाउन के हिसाब का क्या लगेगा? वर्ब। इफ आई इज कमिंग, एम विल कम, if apple is coming, is will come, if apples is coming then are will come। clear beta? Yes। ठीक है, नेक्स्ट इज a large number of। a large number of के बाद और the large number of के बाद जो नाउन आता है दैट इज प्लूरल, जो वर्ब आता है वो a number of के बाद प्लूरल आता है और the number of के बाद सिंगुलर। so you guys can take screenshot of this। रूल नंबर 29 कहता है कि इफ इट्स हाई टाइम इज कमिंग, आफ्टर इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स टाइम, अगर ये फ्रेजेस आ रहे हैं तो आफ्टर दैट पास्ट टेंस विल कम। ठीक है, ये जो मैंने एग्जाम्पल्स डाले हैं ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, रूल नंबर 30 कहता है इफ दीज वर्ड्स एक्विट, एब्सेंट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अडेप्ट, adjust, pride, if these words are coming they will always take reflexive pronoun।
इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन which are ending with self or self, myself, themselves, ourselves, इनके बाद आएगा ही आएगा. नेक्स्ट ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद the thing is whenever these words are coming we cannot use direct object. ठीक है, he advised, इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, नो preposition will come after these words. इनको आपको लर्न करना है तो you can make note of this, you can note down or take screenshot. Whenever KNOW no is coming, they will always this word will always take how after it. ठीक है. Next is looking forward expression आ रहा है या फिर accustomed to, averse to, with a view to, addicted to, devoted to, मतलब कोई भी preposition आ रहा है. ठीक है. So after preposition gerund will come. Clear beta? So the thing is I am looking forward to meet नहीं आएगा, I am looking forward to meeting. Clear? चलिए, ऐसे काफी सारे रूल्स हैं. Now the thing is we are running with time, so I am making you take screenshot of this which we can discuss in our upcoming class, that is tomorrow, our last class. तो अगर इनमें से आपको कोई डाउट है you can ask me in class, although I have already taught these rules. So we are running with time, so I have to take note of each and everything. All right, so you can take screenshot of this. Then I am going to make you aware about reading comprehension, case study and vocabulary part. Ma'am, can you share the PDF? Okay, I'll try. Thank you, ma'am. Okay, beta. ठीक है. Now the thing is vocabulary part. So guys, I will suggest you to focus on these highlighted ones in exam. ठीक है, अगर phrasal verb का question आता भी है तो it will only cost you 1 mark. अगर आप उसको wrong गलत सलत लिखाते हैं तो आपके correct में से वो incorrect हो सकता है. That will cost you high prizes. So I will suggest you to focus on these parts. Synonyms and synonyms, one word substitution, idioms in exams. अगर spelling पे sure है then only mark. If you know the phrasal verb then only mark. ठीक है. Last moment पे vocabulary कैसे prepare करें? I will ask you to relate words. सब चीजों के आंसर उसी में ही है. ठीक है, जैसे pauper थोड़ा पापड़ जैसा लग रहा है. पापड़ क्या होता है? सुखड़ा हुआ. shrink, poor. diligent, दिल्ली में लोग आते हैं, दिल्ली में जेंट्स आते हैं नौकरी करने के लिए, बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग. वो ट्रैवल कर लेते हैं अजमेर से, अलवर से और यूपी से, हरियाणा से. डिबैकल, इट्स कंप्लीट फेलियर व्हेन यू से बेअक्ल. ठीक है. नाउ देयर इज वाउच. वाउच हैज वाउचर इन इट. ठीक है ना, हर एक वाउचर क्लेम करता है हम आपको 350 रुपीज डिस्काउंट करेंगे, हम आपको 50 रुपीज डिस्काउंट करेंगे. ऑल एट सी. ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को तो अर्थ पे भी कंफ्यूजन होता है, लेकिन सी जहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता है वहां जाके हम सोचने लग जाते हैं व्हाट टू डू, कहाँ आ गए हम. ठीक है, धूप. सो नेक्स्ट इज मंकी अराउंड. ठीक है ना, नॉर्मली व्हेन वी यूज दिस एक्सप्रेशन मंकी, बंदर. ठीक है, हम बोलते हैं अब ये आ गया है इधर उधर फुदकने के लिए, अब ये हमारा टाइम वेस्ट करेगा. राइट. नेक्स्ट इज बाय लॉन्ग एड्स. सी राइट नाउ आई एम नॉट मेकिंग यू लर्न दीज, आई एम जस्ट टेलिंग यू द टेक्निक्स कि आप कैसे एंड मोमेंट पे रिलेट कर सकते हैं. एंड इवन इफ यू फाइंड एनी वर्ड इन योर एग्जाम, सो रिलेट करो. आपके पास ऑप्शंस गिवन है देयर, सो यू कैन रिलेट. ठीक है. Only when you are not sure about that you can relate them,
You can think if you have time, and I will suggest you to always keep buffer time. ठीक है? Next is end moment पर अगर आप learn कर रहे हैं vocabulary, try to relate words with the root words. Root words भी आपको काफी help करेंगे, जैसे कि there is phobia. Phobia is related with डर. Tele is related with far. ठीक है? मीटर मेजरमेंट के लिए होता है. फॉर्म एक शेप होती है. सो जो भी वर्ड्स उससे बने हुए होंगे, जैसे कन्फॉर्म, formulate, reform, they have some shape or value to it. ठीक है? अब आप वर्ड्स लर्न कर रहे हैं, so try to learn each and every part of speech related to that word. So if last moment पे जब आप उसे पढ़ रहे हैं, because see I think this slide won't give you any advantage for the last day, so I think I should skip it. Yeah, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैंने बहुत कुछ लिखा है इसके अंदर, बहुत सारी रामायण लिखी है, बट मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ बिकॉज वी आर रनिंग विद टाइम. सो द थिंग इज गाइज, whenever you see reading comprehension, always hop to question, underline keywords what are written in your question as well as option, and try to because right now we can't underline. अब तो हम underline ही नहीं कर सकते हैं. So what you can do, you can underline here. You're muted. Yes, this is the strongest part where you can underline words. ठीक है? Concentration करना है. See, this slide will help you a lot. मैम आप ये पीपीटी ग्रुप पे भेज दीजिएगा. So whenever you are reading anything and if you find your concentration is lagging, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपका कंसंट्रेशन उस 2 घंटे 3 घंटे में बाढ़ अकाल जो आए आने देना, आपका कंसंट्रेशन यही होना चाहिए. ठीक है? देख लेंगे बाद में जो होगा. क्लियर? So if your concentration, if in case your concentration lag, stop then and there, वापस से शुरू से रीड कर. ठीक है? टोन समझो. ऑथर विल ऑलवेज गिव यू पैसेज इन वन टोन. पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. ठीक है ना? या तो किसी की धज्जियां उड़ रही होंगी या किसी की तारीफें हो रही होंगी. So always whenever you are marking answer, keep one thing in your mind, that start eliminating options rather than choosing it. Okay, elimination method is very good. It will help you a lot to figure out your answer correctly. ठीक है? 1 minute रखिए one answer के लिए. In case आपको लगता है कि एक word, बहुत typical सा word आ गया है and you are unable to figure out what is the meaning of that word, so I will not suggest you to sit and think कि क्या होगा इसका मतलब. Leave it. Try to figure out while reading the sentence. Sentence को read करके अंदाजा लगाइए कि उस word का क्या meaning होगा. ठीक है? Now the thing is there any questions which you guys want to ask? मैं एक बार जरा questions देख लूं. Guys, आपको मेरी screen visible है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So I thought, yes, definitely I will share. Yes, before going further, I would like to know your doubts. मैं आपसे सुनना चाहती हूँ. थोड़ा जल्दी जल्दी करना है हमारे को. बाकी rest tomorrow is there in our hand. I am there with you guys. Yeah. Ma'am, in English, minimum how many questions should we attempt? At least the minimum limit. Okay. So the thing is, kindly turn off the mic. I got one question in class that, ma'am, how many words should I learn daily? ठीक है? मैं बोलूंगी आप 1000 words करिए.
आप नहीं करते तो मेरी बात की वैल्यू थोड़ी रह गई, ठीक है। सो द थिंग इज whatever is your capacity, whatever is your level, follow that. I am no one to tell you कि नहीं बेटा 20 कराना, नहीं बेटा एक काम करो सबके B मार्क कराना. No, I am not that person and I am not suggesting you this kind of question. ठीक है, I will suggest you, मैं तो ये लगती हूँ कि मैंने आपको इतना पढ़ाया कि 50 के 50 दावे से करेक्ट करके आओगे. यस मैम. यस मैम. और बताइए गाइस. देखिए लास्ट मोमेंट है, पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे आप लोग. आज तो एटलीस्ट कैमरा ऑन कर लेते ताकि मैं आपका चेहरा देख सकूं. मैम कल क्लास है तो क्लास है, डेफिनेटली है, बट चलो कोई नहीं. लेट मी सी, मैं आपका थोड़ा देख लेती कि यस कुछ मोटिवेट कर पाई मैं आपको. ऑलराइट, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I will suggest you to stay calm, relaxed, focused. आप लोगों की इतनी तैयारी हुई है गाइस, आई एम डैम कॉन्फिडेंट. आप लोग भले हो ना हो, मैं डैम कॉन्फिडेंट हूँ, 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि आप लोग का एग्जाम बहुत बढ़िया. Whatever you have planned for yourself, you will definitely get. ये साल ही आपके लिए बना है. थैंक यू मैम. You're welcome. Now, anything which you guys want to ask? Deepika, Swati, क्या बात है आज कुछ बोल ही नहीं रहे? इशिका मैम, मेरे एक डाउट था कि वो जो क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो पैसेज में पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, उसमें मेरा कई बार थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. लाइक मैंने जो भी प्रैक्टिस किए थे उसमें कभी तो वैसे तो सही हो जाता है बट कई बार गलती हो जाती है उसमें. सो दैट इज व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड. यस मैम. मैं आपको है ना ये कहते हैं ये दे दूंगी स्लाइड, एक बार मैं आपको बता भी देती हूँ. आई होप यू गाइस कैन सी, आप देख पा रहे हैं? यस मैम. So the thing is, whenever the passage is talking about any analysis, ठीक है, मोदी जी ने ये किया, राफेल लाए, है ना, मोदी जी ने अयोध्या बनाई, मोदी जी ने ये लॉ पास किया, किसानों के लिए ये किया, ठीक है, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने ये किया वो किया. यू आर डूइंग कंपैरिजन, यू आर टॉकिंग अबाउट गुड एंड बैड पॉइंट्स अबाउट भारतीय जनता पार्टी और ये वो, मतलब यू आर डूइंग कंपैरिजन, एनालिसिस कर रहे हैं आप है ना, नुक्स निकाल रहे हैं किसी के अंदर. तो द टोन इज क्रिटिकल. देन द कंप्लीट पैसेज इज टॉकिंग अबाउट डेटा. इतने कोरोना केस आए, इतने बेड्स आए, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर आए, इतने नहीं आए, इतनी मौतें हुई, इतना ये हुआ वो हुआ. द टोन इज एक्सपोजिटरी, ठीक है. There was one question which was mishandled by Alia Bhatt. So there was so many memes floating on social media कि उसकी जीके पुअर है, ठीक है, जीके तो बहुत वास्ट है, ठीक है. So humor is used to do healthy criticism, ठीक है. अब the people who are strong from here, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जीके वीक बोलो, हमारी शक्ल खराब बोलो, जो भी बोलो, बट मजाक मजाक में खिलिया उड़ाना, जैसे कि राहुल गांधी ने ये किया वो किया, सलाम नहीं किया, यहाँ नहीं आए वहां नहीं आए, इसने वो किया. सो दैट इज satirical tone. You must have seen some advertisement floating before Holi, जिसमें मिमिक्री की जाती है, एनिमेशंस बनाए जाते हैं of so many political leaders, ठीक है, कि ऐसे उनके घर होली मनाई जाती है, this or that. And there was one advertisement of Modi holding gun in his hand and he was shooting these Chinese apps. You must have seen that. Yes ma'am. So that is satirical tone, ठीक है. Lack of faith, जैसे कि राधे माँ है. And there was one video I was watching of Vrindavan. So there was one मीरा, वो कह रही है कि मैं वहां से आई हूँ, कटरा से, ठीक है. So
इन पर तो वीडियो देखते ही लग रहा है कि मतलब तुम जितना भी सज धज के बैठ जाओ, जितने भी कृष्णा काना उठा लो, लग ही नहीं रहा कि आप सच बोल रहे हो. सो दैट इज क्लिनिकल. तो ठीक है, यू आर कॉन्फिडेंट. ठीक है, जैसे राखी सावंत इज कॉन्फिडेंट, चाहे जो मर्जी है, गलत सलत इंग्लिश बोले, बट शी इज कॉन्फिडेंट व्हाट एवर शी इज सेइंग, दैट इज डॉगमैटिक. ठीक है, आप कुछ offensive कर रहे, you are saying something bad. There was one chief minister of Uttarakhand, I don't remember the place exactly right now, that place is not striking in my mind. She said that girls should not wear drug jeans or this jeans or that jeans. Okay, so something offensive, आप गर्ल होकर किसी गर्ल के लिए बोल रहे हैं, that is not correct, that is not good sign. So that is euphemistic. ठीक है, so these are the most commonly asked tones. Other than that, I will provide you tomorrow we are meeting, I will provide you list of tones. ये वो है जो एग्जाम में अक्सर आते हैं. ओके मैम. ओके मैम. हाँ जी, मैम की आंखें देख रही हूँ मैं यहीं से. All right, any other question guys? मैम आपने ना ये साइनोनिम्स की एक बार ट्रिक बताई थी, वो कैसे, वो थोड़ा बता दो. देखो, मैंने अभी भी बताई थी आपको अभिषेक. जैसे कि एक वर्ड आ रहा है वर्बोस. ठीक है, तो वर्ब मींस वर्ड्स एंड बोस जो है शब्दों का खिलाड़ी. संदीप महेश्वरी, खड़े हो जाओ उसके सामने सवाल लेके. आप सवाल पूछना बंद कर देंगे, लेकिन वो जवाब देना नहीं रुकेंगे. तो जो शब्दों का खिलाड़ी है दैट इज वर्बोस. ठीक है, क्लियर. सिमिलरली देयर इज वन वर्ड laconic, lack of ink. ठीक है, सो वर्ड में छुपा हुआ है उसका मीनिंग, बस आपको क्या करना है, रिलेट करना है. ठीक है, एक बार मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देती हूँ. दिस वे आई हैव एक्सप्लेन्ड. just a second. Yeah, यही वो ट्रिक्स है. ठीक है, जैसे कि ब्रिक एंड मोटर. यू नो व्हाट इज मोटर? आपने वो सफेद कलर का बर्तन देखा जिसमें ऐसे फूटते हैं? यस मैम. मोटर. यस. ठीक है, सो ब्रिक्स है. ब्रिक्स का इस्तेमाल क्या होता है? बिल्डिंग बनाने के लिए. ठीक है ना, कोई भी ऐसे ब्रिक घर में सजा के या खरीद के रखता नहीं है शो पीस के लिए, बिल्डिंग्स ही बनती है. तो उसका लेना देना बिल्डिंग से है. बाय स्ट्रॉन्ग हैंड. ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग हैंड, जिसके हाथ में ताकत है वो चाहे तो इस टाइम कुछ भी करा सकता है. ठीक है, क्लियर. सो वर्ड में ही छुपा हुआ है उसका मीनिंग. यू हैव टू जस्ट रिलेट इट. Any other question, beta? What is the difference between comprehension and caselets? Caselets. Actually, there is no difference between comprehension and caselet. Only to make things stylish and prim and proper, they have given different names. So, ma'am, they will mention that it is a comprehension or this is caselet. Definitely. If you are writing test of case study, तो उस पे लिखा हुआ आएगा ये case study है, अब उसके question start. ठीक है, so in case study caselets will come. They are passages only. ठीक है, basically the passages are related to a problem and you are asked to solve it, to deliver a answer to a problem, solution to a problem basically. And reading comprehension are story based. They are the articles taken from any magazine or the Hindu newspaper kind of. And ma'am, we have to solve the problem just in between those passage, not from any outer side. Absolutely. Content should be okay. Absolutely. The thing is, Ishita, whenever we are solving any problem or any reading comprehension, we can't be judgmental.
कि मेरा मन कर रहा है ऐसा होगा, मेरा ये मानना है वैसा होगा, ये नहीं करके आना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। चाहे उसके अंदर वर्ड्स लिखे, जो वर्ड्स लिखे हुए, इफ द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट लखनऊ गर्ल, द गर्ल हु स्लैप्ड कैब ड्राइवर, दैट वाज अनएथिकल, वो सही नहीं है कि हम किसी को भी दे दमादम लगा दे, आज हमारा मन है तो, ऐसा जरूरी नहीं है ना बेटा, दैट इज अनएथिकल। एंड इफ इट इज रिटन दैट गर्ल सिंबलाइजेस माँ काली है का रूप है, वो तो कर सकती है ना। So the thing is that is not correct option. The thing which is unethical is unethical. ठीक है। So प्रॉब्लम जो उसमें लिखी हुई उसी का सल्यूशन आपको देकर आना है, अपने मन से, अपनी सोच लगा के, अपने अनुमानों के हिसाब से नहीं करना। You can't show your perspective there. You have to derive answer on the basis of problem which has been showcased there. Okay, ma'am. All right. So the thing is we are running with time and I have taken 30 minutes up, and I am pretty sure that you guys will definitely make yourself, your parents, your teachers, each and every person whosoever has supported you in your journey, you guys will definitely make proud. Okay? And super soon we will be sharing this glory with one another. So good luck. My heartiest wishes are there with you. Okay? Although I pray every day, but I wish you all good luck. Stay focused, stay calm, and yes, you guys will definitely achieve the target which you have dreamt for. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. You are the best. Thank you, ma'am. All right, guys. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. All right, You helped a So lot. thank you, ma'am, and thank you, students, for this patience. All the best. Give your best. Right? Thank you, ma'am. Get panic. Thank you, ma'am. There is a helpline number. If you face any problem during your NIFT exam, there is a helpline number showing on your screen. So take their help and complete your exam. Right? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी। Yeah, ma'am. मैम अगर मतलब सेकंड डिवाइस मतलब कंप्लीट करने के बाद कैट का एग्जाम देने के बाद सेकंड डिवाइस को लेके अपलोड करना है, बट वहाँ पे ना क्योंकि वो फोन लॉक्ड हो जाता है जब कैमरा ऑन रहता है, तो उस टाइम हम फोटो कैसे लेंगे, क्योंकि फोन तो लॉक्ड रहता है। फिर उसको जब हम ऑफ करते हैं, फोटो लेते हैं, तो दोबारा फिर वो आने में मतलब दोबारा स्कैन करने में प्रॉब्लम आने लगता है। सो उसके लिए अभिषेक, आप वहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर होगा ना आपका नेफ्ट का, लेकिन आप लोगों ने मॉक पेपर्स आई थिंक अटेंड किए हुए हैं, राइट? यस मैम। हाँ मैम, उसमें बहुत प्रॉब्लम आई थी कितने बार, तो हमें तो बार बार नोटिस आ रही थी कि आपका विंडो से शक्ल हिल रहा है, वार्निंग। 2 बार मैंने डिस्कनेक्ट करके आप उनको ना पहले ही से इन्फॉर्म कर देना, और आप जब अपना सबमिशन के लिए जाते हो ना, तो आप पहले से आप उनको इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? आपके इन्विजिलेटर्स होंगे वहां पे ऑन स्क्रीन। ओके मैम, थैंक यू। And guys, one thing, ठीक है, nobody is harsh to you. ठीक है, कोई भी इंसान आपके ऊपर हार्श नहीं होएगा, ठीक है। Everything is planned in such a manner by NIFT कि you guys face smooth functioning. तो पैनिक मत होइए कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा, जो होएगा होएगा। लोग बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए, हेल्पलाइन नंबर आपको ऑलरेडी दिया है, मॉक करवाया है, पहली बार हो रहा है, वो भी पहली बार ही कर रहे हैं। सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है, बस कॉल करना, सब हो जाएगा। हम उसमें लिखा था अगर ज्यादा बार होगा तो कैंसिल कर देंगे तुम्हारा एग्जाम। ऐसा कुछ भी नहीं होगा सरोज, उसमें ऑलरेडी वहां पे हेल्पलाइन नंबर है, आप उनकी हेल्प एनी टाइम आप ले सकते हो, और सेवरल टाइम्स ले सकते हो, मेनी टाइम्स ले सकते हो। ओके, ठीक है। मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगी मैम, जस्ट 1, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं लूंगी। आई वुड लाइक टू शेयर वन लाइव इंसिडेंट ऑफ माय स्टूडेंट विद यू सो दैट यू गाइज कैन रिलेट विद दैट, ठीक है, और आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। सो द थिंग इज
last year or last to last year, there was one student. She was trying to give her interview GDPI. So वो online था, ठीक है? And all of a sudden there was some fluctuation in the internet, so she got removed. ठीक है? अब वो क्या करे? उसका इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं अभी, तो हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ही हुआ था. क्या करे? वो तो पैनिक हो गई, उसको अटैक आ गया, पैनिक अटैक. ठीक है? Then what she did, she calmed herself and then she called, she wrote mail to NIFT and they gave prompt reply, and after I guess 2 or 3 hours she gave her interview and right now she is in NIFT. ठीक है? So घबराना किसी भी चीज का नहीं है. निफ्ट भी पहली बार ले रहा है, आप भी पहली बार दे रहे हैं. बस उस ऊपर वाली पावर को बोलना कि ये टेस्ट मेरी लाइफ है, मेरी ड्रीम है, ये मेरा सब कुछ है, आप आ जाओ, मेरी हेल्प करो. ठीक है? एंड यू गाइज विल किल इट, यू गाइज विल नेल इट, आई एम श्योर. एवरीबडी whosoever is meeting you is pretty sure. आप भी श्योर हो जाइए. थैंक यू मैम. मैम एक्सक्यूज मी मैम. जी मैम वीडियो कॉल पे तो हम लोग तो उन्हें दिख रहे हैं, बट कैसे पता चलेगा वो हमें देख रहे हैं? उससे आपको क्या लेना देना है? हम लोग को शीट्स शो करनी होगी ना, जो A4 शीट्स होंगी हम लोग यूज कर रहे हैं, वो उनको दिखाना होगा कि हम लोग प्लेन पेपर लिए, उस पर कुछ लिखा नहीं है, तो उनका रिस्पॉन्स हमें कैसे पता चलेगा कि इट्स ओके? वो बच्चा वो खुद ही रिस्पॉन्ड करेंगे, खुद बोलेंगे. ठीक है? और दूसरी बात ये है कि इस तरह के सवाल आपके दिमाग में इस टाइम पे नहीं आने चाहिए. ठीक है? वो सिस्टम है उनका, उन्हें भी तो अपने बच्चे चाहिए. मैम मॉक टेस्ट में कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया था उधर से. Can I answer to that question? Please, Shrishti, go ahead. Actually, the thing is, everything will be recorded, so you just have to show the blank paper before writing. तो वो सब recording में वो देखेंगे कि तुमने शो करके तुम लिख रहे हो कि नहीं. उसमें ऐसा we don't have to expect anything in return their reply, because वो record होगा ही होगा. Shrishti, only I can favor, you have to do this favor for me. I can only request you, if you can turn on your camera और एक बार दिखा दो. मैम एक्चुअली मैं बाहर हूँ अभी, इसलिए. ठीक है, तो मैं दिखा देती हूँ, आप बस इतना बता दो क्या मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता. ऐसे? यस मैम. मैम ऐसे दिखाना है कैमरा में कि पूरा दिखे कि वो ब्लैंक है कि नहीं. बोथ साइड दिखाना है. या बोथ साइड में खाली नहीं है. ठीक है? बस आप बताओ. ऑलराइट, दिस वे. मैम ये पेपर नहीं चलेगा, कुछ लिखा हुआ है. अभिषेक, वो आप पे वहां पे आपको ब्लैंक ही पेपर लेना है. A4 साइज के आपको 2-3 पेपर्स अपने साथ रखने हैं बस. और आपका जो भी मटेरियल है, कलर्स हैं आपके, पेंसिल कलर्स या सॉफ्ट पेस्टल कलर्स, पेंसिल, इरेजर, स्केल, ओनली दिस ओनली इज ऑन योर टेबल, राइट? मैम अभी तो ये मैसेज भी फ्लोट होएगा सब में, सभी स्टूडेंट्स में. वैसे इम्पोर्टेंट ऑल थिंग्स. यस मैम. यस, ठीक है. So I think that should be enough for the day. All right. Yes, so yes ma'am. Yeah, ma'am. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Okay, bye bye. All the best. Right, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.